कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम महिलाएं तो हमेशा से वंचित हैं। उस वंचित, शोषित, पीड़ित महिलाओं के साथ राजनीति कैसी? अरे हम तो रोज रोज अपनी योग्यता का प्रमाण देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री जी उस पर अवसर देते हैं तो बार बार उस पर राजनीति करके, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके, उनकी मंशा पर संदिग्ध विषयों को खड़ा करके जिस प्रकार का यहाँ पर दृश्य उपस्थित किया जाता है, मुझे लगता है ये बेहद सोचनीय है। हमारी प्रधानमंत्री जी आज की नारी को देवी बनाना नहीं चाहते, आज की नारी को दासी बनाना भी नहीं चाहते। आज वो चाहते हैं कि आज हमें एक मानवी के रूप में पहचान मिले, हम एक मानवी के रूप में अपना स्थान बनाएं। और इसलिए जब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज इस आरक्षण बिल के साथ ही एक नए उत्सव की शुरुआत होगी। देश में महिलाओं को अपना स्थान मिलेगा। और मेरा मानना है कि जब हम अपने स्थान की बात करते हैं तो इस अमृत काल में, भले उसका समय थोड़ा लंबा है, लेकिन इस अमृत काल में जो बिल पारित होगा या आने वाले समय में उस व्यक्तित्व को सुशोभित करेगा जो इस सदन में आधी आबादी के तौर पर उपस्थित होगी। महिलाओं में बहुत धैर्य होता है और इस धैर्य के साथ वो आगे बढ़ती हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा और हमारे धैर्य की लगातार कई उस पे कहानियां हैं जो सत्य हैं, लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया। आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में मिले, इसका संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है। बहुत साफ मंशा के साथ में इस बिल को लाकर जनगणना के माध्यम से संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के तहत यहाँ पे हम इसे लागू करें, और मुझे लगता है कि इस उत्सव में पूरे देश के लोग शामिल हों। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक पल का मुझे साक्षी होने का गौरव मिला है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट रजनी अशोक राव पाटिल। इधर 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 कभी उधर नहीं जाएगी। You have 10 धन्यवाद minutes. महोदया। Yes, you have 10 minutes. धन्यवाद देती हूँ आपको मुझे बोलने का मौका दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 128वां संशोधन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज मैं खुद को बहुत गौरवान्वित, कृतज्ञ और भाव विभोर महसूस करती हूँ। और आज याद आती है मुझे मेरे नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिनके दूरदृष्टि से और जिनके विजन से ये महिलाओं का आरक्षण का अधिकार मिलने का काम हुआ था। उनकी गहरी सोच की वजह से हमारी जैसी 15 लाख महिलाएं आज देश में अलग अलग जगह पे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम कर रही है। इस देश की नींव का एक हिस्सा बन के खड़ी है। और मुझे ये बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि पहली 92 में जब ये लागू हुआ महिला आरक्षण विधेयक, और 93 में उसी के तहत मैं जिला परिषद में बीड़ से मैं पहली बार यहाँ चुन के आई थी। तो ये मेरी जो जर्नी है वो जिला परिषद से लेके यहाँ तक वो सिर्फ पॉसिबल हुई क्योंकि मेरी पार्टी के नेता, उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके ये बिल लाया था। 1989 में राजीव जी ने पहली बार ये बिल लाया। लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोग आज वंदन करना चाहते हैं हमें, उन लोगों ने उसको पराजित कर दिया और उनके कारण वो हमारा बिल पराजित हो गया। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ये जो हुआ, उसमें उसके तहत 1/3 हिस्सा, 1/3 महिला अधिकार के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिल गया, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई पंच बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष बनी। और ये सब ठाकुर की से, जो ठाकुर की बात हुई, ठाकुर की से राज करने लगी। तब भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कुछ लोगों ने कि मिस्टर सरपंच, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया, मिस्टर सरपंच।
कि हम नहीं काम करेंगे, उनके पति काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे काम हमने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए और बाद में हम सब समझने लगे कैसे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपना अधिकार जागरूक करने का काम अगर यहाँ पे इस बिल के तहत हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहती हूँ कि 1996 में जब ये बिल पहली बार लोकसभा में आया तब भी मैं लोकसभा में सदस्य थी। तो हमेशा महिला आरक्षण का बिल जब भी आता है उसका एक एक सीढ़ी चढ़ के 30-35 साल का ये हमारा परिक्रमण हुआ है। और मुझे लगता है 2029 तक यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आता नहीं बिल। मैं मैडम 96 में जब बिल आया उस बिल को इतना विरोध किया, उस बिल को फाड़ के टुकड़े भी कर दिए और गीता मुखर्जी के सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को ये बिल सौंपा गया, गीता मुखर्जी। और गीता मुखर्जी के नेतृत्व में ये बिल का प्रवाह शुरू हो गया। धीरे धीरे 2010 साथ में आ गया। और मेरी नेता सोनिया गांधी, उनकी मंशा थी कि जो राजीव जी का सपना था, जो आधा रह गया था, आधा तो पूरा कर दिया था उन्होंने पंचायतों में, लेकिन जो आधा रह गया था कि लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारी बहनें आना चाहिए, वो सपना पूरा करने के लिए हमारी सोनिया जी आगे आई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार 2010 में यह हमारा बिल पारित हो गया राज्यसभा में। लेकिन फिर लोकसभा में हमारा पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाया। 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी हो गए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, तो हमें लगा कि अभी तो ये बिल करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे यही लोग बोल रहे थे, तो हमें लगा ये करेंगे। 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा मोदी जी को, फिर 15 में लिखा, 16 में लिखा, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा और बताया कि अगर ये बिल आप लाना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू, हम अनकंडीशनल आपका हमारा सपोर्ट करेंगे, आप ये बिल लाओ और ये बिल पारित करो। लेकिन ये नहीं हुआ। और जब अभी 9 साल पूरे होने के लिए आए और एक साल दिख रहा है कि अभी चुनाव है, जिस सब तरफ से मारे गए हैं, जब तरह से उनको लोग छीतू कर रहे हैं, तब उनको लगा कि अभी महिलाओं का कार्ड हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए महिला बिल आया है। हमारे लिए कोई वंदना नहीं था, हमारे देवी, हमें वंदना मत ही करो, हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, ना हम देवी बनना चाहते, ना हम बहन बनना चाहते, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते। वी वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग। हमें मानव करके समझाओ, कोई किसी बड़े बड़े पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत साल हमें नीचे गिराने का कोशिश इन लोगों ने की है। 2 साल के बाद जब ये बिल आज आया है तो मुझे तो उनके नियत में कुछ खोट लगती है। एक कारण यह है कि अगर उनके मन में मंशा थी तो उन्होंने पहले ही लाना चाहिए था। अगर ये अपना नोटबंदी का बिल एक रात में ला सकते, जीएसटी का बिल ला सकते रात में, और 3 कृषि कानून जो काले कानून थे, और इन्होंने बोला हम पुख्ता तैयारी करते हैं। नड्डा जी ने बोला अगर पुख्ता तैयारी की थी तो 3 कृषि कानून वापस देने की नौबत क्यों आई आपके ऊपर? जरूरत नहीं थी आपको। तो ये आपकी तैयारी है क्या? तो ये सब जगह पे यहाँ पे उनका उल्टा खेल हुआ है। और सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री कल मैं जब सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि एक ही परिवार को पूरा श्रेय देने की कांग्रेस में होड़ चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि जब एक परिवार के 2 लोग इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जब एक परिवार की एक हमारी महिला नेता, जब हम सैल्यूट करते हैं, एक महिला नेता खुद प्राइम मिनिस्टर का त्याग करती है, एक ही हमारे परिवार के एक बच्चा लड़का हमारा राहुल गांधी जब बाहर निकलता है और ये मोहब्बत का दुकान इनके नफरत के बाजार में खोलने के लिए भारत जोड़ो करके निकलता है। भारत जोड़ो में जब लोग वो निकले, मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से, क्योंकि परसों भी बीच में वो लेह लड़ाक भी आए थे, तब भी मैं उनके साथ थी। ये जो हुआ है उसमें सभी लोगों ने और खास तौर पे हमारी महिलाओं ने अपनी मन की बात, मैडम आप एक महिला है, हम किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते अगर हमें विश्वास नहीं आता है तो, लेकिन वो महिलाएं गले पड़ रही थी, रो रही थी, बता रही थी अपनी पीड़ाएं, अपने दुख दर्द राहुल जी को बता रही थी। मुझे ये दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार को नाम रखना, इसमें आपको क्या सुख मिलता है? पंडित जी से लेकर हर रोज 60 साल में क्या किया, आपने क्या क्या करके मारते हैं। 30 साल में तो ये लोग सत्ता में भी नहीं है, बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप छोड़ते नहीं है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है।
आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहाँ पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है। हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं, उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे अभिनेत्रियों को। तो अरे आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दी है उनके घर जाओ, उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नग्न किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को आप घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ। और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी अच्छा, आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए। और उसके लिए फोटो शॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी, और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझने पहले, तो वहाँ पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and 2 houses to be known as respectively as the Council of States and House of People। कहाँ है हमारा पहला जो वाक्य है, उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ दिख रही है? 3 दिन हमारा ये समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनका यूटिलाइज करते हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 96-89 से शुरू हुआ, और मैं 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया, ना खुद ही को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, वहाँ पहुँचे आप जहाँ पहुँचे आप छलांगे लगा के, आप जहाँ पे छलांगे लगा के पहुँचे, वहाँ पहुँचे हम भी, मगर धीरे धीरे। बस डिलिमिटेशन हो गया मैडम, डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो बोलते हैं कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है बीजेपी वालों को, उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है। 2014 के बाद कई सब याद आता है, या देवी देवता वैदिक काल याद आता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर जिनका नाम आज लेना हमें आवश्यक लगता है, कि अगर वो नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते थे। उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी दी है कांग्रेस पार्टी ने, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभाताई को दिया है, प्रथम स्पीकर मीरा कुमार को दिया है, और बीजेपी ने सिर्फ बताना चाहिए मैडम कि किसको उन्होंने किया है। अध्यक्ष कभी बीजेपी की महिला हुई है? RSS की प्रमुख कभी महिला हुई है?
ये ज़रूर बताना चाहिए और ये बता के उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ नहीं लेना चाहिए. मी मराठीमध्ये फक्त 2 मिनिटं बोलणार. एकच मिनिट मॅडम. झालं तुमचं मराठीमध्ये 1 मिनिटं बोलू दे मला, माझी भाषा आहे ती. आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत, गौरी आहेत आमच्याकडे, त्यामुळे आज गौरी येणार आहेत तुम्ही आमच्याकडे. आहेत महालक्ष्मी. तर गौरी येणार आहे, त्यामुळे मला सगळ्या माझ्या बांधवांना आमच्या महाराष्ट्राच्या रीतीप्रमाणे तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात आणि गणपती बाप्पा मोरया म्हणायचं आहे. आणि एकच सांगायचं की आमचा महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा जिजामाता होत्या म्हणून शिवबा तयार झाले, चांद बीबी होती, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलांच्या बरोबरीने लढत होता, रमाबाई आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, ताराराणी, अहिल्याबाई, असे किती नावं आहेत आमच्याकडे की ज्या नावांना उल्लेख करून या देशाला आम्हाला फार मोठं सन्मान वाटतो. आणि त्यामुळे मला आज नारी शक्ती वंदन करत असताना मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन की आम्हाला आमचं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या. आम्हाला देवता बनवू नका, देवी बनवू नका, लक्ष्मी बनवू नका, आम्हाला देवता न बनवता माणूस म्हणून जगायचा अधिकार द्या. आणि हे जे बिल आहे ते लवकरात लवकर इतकी 40% आमचे ह्याचे आहेत, कास्ट आहे आमच्या, ती कास्ट धरून ओबीसी, SC, ST या सगळ्यांनी म्हणून ते बिल लवकरात लवकर पास करा. धन्यवाद, आपण मला वेळ दिल्यामुळे. जय हिंद. मौसम नूर. Thank you, Vice Chairperson, Madam. Madam, I come from a party called the All India Trinamool Congress, whose founder gave 41% of Lok Sabha tickets to women way back in 2014. I come from a party founded by Ms. Mamta Banerjee, which already has 40% of women MPs in the Lok Sabha. I come from a party that already has 50% women elected in the panchayats and the municipalities. I come from a party founded 25 years ago, which spoke up in Parliament for the Women's Reservation Bill way back in 1998. Madam, our words were not empty words. Our words were put into action. Today, we are glad that the rest of India, including this government, who gave only 12% tickets to women, has learnt little from India's only woman-serving chief minister. The BJP has 16 chief ministers, none of them are women. Madam, we have already implemented the Women's Reservation Bill in the past. This government is trying to bring a bill in the present, which it cannot implement in the near future. Madam, Mr. Prime Minister, sir, listen carefully to what I am saying. I am Mausam Noor from Malda, West Bengal. I have been elected twice in the Lok Sabha and now serving my 3rd term in Parliament in the Rajya Sabha. If you are really serious about this bill, please give 33% tickets to women in the 5 upcoming state elections in November this year and in 2024 general elections next year. Madam, of course we support this bill. It is our bill. It is our idea. It is what we have already implemented. Let me try to explain to you how this bill is fundamentally flawed. Because this bill is linked to both delimitation exercise and a census. It is like writing a check with no balance in your account. And the check is dated not 2023 September, but maybe 2034. In other words, you can't cash the check now. You can only keep it in your drawer. You will feel good, but you won't have any money in your account. That is exactly what this government is telling the women of India. Madam, going beyond the walls of Parliament, we as a nation need to change our thinking. In the Election Commission of India, of the 9 top posts, not one is a woman. Out of 11,000 IS officers between 1951 to 2020, only 1 in 10 was a woman. Only 1 out of 10 IPS officers is a woman. Out of the
180 judges, only 83 are women. Only 15% of women hold senior and managerial positions in India. It is heartening that in West Bengal, every district has a police station that is solely run by women. Madam, if women have to be represented, it has to be a team effort. And in conclusion, sir, Madam, I ask the Prime Minister, what is the name of that Lok Sabha MP of yours who shamed us, who harassed our champion wrestlers? On behalf of the women of India, what is he still doing, sitting here in this new building? Thank you, Madam. नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? ये है आर गिरिराजन. Thank you, Chairman. Honorable Chairman, first of all, I Chairwoman. Chairperson, sorry, sir. Chairperson, Honorable Chairperson, first of all, I thank my beloved leader, Talabadi M.K. Stalin, for providing this opportunity to speak in this August House. Representing DMK, for the 75 years, Dravida Munnetra Kazhagam has been fighting for women's rights. We welcome the Women's Reservation Bill. The pertinent question is, why has not the Modi government shown even 1% of the concern it showed in passing the controversial Agrarian Bill, Acts, Citizenship Amendment Act, Kashmir Special Status Act, and 10% reservation for passing the Women Reservation Bill? People have apprehension on the timing and the cunning manner the bill is drafted as sinister design. People will understand that despite the strength of the majority, they have remained blind for the past 9 years and are trying to do an electoral jumla as usual. Madam, even if the bill is passed now, the implementation of that will take many more years, as they have included a clause in Article 334A, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People. The Legislative Assembly of the states shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose of the relevant figures of the first census taken after commencement of the Constitution 128th Amendment Act 2023, that it will be implemented after the delimitation of the constituencies were done. Delimitation of Lok Sabha constituencies in various states and assembly constituencies will be drawn only after 2026. The next election after delimitation will be held in 2029. So, implementation of the said act cannot be implemented before 2029. There is no guarantee when the census will be held. The census that never took place, the redistricting based on it, and the strange play of passing the law now to supposedly come into effect in 2029 is an electoral shame of failure. Madam, the delimitation of constituencies has got its own problems and grave issues which need to be thrust out thoroughly before arising at the total number of Lok Sabha constituencies and assembly seats in states in the country. The play to reduce the representation of the people of South India, especially from Tamil Nadu, in the Lok Sabha in the name of the constituency delimitation must be nipped in the bud. The union government must now give an assurance that it will not deceive Tamil Nadu and other South Indian states. The BJP-led government should consider the rationale behind the demand for reservation for women from most backward communities. There should be an inner reservation for women and OBC and BC while implementing 33% reservation. The DMK President and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, in his statement and reiterated this aspect. Madam, gender equality means empowering women in all ways and in all places. For that, they should first be given their proper places. Dravida Munnetra Kazhagam has been insisting on this. Whenever DMK
government is formed, it is implemented. In 1996, Chief Minister Kalangar has provided 33% reservation for women in local bodies. By the end of the 1996, election to local bodies such as Panchayat unions, municipalities and corporations were held by the DMK. The Women's Reservation Bill has pending for nearly 27 years. The Women's Reservation Bill was first introduced in 1996 in the Union Government of the DMK in 2005 too. The DMK-led Union Government introduced the bill. The BJP, which initially said it would support it, then opposed it. Uma Bharati, who spoke on behalf of the BJP, has vehemently opposed it. Among those who have opposed it in the past, in the present, UP Chief Minister Yogi Adityanath also. Under the Congress, DMK-led UPA-1 government, the Women's Reservation Bill was introduced in the Rajya Sabha on March 8, 2010, Women's Day, and passed the next day during the UPA government. Before that, Honorable Devagowda's government brought this bill. Our floor leader Tiruchi Siva also spoke on that bill. Unfortunately, it could not be passed in the Lok Sabha due to the opposition from some political parties. The BJP government, which came to power after the shelved the bill. In the 2014 and 2019 elections, the BJP government won a majority. If they wanted to pass the bill, they could not accomplish it immediately. But they did not even bother to introduce the bill for the reasons better known to them. In 2017, we took out a rally in Delhi on behalf of the DMK. Mrs. Kanimori, the woman wing secretary and then Rajya Sabha member, now Lok Sabha member, led the rally which was held to press for the implementation of 33% reservation for women parliament and assembly constituencies in states. Madam, former Prime Minister Rajiv Gandhi ensured reservation in local bodies. Former Prime Minister Manmohan Singh introduced the Women Reservation Bill in Parliament and state assemblies in the Rajya Sabha. The achievements of both of them deserve to be remembered now. On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I welcome the bill to provide 33% reservation to women brought in by the Union Government. Even if it is done because of the passage of time, I urge these Union rulers to consider its justification and not ignore the demand for representation for women of the backward and most backward communities. India is the only country that has not yet conducted a census that takes place once in a decade. So far, BJP has not given assurances of when it will be happen. The delimitation of constituencies based on the population alone in the dagger hanging over the head of Tamil Nadu and the South Indian states. The political conspiracy is to increase the number of MPs from North Indian states like UP and Bihar and reduce the political representation in South India must be defeated. The unjust attempt to deceive you, politically conscious in Tamil Nadu must be nipped in the bud. Even Chandrayaan softly landed on the south pole of the moon. BJP cannot land it in the South India. Mind it. Following the footsteps of Doyen of social justice and Dravidan model, Thandai Periyar, Perarijar, Dr. Kalangar, several fair-sighted initiatives and schemes for women empowerment were being implemented by the DMK government. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Through M.K. Stalin, is continuing the legacy of the Dravidan model governance. Today, welfare schemes for women that are being implemented in the Tamil Nadu over the last 5 decades. Equal rights for women in family properties, 1989. Increase the reservation for women in government jobs, 40%. Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme aimed at ensuring maternal nutrition. Schemes for education, marriage assistance and remarriages. Fare-free travel for women in government-run city buses. The Molu Ramarthamammayar Higher Education Assurances Schemes provides 1,000 rupees financial assistance to girls till they complete the recognized courses. The government of Tamil Nadu has launched the Grand Social Welfare Initiative for women, Kalangар Magalir Urimai Togai Tittam, on September 15th. Though this scheme is monthly financial assistance of rupees 1,000 is provided to 1,06,50,000 eligible women family heads in the states. Madam, Tamil Nadu has become the role model state in the country due to the continuous efforts of our great leaders, Thandai Periyar, Perarijar, Dr. Kalangar, Thalapathy M.K. Stalin. Madam, only 1 minute. Madam.
I'm sorry. I have been asked to tell you that your time is over. Okay, just, Madam, our Dravidian model government, we have fulfilled all our poll promises. But at the same time, we have the union government led by Sri Narendra Modi at the center for almost a decade. We have never seen any other government which never bothered to fulfill the poll promises. The Narendra Modi led by BJP government has several political and electoral promises never to be fulfilled. No other government has promised so much electoral jumlas than this government. We can publish volumes of electoral jumlas of Narendra Modi and his government. They promised that all the black monies stashed in foreign countries by Indians will be brought back and rupees 50 lakhs would be deposited in bank account of each and every citizen. This remains as a greatest jumla of BJP. The BJP has promised to provide 2 crore new jobs every year to the people of this country, especially the educated youth. But the unemployment problem has reached the highest in the history of the independent India. I conclude, Madam, when the Narendra Modi became the Prime Minister, he has promised the people of India that linking rivers, especially the peninsular rivers, but nothing happened so far. All these promises still remain as electoral jumla. It is a surprise, though the Women Reservation Bill is passed and the President's assent was given, the implementation of the Act will have to wait several years and pass through several orders. In the last 10 years, people of this country have seen and experienced enough jumlas and U-turns from this government. And I only wish that the people of India will teach them a lesson in 2024 electoral battle Don't keep for all women the electoral waiting. jumlas. Thank you, Madam. Thank you. Shulata ji आइए. जय जगन्नाथ. Honorable Vice Chairman Madam, thank you so much giving me the permission to speak in my mother tongue Odia. Okay. From my party Biju Janata Dal, I support the bill. ମୁଁ ମୋ पार्टी बिजु जनता दल तरफ ए बिल के समर्थन जनाऊँगी. ए कोट मु कहबी गोटे कोट, वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ए स्लोगन बट ए नॉन नेगोशिएबल कोड फॉर अस. नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल उपर आलोचना होची, इंडिया टुडे ग्रुप रे गतकाली पब्लिश होची जे ओडिशा होची नारी शक्ति बंधन रे सबुठु आगरे. एथिपाई मु गर्व अनुभव करे. स्वर्गत बिजू पट्टनायक जे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थिले ओडिशार, से गोटे कथा कही थिले, सेटा बोधवे समस्त हृदय को छुईब जे मनटा छोट कले जातिटा छोट हो जाए. सेथिपाई से प्रथम करी ओडिशा होची एभली राज्य जे प्रथमे 1992 मसीह 33 भाग स्थान संरक्षण करिथिला महिला पंचायत राज विधि व्यवस्था भितर एवं 33 भाग महिला सेतबेले निर्वाचित होइक आस्थिले. तांकर पुओ सुयोग्य पुत्र मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मो दलर सभापति से बा कहीं पछे जीवे. तेणु से मध्य तांको पितांको पदांक अनुसरण करथिले एवं से मध्य जानिथिले जे कोठी ना कोठी जो जाति जेते आगु को बढ़िबो तापई महिला मानकर सशक्त हबार आवश्यकता अछि. जदि महिला सशक्त नहीं से जाति से समाज से राज्य से देश केबे आगु को बढ़ी पारिबो नाही. तेणु से आगु को बढ़ी 2011 रे पंचायत राज निर्वाचन रे कोभली भाव में 50 भाग महिला निर्वाचित हो पारे से नियम करथिले एवं 2012 मसीह पुणी बदले देथिले. पुणी आउरे गोटे नियम करथिले जे अर्बन लोकल बॉडी माने सहरांचल रे महानगर निगम हो कि NSC हो कोभली भाव में महिलाटे आगो को आसीबो तापई मध्य 50 भाग स्थान संरक्षण करथिले. जहा पाई आज ओडिशार 3टी महानगर निगम रे 2 जण महिला अछंती. ये होची बिजु जनता दलर महिला मानक पई प्रतिबद्धता. मु कहिबी महिला मानकू आज सशक्त करिवार आज महिला संरक्षण बिल उपर आलोचना होची. महिला मानकू सशक्त करिवा पई समस्ते आज गोटे एकजुट होइछन्ती. किंतु मोर मुख्यमंत्री मो दलर नेता श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक 2001 मार्च 8 तारिख रे मिशन शक्ति गठन करथिले जे महिलाटे को केमिति भाबर आगो को नै पारिबे सशक्त करि पारिबे
आज को से मिशन शक्ति रे मध्य जदि देखिए 70 लाख महिला कौटी ना कौटी जोड़ी होती आगू को बढ़ुंट ये किसी कम बड़ कथा नुहे महिला को सशक्त करिवारे माननीय मुख्यमंत्री होचंदी बोध हुए समग्र देश में अद्वितीय तांको भली के हो पारे नहीं से सबु बेले कौटी ना कौटी चिंता करिसेंती महिलाटा केमती आगू को बढ़िबो। आज मिशन शक्ति जो डिपार्टमेंट कथा मु कहूली से गोटे महिला डिपार्टमेंट आउ सी डिपार्टमेंट ही सेपरेट डिपार्टमेंट हो पार्टी मंत्रिमंडल गोटे सेपरेट मंत्री अच्छा गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट हो पार्टी मिशन शक्ति माध्यम जदि कहवा केवल महिलाटा सशक्त होइछि नुहे महिलाटा सशक्त हवा संगे संगे जदि देखिए महिलाटे आज गोटे उद्योग माने मुख्यमंत्री खाली सशक्त महिला करने को चाहना महिलाटे को उद्योगपति केमिति हो पारिबो तापे मध्य से चिंता करछंती एवं महिलाटे आज जदि देखिए एसएचजी रु आज बाहर किना महिलाटे निजर कंपनी करिछि बिजनेस करुछि सीईओ हेछि एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य ता कंपनी रहिछि आउ बेसी दिन दूर नुहे जे ओडिसार महिलाटे आज जो कथा मु कहूँ सीईओ होची आज भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व में प्रतिष्ठित हो पार आर पछरे केवल जड़े जननायक अच्छा जी होती माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जे सब बेले चाहते महिलाटे केमिति आगो को बढ़ू गोटे कथा आमर अच्छी ओडिया रे जे सब बेले सफल ये हर लैंग्वेज में भी है सब बेले सफल पुरुष पछरे जड़े महिलार हाथ अच्छी किंतु मु कहबी मो भले जड़े आ मो भले अनेक महिलांकर सफलता पछरे मो दलर मुख्यमंत्री माननीय नवीन पट्टनायक हाथ अच्छी जी आमको राजनैतिक क्षेत्र में सशक्त अर्थनैतिक क्षेत्र में सशक्त कर धन्यवाद जनइबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जे सी आमको आज ए बिल बिल की आगू को बढ़ाइबार से साहाय्य करछन्ती तेणु से सब बेले दाबी रखी ए दाबी आज पूरण होची तेणु तांका पई मु एठू मध्य प्रणाम जनइबी जय जय। थैंक यू मैम। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to speak on the Women Reservation Bill in Telugu language, which is my mother tongue, ma'am. Respected ma'am, ఈ బిల్లు ఆహ్వానించదగ్గది అభినందించదగ్గది గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మరి మనస్ఫూర్తిగా ఈ బిల్లు తెచ్చినందుకు అభినందిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ బిల్లుకి పూర్తిగా మా మద్దతు ప్రకటిస్తూ కానీ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ డిమాండ్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఆన్ ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్. I would like to place before the government through you, ma'am. Please permit me. మన దేశంలో దాదాపు 50% మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఈ 50% మందిలో రాజకీయాలు మాట్లాడే వాళ్ళు లెస్ దాన్ 0.5%. రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయాలు మాట్లాడేవాళ్ళు లెస్ దాన్ 1%, అందుకంటే ఎక్కువ ఉండరు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే దీంట్లో 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. ఇక్కడ నా కోరిక ఏంటంటే ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్స్ ఎట్లా షెడ్యూల్డ్ కులాలకు షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కు ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు, మహిళలకు కూడా ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్స్ 50% ఇస్తూ దాంట్లో 27% ఓబీసీలు కూడా ఇమ్మని నేను ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా మరి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. సామాజికంగా ఓబీసీలు సామాజిక వెనుకబడుతున్న ఉన్నవారు, ఆర్థిక వెనుకబడుతున్న ఉన్నవారు, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం లేని మహిళలకి, సంపన్న కుటుంబాల్లో ఉన్న మహిళలకు కూడా ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం లేని దేశం ఉంది. మరి విద్యార్థులకు వెనుకబడుతున్న ఉన్నవారు మంచి 50% రిజర్వేషన్స్ ఇస్తూ మహిళలకి మరి 27% ఓబీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్ ఇమ్మని మరి కోరుతూ దీనివల్ల ఈ బిల్లులో డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దాదాపుగా 7 సంవత్సరాలు వేచి ఉండాలి. ఈ బిల్లు అయిన తర్వాత చట్టరూపం దాల్చిన తర్వాత 7 సంవత్సరాలు వేచి ఉండాలి. మాకు తెలుగులో ఒకటి ఉంది, పంచభక్ష ప్రమాణాలు పెట్టి మరి ఒక 7 సంవత్సరాల తర్వాత తిందిరుగానంటే ఎంత అందంగా ఉందో ఈ బిల్లు కూడా అంతే అందంగా ఉంది. ఇది చాలా దురదృష్టం.
వెంటనే రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి వచ్చేలా చేస్తే ఇది ఉపయోగం ఉంటుంది. మరి వారి పార్టీకి కూడా మంచిది, ఇది మంచి ఆలోచన చేయమని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. మేడం, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్? ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ to improve the opportunities of social and educational status to the unprivileged communities and thus uplift their lifestyle to have a place in the mainstream of the Indian society. That's the object. Object is the principle. Why don't you apply to the OBCs? OBCs ఎందుకు అప్లై చేయరు ఆబ్జెక్ట్? ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్ని ఎందుకు అప్లై చేయరు దానికి? వీళ్ళు ఏమైనా మరి ఆర్థిక వెనుకబడతనం లేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా? అది విద్యా వెనుకబడతనం లేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా? అది సామాజిక వెనుకబడతనం లేని వారు అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు అప్లై చేయాలి ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఇక్కడ? అంటే ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం చూపిస్తూ ఉన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు. దయచేసి దీని మీద మరి ఆలోచన చేయవలసిందిగా నేను గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఒకసారి మీ దృష్టికి ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను. ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు సెంట్రల్ లా మినిస్టర్ గారికి హీ రోట్ లెటర్, ఒక లేఖ రాశారు సెంట్రల్ లా మినిస్టర్ గారికి, ఓబీసీలని హైకోర్టు జడ్జిలుగా నియమించకూడదని. అంటే ఓబీసీస్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అపాయింట్ యాజ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద హైకోర్ట్స్. ఎంత దురదృష్టకరమైన లేకో చూడండి ఒకసారి. ఎందుకు ఈ అణచివేత ఎందుకు ఇంకా ఈ రోజుల్లో కూడా ఎందుకు అణచివేస్తూ ఉన్నారు? ఒకసారి రీసెంట్గా వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు, హిమబిందు అని ఒక యంగ్ లేడీ ఉమెన్, ఆమె ఆ జడ్జి, ఆమె ప్రిన్సిపల్ జడ్జి టు ఏసీబీ కోర్ట్ అట్ విజయవాడ. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మీద వచ్చిన ఆరోపణలకి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చేసినటువంటి జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు ఓబీసీ కేటగిరీకి చెందినవాడు. హైకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నటువంటి మరణించినటువంటి కీర్తిశేషులు జస్టిస్ బిఎస్వై స్వామి గారు కూడా ఓబీసీ కేటగిరీకి చెందినవారు, మా జిల్లాకు చెందినవారు. వీరేమైనా వాళ్ళు ఇచ్చే రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి జడ్జిమెంట్లు ఏమైనా ఇచ్చారా? ఎందుకు ఆ లేఖ రాస్తారు? ఎందుకు ఈ నిరంకుశత్వం? ఎందుకు ఈ అణచివేత? ఇది ఒకసారి ఈ సభ దృష్టికి, ఈ దేశ ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడానికి నేను చాలా బాధపడుతున్నానమ్మా. దయచేసి ఇటువంటి లేఖలు కానీ ఇటువంటి అణచివేతలు కానీ ఇంకా కొనసాగుతున్న ఈ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఓబీసీలకు కూడా తొందరగా రిజర్వేషన్ పెట్టకపోతే ఇంకా వారికి ప్రశ్నించే తీరు అలవాటైంది. విద్య పెరిగింది, విజ్ఞానం పెరిగింది. మరి ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంకా అణచివేతకు గురి చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక వేచి చూచటం ఇంకా ఓపిక లేదు. దయచేసి వెంటనే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు దీని మీద ఆలోచించి ఓబీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు అర్జెంటుగా తీసుకురావాల్సిందిగా వారిని కోరుతూ, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తమకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ స్పీకర్ శ్రీ రవిచంద్ర వడిరాజు. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈరోజు మొదటిసారిగా నాకు మహిళా బిల్లుపై స్పందిస్తూ ఈరోజు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినటువంటి కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత, మహిళలు ఎక్కడ గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు సంచరిస్తారు. అలాంటి సమాజం అభివృద్ధిలో ముందుకెళ్తుంది. ఎక్కడ స్త్రీ గౌరవింపబడదో అక్కడ ఆ సమాజం బాగుపడదు అంటుంది మన సంస్కృతి. వేదాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో స్త్రీకి గౌరవం ఉంది. పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో స్త్రీకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆదిపరాశక్తిగా స్త్రీకి తొలి పూజలు చేశారు. ప్రకృతిని స్త్రీ రూపంగా చెప్పాయి. వేదాలు మాతృదేవో భవ అని తల్లిని ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజించమని చెప్పారు ఋషులు. మన ఉపనిషత్తులు, శాస్త్రాలు స్త్రీని సాధికారత కలిగిన శక్తి స్వరూపంగా పేర్కొన్నాయి. మాతృసామ్య వ్యవస్థ తర్వాత రాజరిక వ్యవస్థలోనూ మాతృసామ్య వ్యవస్థ కొనసాగింది. స్త్రీ గౌరవించబడింది. మారుతున్న కాలం కుటుంబ వ్యవస్థ మొదలు కావడంతో స్త్రీకి కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగి ఇంటికి పరిమితమయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో సమాజంలో పురుషాధిక్యత పెరిగింది. అవకాశంలో సగం కుటుంబం జీవనంలో ఆడ మగ సమానమే
ఇలాగే అవకాశాల్లోనూ చట్టసభల్లోనూ సమాన హక్కుల కోసం 30 ఏళ్ల కిందటే ఉద్యమాలు మొదలయ్యాయి. కేంద్రంలో పాలకులుగా ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకు చిత్తశుద్ధి లేకపోవడంతో బిల్లు ఏళ్లుగా కాగితాలకే పరిమితమైంది. మహిళల రిజర్వేషన్ అంశం ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల అంశానికి ముడిపెట్టడంతో ముందుకు పడలేదు. పలుమార్లు బిల్లు పార్లమెంటు ముందుకు వచ్చినా ఒక అడుగు ముందు 2 అడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా కొనసాగింది. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నుంచి స్వరాష్ట్ర ఉద్యమం దాకా తెలంగాణ మహిళలు రాజ్యాన్ని ఏలడమే కాదు, అవసరమైతే రాజ్యాన్ని ధిక్కరించే ధీరత్వం కలిగిన వారు. సంక్షేమ పాలన అందించిన రాణి రుద్రమదేవి నుంచి మొదలుకొని సమ్మక్క సారలమ్మ దాకా, చాకల ఏలమ్మ దాకా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, ప్రత్యేక తెలంగాణ పోరాటం వరకు మహిళా శక్తికి ప్రతీకగా నిలిచింది తెలంగాణ నేల. ఉద్యమ స్ఫూర్తితో పాలన కొనసాగిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారిత సంక్షేమం కోసం ఎంతో కృషి చేస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారిత సంక్షేమం కోసం స్థానిక సంస్థ లో 50% రిజర్వేషన్లు, జీహెచ్ఎంసీలో మహిళల్లో 50% రిజర్వేషన్
33% ఎస్ కేటగిరీ ప్రారంభంలో కూడా 33% రిజర్వేషన్, అక్రిడేషన్లో మహిళా జర్నలిస్ట్ and 10 minutes. 10 minutes, sir. Sir, thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to participate in this important legislation. It was a long journey. And from your party, you are the only man. Rest are women. Yes, go ahead. 1931 onwards, when Sarojini Naidu wrote a letter to the then British Prime Minister for equal power for men and women, this journey has been started, sir. Then, certainly, Balwant ji, Indira ji, finally Rajiv ji on 1989 brought a great legislation of empowering women in local bodies. What happened? Actually, N.D.A ji spoke about very much about their claim about this bill. What happened, sir, 1989 when Rajiv ji introduced this Women Empowerment Bill of Local Bodies? Entire BJP gang opposed that bill. Who are all the stalwarts of BJP? I took the record from the Rajya Sabha secretary, sir. Who are the people who voted against that bill? Lal Krishna Advani, Atal Bihari Vajpayee, Jaswant Singh ji, Ram Jethmalani ji, all are opposed this bill. This is the record of the Rajya Sabha. Now you are the champion of this thing. Sir, of course, after that 2010, we brought the bill and passed the bill in Rajya Sabha. We passed the bill in Rajya Sabha. Unfortunately, we are not in a position to pass the bill in Lok Sabha. But you came in power in 2014. You have given promise to the people of India that we are going to bring women legislation bill, women reservation bill. Who stopped you, sir? From 2014 to 2023, 9 years, who stopped you to bringing this bill? I would like to know from the Honorable Prime Minister whether he is waited for this new building to introduce this bill. If there any Vastu issue was there in that building, is there? Otherwise, if there is a good Muhurta is there for 2023 for this bill, you lost 9.5 years. Now you are telling we are going to implement this 2029. Census, delimitation, after that. Then where is the sincerity, sir? Sir, game-changing legislations, life-transforming legislation has to come from the heart of the rulers, not from the brain of the rulers, sir. Sir, we are witnessed not many life-transforming legislations, Manrega, right to information,
right to food, food safety, and of course, land acquisition bill. That type of life-transforming bills we witnessed, that all come from the heart of the rulers. Sir, now this bill, at the end of the Lok Sabha period, when you brought this bill, this is not coming from the heart of the rulers. This is coming from the brain of the ruler. It is because of you have a political calculation to bring this bill. Why that political calculation come? It come after Karnataka election. Congress party strengthened entire women's folk of Karnataka through the guarantees. And we have implemented that guarantees. Entire women of Karnataka, you say, ask in Karnataka, what they are talking about that? They are empowered. Women can be empowered through political empowerment or economical empowerment. Sir, which is the biggest economical empowerment legislation of this country? Manrega. 58% of the women are working in Manrega. Your Prime Minister told that. Prime Minister told that this is the memory of our corruption. Then he corrected that. And their COVID period, only one scheme benefited the poor people of the country. That is Manrega. Therefore, Manrega, then self-help group, 2011, UPF brought that, which Kerala started earlier, Kudumbasri, through Kudumbasri, which these are all the economical empowerment of women. But you, now, at the time of the Lok Sabha election, you brought this bill and you are telling we are the champions. You oppose the Rajivji's bill. Now, sir, there are lot many bhashans about this bill. When is going to be implemented? We need a clear-cut answer, sir. When is the Madadi told 2029. If it is going to happen in 2029, when the census will take place, when the delimitation process started, when it is going to be completed, when the women will get an representation as per this law. This has to be answered by the Honorable Prime Minister or the government, sir. Sir, here, Naddaji talked about a OBC reservation which happened in that house. I also heard about, I read some articles in this newspaper today that our Honorable Home Minister spoken about the Prime Minister of India has given his entire bank account to the employees. That's good. But you have to remember about that. The Iron Lady Indira Ji, the then Prime Minister of India, in the 1962 war, when the country is in a difficult period, she donated entire her jewelry to the National Defense Fund, Prime Minister Indira Gandhi. We are proud, sir. We had a leader like Indira Gandhi ji. Yes, she is talking about, they are talking about women empowerment. Who is the first Prime Minister, women Prime Minister? Who given the first woman Prime Minister? Who given the first woman President of India? Who is given first Lok Sabha Speaker of the India? Who is given the first Governor of India? Who is given the first Party President of India? Yes. Everything is Congress, sir. Then they are trying to become the champions of these things. No, I'm not yielding. Sir, if you are going to do the census, Nadda ji is talking about big, बहुत ज़्यादा बोल दिया OBC के लिए. Then why you are running away from caste census? Why you are running away from caste census? If you have a OBC pram, do the caste census and show the country. Why you are running from the caste census? You are talking. Yes, we are proudly saying out of our 4 chief ministers, 3 are from OBC community. Out of our 4 chief ministers, you are talking about Congress is. Therefore, then you have to understand. Sir, then these people are talking about women empowerment. My old fellow
parliamentarians spoke about that. Unnao, Katwa, Manipur, sir, Hatras. Sir, I am also pained when I saw the video of women paraded naked in Manipur. When I went with Rahul Gandhi ji there, the women folk of Manipur crying before us. Our Prime Minister not even uttered a single word in 100 days. Then you are talking about women empowerment. You are talking about women empowerment. What women empowerment? What women empowerment? What women empowerment? Yes, everywhere, wherever, yes, there is no discrimination. I'm telling very clearly, sir. Sir, sir, one thing, they are talking about women empowerment. Beti bachao, beti padao. Government only utilized 156 crores out of the budget, 848 crores. Shockingly, 80% of the fund allocated were spent on publicity for Beti Bachao and Beti Padhao. In 2023, the budget for Mission Shakti declined by 1.2%, which include your Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Matru Vandana Yojana, Women Helpline, Beti Bachao, Beti Padhao, other schemes. 30 seconds. You speak about women's safety, but why 30% NDA-I fund is unutilized? You are speaking about the women's security. Why NDA-I fund is unutilized 30%? Give us the answer. Give us an answer. Sir, now the price of women, now the women are crying, sir. LPG gas, 1,000 rupees. Tomato. And their price rise everywhere. People are fighting. Sir, I am concluding 1 minute only, sir. 1 minute only, sir. Derek Sir. O'Brien. Sir, 1 minute. Your time is over. You, one second. Honorable members, I have to go by the time available. I am so sorry. Okay, so from your party, we'll delete the rest. We'll adjust. Okay, go ahead. Sir, my point is that women are in a very great difficult situation in this country due to price rise. You are talking about empowerment of women. What is the LPG gas price? 1,000 rupees. 1,200. Petrol diesel price is hiking. Tomato price is hiking. Everywhere difficulty they are facing. On the other hand, their security is totally compromised. Therefore, on the other hand, they are telling at the end of the election period, they are bringing with legislation and they are telling that this is not going to happen. Therefore, we need only two assurances from this government, sir. One is this bill has to be implemented quickly, immediately. Then, there should be an OBC reservation along with provision in this bill. These two major, we are supporting bill because this is the child of us. Therefore, basically we are supporting, very strongly we are supporting. No doubt about it. But for sir, if this bill is implementing only on 2029, what is the purpose of calling special session, sir? What is the use of special session? We can pass it in winter session. We can easily pass it in winter session. Wow. Sir, one more thing I have to tell, sir, you have to allow. When the parliament building, two major events happened in last 1 month. One is the inauguration of this parliament building. We are all expected, Honorable President and Honorable Vice President will be there. You are the custodian of this Rajya Sabha, sir. You are the chair. It is an insult to us, Rajya Sabha members. Our chairman is not there in that time. Our chairman is not there in that time. Our President of India is not there in that time. One second. Honorable members, we can't trade on deficiencies. We can't trade ignorance of others. Let me make it very clear. Vice President and the Honorable President have been accorded the highest respect in the country. Number one. Number two, one second, there has been no constitutional transgression. The position of the President and the Vice President or the Chairman
has to be kept at the level as expected, and that was done. And that is what you have seen in last 3 days also. I would appeal to you, as a member of the leading opposition party, you must do your homework, find out. It doesn't send a good message when you bring in the Honorable President also. Read the Constitution, and you will find the role has been defined categorically. Leave it at that. Let's not get into that area. And I can assure you, your chairman, one second, your chairman will not allow anyone to denude his power. And therefore, there has been no denudation. There has been no decrease. Get over this perception. We believe in rule of law, in constitutionalism. Point out a single article of Constitution which, according to you, has been transgressed. We cannot lower the dignity of the Honorable President. The Honorable President has to come here under the Constitution. And let me tell you, honorable members, one second, take your seat. Honorable members, the First Amendment of the Indian Constitution, please recall it. There was a provision by framers of the Constitution that the Honorable President will address every session of Parliament. That was the original prescription in the Constitution. And the amendment was once a year. Honorable President has to actually act in accord with the Constitution. The Constitution stipulates, no, don't reduce our position. Don't reduce our position, please. Understand and do it. Oh. Nasir, do you think Mr. K.C. Venugopal needs your support? Some of you rise to give support. Okay. Please conclude now. I'm winding up. Sir, my point is I am respecting your position. I am respecting, but the people of India expected President of India and your presence. That is what I mentioned. Sir, one more thing. One more thing, sir. They are now brought this bill and they are trying to become the champion of this. They want to divert many issues. That is why one nation, one election. That is why this type of things have happened. We know that exactly. But the sincerity. Can I ask a question, sir? Naddaji talked about their political representation. Our party is also having representation women enough. Their party may be also. But who is controlling their party, sir? Rashtriya Swayam Sevak Sangh, isn't it? How many women in their RSS? How many women is in their RSS, sir? Sir, I am quoting a statement, sir. In 2010, the bill has been lost. In 2010, bill passed in Rajya Sabha and bill has to be failed to pass in Lok Sabha. Then member of Parliament of Lok Sabha. Now the Chief Minister of Uttar Pradesh. There is a woman reservation at present at local levels. How does this affect the domestic responsibilities like child care? It should be assessed whether women quota does not affect these roles. Therefore, their attitude is women for child care. Mr. Venugopal, nothing will go on record. Women for child care. Nothing will go on record. Sir, this is a point of order. I am quoting. Nothing will go on record. There is a point of Mr. Venugopal, nothing will go on record. Point of order is there. Please sit down. Sit down, all of you. इतने आराम से बात हो रही है. आपने अपनी बात कही. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. प्रेम से, स्माइल से, कंपोजर से सुनिए. सर. Yes, Mr. Yadav. What is your point of order? Yes, sir. सुनो ना. Sir. Yes, I will ask. Sir, Venugopal ji. No.
235. No, Mr. Yadav. 235. Mr. Yadav. 235. Your point of order. 235. 235. 235. सर 235 रूल 2 है, कोई भी मेंबर को यह अधिकार नहीं है कि सदन में बैठे हुए किसी भी लोगों के ऊपर कोई आक्षेप लगाए। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर वेणुगोपाल जी बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे को जिस संगठन के साथ जोड़ रहे हैं हमें उसका होने का गर्व है, लेकिन आरएसएस के साथ राष्ट्रीय सेविका समिति है, वहाँ 100% महिलाएं हैं जो राष्ट्रभक्ति का कार्य करती हैं। आप सुबह भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस वाले ठीक से ट्यूशन लेकर के बोला करें, बिना तरीके से ना बोला करें, बिना तथ्यों के ना बोला करें, बिना बात के ना बोला करें। मिस्टर वेणुगोपाल, इस RSS. Okay, Mr. Tiruchi Siva, under which rule? But it was read wrongly, sir. 235(2) says, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. Member was speaking, sir. He was obstructed only from that side. How can the point of order be pointed towards him, sir? One second. That's true. Please read 240. वैसे बताता हूं, कोई भी सदस्य इररिलेवेंट रूल को ना उठाएगा। तिरुचि शिवा ने इररिलेवेंट ऐसा है। एक सेकंड कंक्लूड करने से बड़ा अच्छा लगता है, कुछ हंसी के फव्वारे भी होने चाहिए। और ये मिली भगत का मामला तो नहीं है, मिली भगत का मामला तो नहीं है। Now please conclude. The attitude of BJP leaders. I am quoting one word in Hindustan Times. That point of time, there is by a statement by the UP Chief Minister. Then now the UP Chief Minister. That point of MP, there is women's reservation at present at local level. How does this affect their domestic responsibilities like child care? It should be assessed whether women quota does not affect these roles. That means your attitude is women are for child care. Sir, my point is that this bill we are going to support. The life transforming bills has to come from mind, heart. Our Prime Minister is telling he has 54 inches chest. 56. If 56 inches chest is there, then what is stopping them to implement this bill in 2024? Sir, please correct yourself with heart. Thank you, sir. Jai Hind. Sri Derek O'Brien, 7 minutes. 10 minutes, sir. 7. 10. He has taken time of other members. Who? No, I say Mr. K.C. Venugopal. Sir, what are you doing? Are you making a mockery of this? What? Is something wrong with you? Sir, I've got 10 minutes of my party to speak. Sit down. I got 10 minutes of my party. Why are you doing this, sir? No, look here. I'm not giving. Just sit down and listen to me. It has become virtually your reference. All India Trinamool Congress, Dola sent 10 minutes. Your total time is 24 minutes. Yes. You have 14 minutes left, 7 each. You can take all the 14 minutes. Sir. Please, sir. Please. Just 1 sec. Sir. Just hear me out, please. Yes. Just hear me out. 1 sec. Sir. What is wrong? Just hear me out and then What is if wrong? I'm saying something wrong, you can just hear me out, Let's sir. first Please. talk on time. Sir, I'm talking only on time. How much time your party has? 24 minutes. How much has been used? 14 minutes. 10 by Dola Sen. 4 by Mausam Noor. Dola 24 Sen. minus 14 is 10. So how much time is left? 10 minutes. Okay, take 10 minutes. So I have not started and it's already 1:25. Doesn't matter. No, sir, Take just 10 minutes. Sir, please. 11:25, 10 minutes end. Okay. Go ahead.
I support the women's reservation bill. But this government, when will this government know or learn that this is a parliamentary democracy and this is not an army commando operation? In an army commando operation, you need secrecy, you need surprise, you need stealth. In a parliamentary democracy, you don't. You need cooperation, you need sharing. Why do you bring this special session parliamentary bulletin, no agenda, the agenda will be added later? 2, why do you have an all-party meeting on Sunday and don't mention a word about this bill? Why do you have a cabinet meeting and this morning we are given 4 hours time to submit amendments? Sir, honestly, I appeal to them, such parliamentary democracy with such secrecy hurts a democracy. We know why it is being done. And the last 3 days, one man's story is being told. Fair enough. Today, I want to begin with a quote, which everyone can own today. Quote, "Sir, we want the women's bill to be introduced. We want nothing short of the women's bill. We want a specific date. We want an assurance that the women's bill is brought. This is a matter of shame that it hasn't been brought. We want a specific time frame." Unquote. This is very nice today. This was said by somebody in the Lok Sabha on the 14th of July, 1998. It was a woman MP. Today, she is the 3-time Chief Minister of Bengal. She is the founder chairperson of the Trinamool Congress. And sir, she has already got 40% of her women MPs already in the Lok Sabha. From 14th of July 1998, let this woman's story be told. In 2006, a 26-day hunger strike, no reservation, struggling and fighting for her rights as a woman. In 2014, setting a record because the bill didn't get passed. So what did she do? She gave 41% tickets in the Lok Sabha to women MPs. The BJP president, the first speaker, was saying this is the shortest way to bring women to parliament. No, sir, this is not the shortest way. You didn't need the bill. Bring them, show us, and bring them to parliament. Now you come to the life of this woman. 2019, she sets a record. Not only does she give 40% women tickets, 39% women Lok Sabha MPs are already sitting in the Lok Sabha. Why do I say this? It is one thing to give the women tickets. It's another thing to make sure you give them tickets which are winnable. One man's story, sir, we've heard. One woman's story needs to be told today in this new parliament building. I'll tell you more. My last date, 2021, assembly elections in Bengal. The men came with money, with media, with muscle power, with misogyny, and mocked her. Didi, oh Didi. You even tried to smash and you broke her foot, smashed it to injure her. Yes, she gave you the answer truly like a woman. Softly, softly. Good. When I talk about Mr. Modi and Mr. Shah, I get under their skin, I know. Sir, the woman answered her how? The women didn't answer. The people of Bengal in India provided the answer. And after the election, what happened? The health minister of Bengal, the finance minister of Bengal, the land minister, the industry minister, the commerce ministry are all headed by women. You couldn't find one woman in your 16 chief ministers to make a chief minister, and you're coming and telling us what to do about women. Take some of our advice. Now we'll give you, like how we gave you in 1998, you're trying to implement in
2045 or whatever, listen to 2 pieces of advice from us and take it in good spirit. Because women, at least my chairperson has a vision which I look up to. So here's one suggestion. If you're so keen, and now it's past 2 p.m. already, so nobody can submit any amendments, as we are all saying, the Congress party, the Trinamool, the DMK, the AAP, all of us, we, India, we are saying, bring this in 2024. So all you need to do to bring this in 2024 is remove 334A from your existing bill. Bring it, we'll start in 2024. Yes. If you're, one second, sir. If you're finding that difficult to do, here's another solution. At least try. 2024, an open challenge from my party. You bring 1/3 of women elected from your party and show us. Yeah. Bring and show us. I guarantee you, we will bring 1/3 of women with your bill, without your bill. Yes. Sir, some people have a sense of humor, and I'm sure we haven't lost our sense of humor here, because the joke going around is there's a typographical error in the bill. That actually it's 2024, should actually they meant 2034. Now, I don't know whether that's true or false, but I've got a second suggestion. It was very nice, sir, your idea this morning of having ladies sit there for 15 minutes, 16 minutes, all through the day. So here's an idea which may not happen in 24, but think about it. It's coming to you from my party as a suggestion. Get everybody on board, have proper discussion on the subject, and then bring 1/3 women reservation also in Rajya Sabha. Yeah. We will all support. Yeah. It can't be done in a hurry, but bring it. Today you may think it's a crazy, zany idea, but no, this is possible, if not in the next 6 years, in the next 10 years. The question is, sir, for all the speeches we hear, is the BJP really serious about empowering women? Because all the struggles and oppression faced by women is not because of women. It's because of men and the outlook of men to women. I don't want to spend time wasting my time on a former wrestling chief. Leave that. I'm quoting from the Hindustan Times. Quote, people in air-conditioned rooms in Delhi cannot decide public policy. This bill will drown the Indian political system if it goes through. If men develop feminine traits, they become gods. If women develop masculine traits, they become rakshas. Western ideas of women's liberation should be properly analyzed in the Indian context. Unquote. Said by who? I'll tell you who said it. You can build a new building, sir, but I request all of you to first change your mindset. Yes. This was said by the current Chief Minister of Uttar Pradesh. Sir, in conclusion, I'm happy I'm being allowed to conclude today. In the old house, at least, I wasn't allowed, but I'm happy. Sir, I wish to conclude by remembering my favorite woman of all time, my ma, my mother, who's no more. Ma would always tell me that, you know, Derek, this world is divided into only 2 kinds of people. The talkers and the doers. So some people will talk. 15 crore into your, 15 lakhs into your bank account, farmer income, triple, after demonetization, this will happen, after that will happen. There is one difference, sir. The talkers and the doers. There is only one difference. Because there are only 2 kinds of people. So there's a talker and there's a doer. There's a male Prime Minister of India. There's a simple woman who's the Chief Minister of Bengal. Thank you so much. Shri
Derek O'Brien is called upon to authenticate two statements made by him. One, man came with money, and second, the allegation he has leveled by quoting the present Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Manas, during course of the day, Shri Manas Ranjan Mangraj, authenticated. Thank you, Chairman, sir. Already Mr. Jairam Ramesh, Mr. Chidambaram Thank you, Chairman, is yet sir. to do it. No. I support this bill. It has to be. मैं बिल को समर्थन करता हूं, सर. 1 second. No. मैं मेरा During course of the मातृभाषा day, उड़िया में बोलने के लिए चाहता हूं. the direction is very clear. No BJP member. ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ 1 second. ଜୀବନ- Sit down. ଜନଜୀବନ 1 ତଥା second. 1 second. 1 ସମାଜର second. ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 second, honorable member. 1 second. I had indicated very firmly, this is not a place to trade allegations. Every member has a right. Every member has a right to say anything. You will have to authenticate during course of the day. That's a directive. Shri Manas Ranjan Mangraj, take your seat. Manas Mangraj, no floor. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Sit down. You have to sit down. Don't force my hands. Sit down. You will have to comply the directive. No. If you level an allegation that Prime Minister of this country went to West Bengal with money, and you still want me to condone it, prove it. Shri Manas Ranjan Mangraj. Shri Manas Ranjan Mangraj. Do you want to take, please? Thank you, Your Chairman, sir. time is 3 minutes. I support this bill, Please sir. continue. मैं मेरा मातृभाषा उड़िया में बोलने के लिए चाहता हूं, सर. Yes. सर, बीजेडी सबुबले साधारण जनजीवन तथा समाजर समस्त क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण दिगरे सर्वदा कार्य करि आसुअछि. 1992 मसीह ओडिशार तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजु पट्टनायक एक ऐतिहासिक निष्पत्ति क्रमे ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानकरे महिलांक पई 33% संरक्षण व्यवस्था करथिले. सर, 2011 रे तांको पुओ तथा बीजेडी सभापति तथा मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानकरे महिलांक पई संरक्षण सीमा को 50% को वृद्धि करिसंती. 2012 रे श्री नवीन पट्टनायक पौर संस्था म्युनिसिपालिटी एवं एनएसी एवं महानगर निगम रे महिलांक पई 50% संरक्षण व्यवस्था मध्य करिसंती. यह पुनर्बार महिला सशक्तिकरण एवं विशेषकर साधारण जीवन में सेमानकर अंशग्रहण पई बीजेडी रो प्रतिबद्धता को प्रतिपादन करुअछि. सर, मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सबुबले विश्वास करती जे महिला सशक्तिकरण बिना कौनसी समाज राज्य किंबा राष्ट्रर विकास हो पारिबो नाही. तेणु नवेम्बर 2018 मसीह मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में विजु जनता दल लोकसभा तथा राज्यसभा महिला मानकु 33% संरक्षण जोगाइबा ओडिशा विधानसभा सर्वसम्मति क्रमे एक संकल्प पारित करथिले. सर, डिसेम्बर 2018 मसीह मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक दलर वरिष्ठ नेता नेतृत्व में 22 जन बीजेडी प्रतिनिधि को 7टी जातीय दल समेत भारतर 22टी प्रमुख राजनीतिक दल निकट को पठाइथिले. एही प्रतिनिधि माने मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक तरफरु सही संपृक्त राजनीतिक दलर मुख्य मानकु भेटी दीर्घ दिनरू संसद में पड़ी रही महिला संरक्षण बिल को पास करने को सहमति जुटाइथिले. मैम, लोकसभा निर्वाचन समय मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक लोकसभा निर्वाचन में दलर महिला प्रार्थी 33% संरक्षण व्यवस्था प्रदान करिअछंती. 2019 लोकसभा निर्वाचन में बीजेडी द्वारा 7 जन महिला प्रार्थी रही जो 5 जन महिला प्रार्थी जीति एवं से माने आस्का भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर एवं केउंझर सांसद अछंती. एबे मैम, वयस्क महिला प्रार्थी भाव आस्कार सांसद श्रीमती प्रमिला बिशोई एवं सर्वकनिष्ठ सांसद भाव केन्दुझर श्रीमती चंद्राणी मुर्मू रही. मैडम, मान्यवर मुख्यमंत्री दीर्घ वर्ष धरी
संसद में महिला संरक्षण बिल पारित होगा निश्चित करने को यही लंबा युद्ध लड़ी आसुअछंती। संसद में महिला संरक्षण बिल पास करने को बीजेडी सांसद माने बारंबार दाबी उठाई आसुअछंती। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक विभिन्न प्लाटफर्म रे एकाधिक चिठी एवं दाबी माध्यम क्रमागत भाव में महिला संरक्षण बिल पास कर आवश्यकता संक्राम पर बुझाई आसी। संसद में पारित होगापी महिला संरक्षण बिल आने को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक एक बड़ विजय। आपका समय कारण महिला संरक्षण बिल पास निश्चित करने को श्री पट्टनायक दीर्घ दिन संग्राम जारी रखिंट। मैम एक मिनिट, यह ओडिशा एवं भारत महिला मानी एक विजय। महिला संरक्षण बिल को संसद में पारित करने विजु जनता दल निरंतर प्रयास एक विजय अटे। यह आउ एक सुजोग जितेबाला माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयास पर ओडिशा तथा देश में महिला माने बृहत सशक्तिकरण सुफल पाइबा जाउछंती। थैंक यू मैडम। अच्छा, श्री रायगा कृष्णया। Thank you, Chairman, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the 128 Constitution Amendment Bill. This is welcome, long overdue and much awaited. I would like to take this moment to highlight the issue of pertaining to the bill at hand. Affirmative action, gender first. In this country, there is two discrimination. One gender discrimination, second one is caste discrimination. By introducing this women bill, gender discrimination gradually calmed down. But there is a caste discrimination. But because to remove the caste discrimination, women bill, in this women bill, I want to suggest to the central government, this House, August House, to provide sub-quota to OBC women also. If BC women are not represented in this women bill, the women bill will not meaningful. We supported this demand for reservation women as they have least political representation. But BC women are still underrepresented. Why this? There is no idea for proposal for giving them sub-quota. If technically sub-quota not possible, introduce the BC bill. It is clear that all political parties have soft spot for BCs. Moreover, the general representation of BC men is also very low, that is 15% below. Out of there, even after 75 years, it was not done to the justice to the backward classes. It is a democratic country which should give share to all castes and social groups according to their population. Then there will be a unity, integrity, peace in this country. For that, it is wrong not to give due share to BCs. It is time to give BC constitutional rights and share. In 75 years democracy, 56% population of BCs has 15% in the political sphere and 16% in employment sphere, 1% in industrial sector, 5% in private jobs. Represent the need for BCs to give share according to the population. We request BCs are not given share according to their population, all sectors, there would be a rebellion in the country in not higher 20% to 2%, higher judiciary. But it is just not enough giving a few schemes per welfare of backward classes and providing reservation BCs in education and employment. Real development of BC come only when they get political power. This is possible only when the seats are reserved for BCs. Indian Constitution has been amended 120 times, but it has not been amended even once for political power. Social setup of our country is fundamentally built on caste system.
Unless all castes are get their due share in political power, country cannot become a real democratic republic. Reservation of political seats provide gateway to power to BCs. Power gives them respect, confidence, acceptance, and remove social disparity. Power to BC allows them to bring forth the difficulties, problems, miseries of backward classes, notice of the country at large, enable the rulers to take right steps for their development. The present socio-economic political setup of our society is designed against the interest of backward classes. To change the present setup, it is essential to give due share to OBC in legislative bodies. Political power has become a right to property. Those people who are ruling and inherited their own successive generations. Please conclude. But now in India, democracy is going on, social change process has begun. But BCs constituted bulk of the productive workforce in India, where it is agriculture sector or industrial sector or service sector. It is desirable to make their participation in law-making bodies. It is meaningful. Madam, I am fighting for the 50 years for backward classes. आपका समय हो गया माननीय सदस्य. 5 minutes. In any egalitarian society, power should be shared equally to all the sections of the society. When we talk power, it means economic power, political power, and social cultural status in our society. There is almost monopoly all these three types of power. माननीय सदस्य, समय हो गया. आपका समय हो गया. Please conclude. Just 1 minute. Even after 75 years of independence, India has no separate BC ministry department. We have no reservation in private sector. Next speaker, regarding सुश्री कविता पाटीदार. आपका समय हो गया माननीय सदस्य. सुश्री कविता पाटीदार. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति प्लीज बैठिए सदस्य. आपका समय हो गया. आपका समय हो गया. सुश्री कविता पाटीदार. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया. मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बात करने के लिए आप सभी के बीच में खड़ी हुई हूँ. सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के इस पर्व गणेश आराधना के समय महिला बिल को लाने का सदन में काम किया है. माननीय महोदय, जब आज देश दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. आज मैं इतिहास की तरफ देखूं तो रानी लक्ष्मीबाई की बात कहूं या कल्पना चावला की, या वर्तमान में आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व का वर्णन कर लूं, हम जानते हैं कि हमारा देश महिला के सामर्थ्य और शक्ति का साक्षी रहा है. ये दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है, वो झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो चंडी काली है. देश की ऐसे सशक्त नारी की चिंता कर देश के चिंतन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है. हमने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी देखा है, जिसके माध्यम से संसार को नारी के अस्तित्व की आवश्यकता का संदेश दिया गया है. एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ संस्कार. ये हमारे संस्कार ही है कि हमारे भारत देश को भी हम भारत माता कहकर पुकारते हैं, और इसी माँ भारती के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के सामर्थ्य की उपयोग करने के लिए ये बिल माननीय मोदी जी के द्वारा इस सदन में लाया गया है. माननीय सभापति महोदया, पिछले विगत 9 वर्षों से केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ महिलाओं के आगे अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं, अपितु उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास भी किया है. उज्ज्वला योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, शौचालय निर्माण की बात करूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कहूं, महिला सशक्तिकरण, इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिला के अधिकारों में वृद्धि के संकल्प को पूरा किया. हम सिर्फ राजनीति के लिए या वोट के लिए महिलाओं का नाम नहीं लेते हैं. मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को इस सदन में कहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने
हमारी बहन बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसके समाधान का प्रयास किया है। पिछले 9 वर्षों से भारत में जिस प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, उसका परिणाम आज नजर भी आने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में लड़कियों की भागीदारी आज 43% है। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आज बेटियों का जन्म उत्सव बना है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को पूरे देश ने सहारा है। वहीं 1,25,00,000 अब तो 1,30,00,000 बहनें जो लाडली बहनें की योजना से आज मध्य प्रदेश में सशक्त हो रही है। और मध्य प्रदेश में जो वंदन की बात बार बार यहाँ आ रही है, हम तो हर कार्यक्रम की शुरुआत ही बेटियों के पूजन के साथ, उनकी वंदना के साथ हम लोग करते हैं। कल इस सदन में ओबीसी की भी बात कही थी। मैं भी ओबीसी की वर्ग से ही आती हूँ। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इतने सालों तक सत्ता में रहकर उनको ओबीसी की चिंता क्यों नहीं हुई? आज तक उन्होंने कभी कदम क्यों नहीं उठाए? एक तरफ वो ओबीसी का नाम लेकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देकर मन से पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात कही है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदया, पूर्व में भी इस प्रकार का बिल राज्यसभा में आया था और लोकसभा में पारित नहीं हो सका। 4 साल तक उसको लंबित करने का काम किया गया है। और हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का दृढ़ शक्ति के साथ इस सदन में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देती हूं कि वर्षों से लंबित इस बिल को इस सदन में उन्होंने पेश किया। जैसे ही यह बिल पारित होता है, देश की लोकसभा व देश की सभी राज्यों की विधानसभा में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी और साथ ही SC व ST वर्ग के लिए जितनी भी सीट आरक्षित है उसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इतिहास को बदलने वाला यह बिल न सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा, अपितु इस महिला के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहती हूँ कि संवेदना और ममता की प्रतिपूर्ति नारी के नेतृत्व में निर्णयों में भी संवेदना का समावेश होगा। आज जैसे हम कुछ युक्ति बोलते हैं कि हर पुरुष की प्रगति के पीछे नारी का हाथ होता है, इस सदन में मुझे ये बोलते बहुत गर्व है कि हम सब बहनों की प्रगति के पीछे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ताकत और साथ है, जो पूरे देश की बहनों से ये कह रहा है कि नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, गया शांति का वक्त, आज बनकर चलो आग की चिंगारी, बनकर सीता के समान वध रावण का करवाना है, आज कटारी बांध कमर में स्वयं युद्ध में जाना है, भाव भीरुता का तजकर तुम करो शेर की सवारी, नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, जाग उठो भारत नारी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने एक निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया और यह खोखले वादों के विपरीत आज एक स्पष्ट वास्तविकता बन गई है। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री जी को इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती महुआ माझी। Thank you, Honorable Vice Chairperson, ma'am. Women Reservation Bill, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलने से पहले मैं राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर को नमन करना चाहूँगी। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय के लिए, विद्यासागर के लिए, वरना हम भी शायद सती प्रथा, बाल विवाह के शिकार हो जाते। मैं अपने स्टेट झारखंड की उन वीर नेत्रियों को भी नमन करना चाहूँगी, जोहार करना चाहूँगी आज के दिन। सिंगी दई, कैली दई, फूलो झानो, जिनका नाम इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है पुरुषों की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का मिसाल कायम किया। आज बहुत सारी नारी, उनकी हिम्मत से उनको बल मिलता है और राजनीति में महिलाएं आगे आती हैं। हमारे संविधान के निर्माण में भी 15 विदुषी महिलाओं का हाथ था, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे झारखंड में खेल के क्षेत्र में सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति, असुंता लकड़ा, झानू हाजदा जैसी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे झारखंड और इस देश का नाम रोशन किया, उन्हें भी आज नमन करती हूँ मैं। हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने
जो हमारे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने नशाबंदी की 1971 में, उन्हें पता था कि अगर पुरुष नशा नहीं छोड़ेंगे तो महिलाओं पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार होगा, वो अपने परिवार को नहीं देखेंगे। मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने पिछली सरकारों में जो महिलाएं ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, उन्होंने बल दिया, आत्मसम्मान के साथ अपने स्टेट में रोजगार देने के लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, चाहे वह पलाश ब्रांड हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, या फिर फुलो झानो आशीर्वाद योजना हो, पोटो हो, खेल योजना हो, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड के विधानसभा में 12.35% महिलाएं हैं, जो कि दूसरे राज्यों से ज़्यादा है, कई राज्यों से, जैसे हरियाणा में 10% है, गुजरात में 7.14% है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में 9.13 है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि ये आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और मैं लेकिन चाहूँगी कि ST SC OBC महिलाओं के लिए भी उसमें आरक्षण हो, और तत्काल आरक्षण हो, 2024 में हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए, न कि जनगणना और परिसीमन के लिए हमें 2029 के बाद तक का इंतज़ार करना पड़े। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ये बात कही थी कि महिला रिजर्वेशन बिल आने वाला है, इतनी खुशी की लहर दौड़ गई। चूंकि मैं झारखंड में माननीय सदस्य कंक्लूड कीजिए, आपका समय समाप्त और हो मैं गया। अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो पहाड़ों से, जंगलों से, दुर्गम इलाकों से महिलाओं का फोन आने लगा कि मैडम हम लोग 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, कंक्लूड कीजिए लेकिन जब पता चला कि ये 2029 के बाद आएगा तो मायूसी छा गई थी। मैं अनुरोध करूंगी सरकार से कि वो इस पर पुनर्विचार करे और ST OBC रिजर्वेशन करे और 2024 में ही इसे लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। मैडम, कितना समय है उसी अनुसार बोलेंगे? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट, 3 मिनट। थैंक यू सो मच चेयरपर्सन। सबसे पहले मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगी। 75 साल बीत गए पर उनकी आवाज़ अभी भी गूंजती है, उनके शब्द अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं। Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. मैम, हमारी जो इतिहास है महिलाओं का, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। वहाँ पे जो 15 महिला सदस्य भी थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी विल बी द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक ऐसा विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया जहाँ पे महिलाओं को इक्वालिटी और समानता का उनको समानता की ज़िंदगी दी। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि 75 साल में जो महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए थी, स्टेट असेंबलीज़ हों या केंद्र में हों, वो हमें मिली नहीं। इस वजह से आज हम इस रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आज अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये लड़ाई हमारी जो शुरू हुई है, इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये एक ऐतिहासिक पल मानती हूँ कि मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। पर हमारे साथ 2 दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 9.5 साल बाद 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वादा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पर वो आरक्षण को आते आते 9.5 साल लगे। JP नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा दिस इज़ दी ओनली वे वी कैन गिव रिजर्वेशन। मैं कहूँगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दिस इज़ नॉट दी ओनली वे वी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। 2010 का बिल ले आइए। 2010 का बिल लागू होता अगले लोकसभा इलेक्शन से। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट देख लीजिए, वो फ्यूचर डेट के नहीं थे, वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल थे। पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले 7 साल बाद लागू होगा। तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, मैं मानती हूँ उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं, पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं। दरवाज़ा तो खोल रहे हैं, पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं साथ में।
मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपको रोक रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन से। तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। प्लीज माननीय सदस्य, मैं बस आपका एक समय चीज़- समाप्त हो गया। जी जी मैम, एक मिनट में खत्म कर दूंगी, आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांगूंगी, ना उम्मीद है। बस जाते जाते एक चीज कहूंगी कि जो 2010 का बिल था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में आप भी सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, जितना लोकसभा में उन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में नहीं है। माननीय तो सदस्य, उधर भी आपका समय लागू होना समाप्त हो चाहिए। गया। बस इसी बात को कहते हुए मैं इसको वेलकम करती हूं, मैं इसको सपोर्ट करती हूं, और एक ऐसा ऐतिहासिक दिन हम रचने जा रहे हैं, उसको मैं आप सभी का जिनने सपोर्ट किया है आभार व्यक्त करूंगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी। उपसभापति महोदय, मैं संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी संसद ने आज से कुछ वर्ष पूर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था, और आज महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू करने के लिए संविधान का ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। उपसभापति महोदय, जिससे मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि इसके पहले भी 4 बार प्रयास किया जा चुका है संविधान में संशोधन करने हेतु, और ये 5वां प्रयास है। इसके पहले 2 बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय प्रयास हुआ, 1 बार देवगौड़ा जी के समय में प्रयास हुआ, 1 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय प्रयास हुआ, परंतु चारों प्रयास विफल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके प्रयास से कल लोकसभा में ये सर्वसम्मति से लगभग पारित हो गया, और आज विधानसभा से ये पारित होने जा रहा है। उपसभापति महोदय, इसके पहले ये 4 बार क्यों नहीं पारित हो पाया? मैं यहाँ बैठे लोगों को इतिहास थोड़ा बताना चाहूँगा कि 1998 में जब अटल जी की सरकार के दौरान ये बिल सदन में पेश किया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्री सुरेंद्र यादव, उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया, और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा, और वो बिल कभी पारित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं स्वाति महोदय कि जब 6 मई 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था, तो सदन का माहौल क्या था? हंसराज भारद्वाज उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन पर कोई हमला न करे उनको बचाने के लिए वो पहली पंक्ति में नहीं बैठे, वो सेकंड रो में बैठे, और उनके बगल में 2 महिला सांसदों को बैठाया गया, श्री सुश्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा, और जो बीच का रास्ता जो आइल है, दैट वाज गार्डेड बाय रेणुका चौधरी, जयंती नटराजन एंड अलका बलराम क्षत्रिय। और हंसराज भारद्वाज जैसे ही खड़े हुए पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी थे अबू असीम काजमी, वो छीनने के लिए दौड़ पड़े, रेणुका चौधरी कूद पड़ी। इसी कन्फ्यूज़न में, जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, और पीएस कुरियन जो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने तुरंत उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। तो सभापति महोदय, ये हाल था कि किस माहौल में, इतना ही नहीं, जब स्टैंडिंग कमेटी से बिल स्वीकृत होकर जब आया और सदन के अंदर 8 मार्च 2010 को पेश किया गया, तो समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर ये सभापति अंसारी की मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक को उखाड़ कर फेंक दिया, आरजेडी के राजनीतिक प्रसाद ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, सभापति की कुर्सी पर फेंक दिया,
समाजवादी पार्टी के वीरपाल यादव, एलजेपी के साबिर अली, आरजेडी के सुभाष यादव, एजाज अली, उन्हें बोलने दीजिए 7 लोगों को माननीय सदस्य बोलने दीजिए। निलंबित कर दिया गया। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि 4 बार जो बिल पारित करने का जो प्रयास हुआ, वो क्यों नहीं वो बिल माननीय सदस्य क्यों नहीं पारित हो पाया, ये सदन को जानना आवश्यक है। और उपसभापति महोदय, ये हंगामा प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो, और इसे योजनाबद्ध तरीके से एक और दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में लिप सर्विस, और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसा कर वेल में भेजकर हंगामा करवाया गया ताकि वो बिल पास न हो सके। इसलिए सभापति महोदय, ये जो कहा जा रहा है, मैं सदन को ये बताना चाहूँगा कि निशाना ओबीसी आरक्षण नहीं था, निशाना था कि इस बिल को पारित मत होने दो, क्योंकि अगर ये बिल पारित हो गया तो बहुत सारे लोगों की अगले बार चुनाव लड़ने का उनका अवसर खत्म हो जाएगा। और इसलिए प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से और इस बिल का विरोध किया गया। सभापति महोदय, और सभापति महोदय, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मैं उनको इतिहास बताना चाहूँगा कि पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये पंडित नेहरू के समय में बना था। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, उसको क्यों लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, काका कालेलकर कमीशन के बाद 10 साल तक, 15 साल तक कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। और सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना? जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता, वो बना। 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सबमिट हो गई। किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और सती महोदय, 1980 से लेकर 1989 तक कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 9 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं लागू किया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रख दिया? और 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब पहली बार इस देश के अंदर सती महोदय इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। सती महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन बना, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। सती महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में एसटी कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। इतना ही नहीं सती महोदय, कि जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? मैं सदन को बताना चाहूँगा कि एक श्री बीके हंडी, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे पिछड़े वर्ग के, जो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2012 में, 2013 में, 2015 में, और हर रिपोर्ट में बीके हंडिक ने यह रेकमेंड किया कि पिछड़े वर्गों का आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, परंतु आपने नहीं दिया। और गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। एससी एसटी कमीशन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार ओबीसी कमीशन को दिए गए। The backward classes commission has all the power of civil court to summon and enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit। और सती महोदय, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पहली बार किसने दिया? नरसिंहा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो नरसिंहा राव जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक 4 लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया और कहा कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं। और सती महोदय, जब इंदिरा सावनी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया,
उस 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मैं जानना चाहता हूँ कि सदन में बैठे कांग्रेस के लोगों से, जब ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था वो जब 25 सितंबर 1991 को जब खारिज कर दिया, तो 10 साल तक आपने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया? और किसने फिर आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस को? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ सौती महोदय, जो लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी लागू कर दो। कल मैं भाषण सुन रहा था लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं का, कहते कि 24 में लागू कर दो, तत्काल लागू कर दो। तो आप क्या चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को जिस तरह से 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कि आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को भी इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे? सौती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्होंने जब 103rd अमेंडमेंट किया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक नया सब सेक्शन 6 जोड़ा गया जो कहता है, आप कंक्लूड कीजिए, समय समाप्त हो रहा है। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically and weaker section of citizens other than। सती महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इसलिए हम सोच समझकर कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, सेंसस के फिगर आएंगे और तब 2029 में लागू करेंगे। अगर जल्दबाजी में लागू कर दिया सती महोदय, तो कल कोई पीएल में चला जाएगा, यही लोग पीएल में किसी को खड़ा कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण विधेयक को खारिज कर देगा। लेकिन जिस तरह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हमने खारिज नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मुझे पूरा विश्वास है सती महोदय, आप शांत रहिए, बोलने दीजिए। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में इन लोगों ने कभी ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख से ज़्यादा ओबीसी के बच्चे वो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में वो दाखिला ले पाए हैं। इतना ही नहीं सोती महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लीज 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 शांत रहिए। माननीय सदस्य, आप शांत रहिए, शांत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सब जा रहे हैं, शांत रहिए, शांत रहिए। में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। डिपार्टमेंट को और यूनिट माना जाएगा। वो जा चुके हैं, हमने विश्वविद्यालय को यूनिट माननीय सदस्य वो जा चुके हैं, आरक्षण देने शांत रहिए। सती महोदय, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र किन लोगों ने नहीं लगने दिया? बाबा साहब अंबेडकर के मरने के कितने वर्षों के बाद सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगा। 34 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसके कार्य से मिला, किसके कार्यकाल में मिला? सौती महोदय, और सौती महोदय, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग, प्लीज आप शांत रहिए, उनकी अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सौती महोदय, शांत रहिए। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सौती महोदय कि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, आप शांत रहिए, शांत रहिए। थे, उन्होंने मंडल कमीशन का और विरोध किया। सौती महोदय, 6 सितंबर Honorable members, please take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I request you to take your seat.
Jaji, take. I'll listen to my announcement. Listen to my announcement. Jaji, very well meaning that it is a matter to be probed. It's a matter. 1 second. Please listen to Jaji. On this day, women's reservation. Let us. So, ma'am, before that, sir, ये बहुत give us light. Give us enlightenment. नहीं सर, मैं तो जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर कहना चाहती हूँ। उसी पर हूँ मैं। हाँ सर, इस बात को मैं इस हाउस में नहीं लाना चाहती थी। कल बात ऐसी हुई, वो अच्छी तरह से निभ गई जब आपने कहा कि गैलरी में बच्चियां बैठी हुई हैं। फिर उसके बाद आपने मेरे करियर के बारे में बात किया और निर्मला जी ने भी बात किया। मैंने उस बात को आगे छेड़ा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। परसों के दिन और कल मैं जितने बार बाहर गई घर जाने के लिए, लंच हो या जो भी ब्रेक हो, ग्रुप्स ऑफ विमेन वेर कमिंग और उन्होंने सबने मुझसे कहा हम आपके फैन हैं मगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं। आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग दिस इनटू द हाउस, बट आफ्टर व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ आई एम फोर्स्ड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। देखिए, आपको जितना चिल्लाना है आप चिल्ला लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। जो रियलिटी है उसको देखिए, प्रियंका, जो रियलिटी है उसको देखिए। ना प्रमोद तिवारी जी, जयाजी, I have taken note of it. सर, ये पूरा परिसर आपके अधीन है। पूरा परिसर, पूरा कैंपस आपके अधीन है जो राज्यसभा का है। हम सुनियोजित ढंग से देख रहे हैं। इसमें ये पता लगाना चाहिए कि किसकी रिकमेंडेशन पर, किस सदस्य की रिकमेंडेशन पर ये आए थे जो आए थे। तो उस सदस्य के खिलाफ, 1 मिनट पूरा कर दूं मैं, उस सदस्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। दूसरी बात सर, ये सदन को क्या कर लिया गया है, आपके परिसर को ग्रुप में हम जाते हैं, बाहर देखते हैं, कहते साहब हम आपके साथ नहीं, लेकिन हम इस वार्ड से आए हैं, हम इस एरिया से आए। तो भाजपा सुनियोजित ढंग से राज्यसभा की मर्यादा का हनन कर रही है, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। ऑनरेबल मिस्टर सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ओबीसी विरोधी रही है और उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 6 सितंबर 1990 को जब इसी सदन के अंदर 193 में डिस्कशन ऑन मंडल कमीशन लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजीव गांधी, उनका मैं भाषण को कोट कर रहा हूँ और मंडल कमीशन पर कह रहे हैं राजीव गांधी, टू मी इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री। Break of my country may not be important to you. You have taken country to the edge of caste war. It is Raja Sahib, yani VP Singh, who's trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country? और इतना नहीं सोती महोदय, ये भी कहा राजीव गांधी ने, hasty decision मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, the country is not prepared for it. This will compromise the goal of casteless society and promote casteism. Government seeks to benefit the privileged among backward caste. They seek to exclude the backward Muslims, Christians, and Sikhs from the reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission report should not be implemented in toto. ये राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जाए. The Mandal Commission report is not scientific, not technically sophisticated, and is not even academically sound. Caste cannot be sole definer of backwardness. जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं,
उनका चरित्र क्या रहा सभापति महोदय, और मैं ऑथेंटिकेट उनकी स्पीच को सदन के अंदर आप कहेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको भी आप कहेंगे मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ। ये देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था, और पत्र लिख रहे मैं उसकी 4 लाइन पढ़ रहा हूँ। माय डियर चीफ मिनिस्टर्स, they SC and ST, they deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything, but if you go in for reservation on communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second rate or third rate. और ये कौन थे साथी महोदय लिखने वाले, मैं आगे एक लाइन और पढ़ना चाहूँगा। It has amazed me to learn that even promotion are based sometimes on communal and caste consideration. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने का काम किया है। Put it on the table of the house. जी, मैं तैयार हूँ रखने के लिए। सभापति महोदय, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था? आपने उस समय ओबीसी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? जब 76 और 77 अमेंडमेंट जो पंचायत और नगर निकाय के अंदर SC ST के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया, उसमें आपने, और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, उसमें आपने ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? उपसभापति महोदय, ओबीसी आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था। हर एक को ये डर था कि हमारी सीट का क्या होगा। सभापति महोदय, कल अमित शाह जी ने भी लोकसभा में बताया कि संविधान 3 प्रकार की श्रेणी का ही इजाजत देता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और लोकसभा और विधानसभा में कभी भी ओबीसी आरक्षण नहीं रहा है। जब महात्मा गांधी अमन अनशन पर बैठे थे पूना पैक्ट के लिए, वो भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था। पिछले करीब 90-100 साल में जब भी आरक्षण मिला है SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में, कभी भी ओबीसी को लोकसभा और विधानसभा में कभी आरक्षण नहीं दिया गया। सती महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं। मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा। 40 MPs हैं बिहार के, जिसमें 19 MPs ओबीसी समाज के हैं। ये तो बिना आरक्षण के कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते। और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम ओबीसी पुरुष को टिकट दे रहे हैं, तो वहाँ तो महिला को टिकट देंगे, वहाँ तो पुरुष को टिकट नहीं देंगे, महिला ओबीसी महिला को हम टिकट देंगे। प्लीज कंक्लूड। जी कंक्लूड। 2-3 मिनट और सर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और मैं एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा। Your other speakers will lose time. कि झारखंड के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया। जहां पर कांग्रेस के 4 MLA हैं, आरजेडी के 1 MLA हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, कभी आपने पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि पंचायत के इलेक्शन आपने बिना ओबीसी आरक्षण दिए कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो इसलिए रुका हुआ है कि आज तक उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, जिसमें 26 ओबीसी हैं। ये कुल 35% ठहरता है, जो एक रिकॉर्ड है। और जो लोग कहते हैं कि ओबीसी विरोधी, उनको मैं इतना ही बता दूं, इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने ओबीसी समुदाय से, श्री HD देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन दोनों को, देवगौड़ा 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए। किसने उनकी सरकार को गिराया? कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया। और देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में कोई पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, इन लोगों ने
सीताराम केसरी के साथ, इन लोगों ने सीताराम केसरी जो एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। उनको नीच कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। सती महोदय 2015 में सती महोदय 2015 में जब राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने ऑनरेबल मेंबर गए, सुशील जी, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील जी, मिस्टर सुशील कुमार जी, प्लीज, ऑनरेबल member, I have already directed you to put that document on the table of the House. Now what you have stated, carrying facts which are being disputed, you will authenticate them. Yes, मैं करूँगा सर। And do it during course of the day. During course of the day. और सवती महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदम्बरम साहब अभी सदन में नहीं है, मैं कोट करना चाहूँगा 7 May 2010 when चिदम्बरम साहब वाज होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने क्या कहा। सती महोदय, चिदम्बरम साहब ने संसद में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा तो चिदम्बरम को मैं कोट कर रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द क्वेश्चन रिलेटिंग टू कास्ट other than scheduled caste and the scheduled tribe was not included. Caste was not included in the last census of 2001. चिदम्बरम साहब का ये बयान है कि एज ए पॉलिसी, और मैं उसका डॉक्यूमेंट है जो उनके स्पीच का पार्ट है, और उनका आज़ादी के बाद नीतिगत तौर पर SC ST के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं आपने कास्ट सेंसस करा लिया 2010 में? क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत आपने करवाया? और चिदम्बरम ने यह भी कहा, RGI का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और इसे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कंक्लूड। 2 मिनट और सकते। और सती महोदय, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, जिस 5,000 करोड़ खर्च हुए, उसमें पता है सदन को कितनी जातियां दर्ज हुई? 46 लाख, जबकि देश में 1931 के अनुसार देयर आर ओनली 4147 कास्ट, लेकिन 46 लाख कास्ट पर इन्यूमरेटेड इन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसलिए सवती महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी हैं जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जो उन्होंने कहा श्रीमती और फूलो देवी नेतम नहीं कर सकता था जो उन्होंने महिलाओं को 33% का जो श्रीमती फूलो देवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी के ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। महोदय, महिला आरक्षण इस बिल ये विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक हमारे राजीव गांधी जी लेकर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी नरसिंह राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया, जिसके चलते आज देश में 15 लाख महिलाएं चुनी हुई महिला नेत्री हैं।
आदरणीय महोदय, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए सामने वाले लोग आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके चलते लोकसभा में ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। महोदय, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि हम विपक्ष में हैं, ये महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बात की, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की। 9 साल बाद महिला आरक्षण बिल सरकार ने सुध ली है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम है, विपक्ष पूरे आपके साथ है। आज इस बिल का समर्थन देने के लिए हम खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर से आती हूँ और घोर नक्सली क्षेत्र से आती हूँ। कहीं ना कहीं मैं पंचायती राज से जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और विधायक से लेकर आज राज्यसभा के इस सफर के दौर में यहाँ पे आई हुई हूँ। ये पंचायती राज की बदौलत, ये राजीव गांधी जी के देन है, ये हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं की देन है, जो महिलाएं आगे आई हैं। आज राजनीति स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और विकास की दृष्टिकोण से हर जगह महिलाएं आगे आई हुई हैं। आज आपके सामने महिलाओं के हक दिलाने की बात कर रही हूँ। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की संख्या है। निश्चित तौर पर यह हमारे नेताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। मैं गर्व से कहती हूँ कि राज्यसभा में हमारे परसेंट के अनुसार महिलाओं की संख्या 17% है और उससे गर्व से कहूँगी कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए और आपने समय नहीं दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। समय 11 मिनट बचा था, आपको उसी हिसाब से दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड्स मोर। महिला हूँ, थोड़ा सा दया कर लीजिए। 30 सेकंड्स मोर, थोड़ा सा दया कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम दीजिए। 30 सेकंड। अध्यक्ष महोदय, जब देश की बात आई तो हम देश का भी नेतृत्व किया, पाकिस्तान भी लड़ाई की ओर उसके 2 टुकड़े किए, और अगर घर परिवार चलाने की बात आई तो भी हमारे सामने कोई नहीं टिका। आज महंगाई और बेरोजगारी भी लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई में भी चला रहे हैं, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। सामने वाले कह रहे थे कि हम सिलेंडर दिए, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे महंगाई के कारण। आज भी फिर से चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हा को फूंक रहे हैं, चूल्हा का धुआं खा रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है। ये महंगाई के कारण हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और लेकिन सुजीत कुमार, क्योंकि 3 मिनट्स 3 मिनट्स कैरी ऑन सर। थैंक यू मैम। There will be no time for your last speaker. Okay, no time for last speaker. So she is the last speaker. 1 minute, man. Conclude. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम चुप हैं। G20 में देश को शर्मसार नहीं किया हम, क्योंकि देशभक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बार बार बैठने को लोग कह रहे हैं, आपका बात मान रही हूँ, लेकिन इस बिल का यहाँ पे मैं पूरे जोर से समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। श्री सुजीत कुमार। Thank you, Chairman sir. Honorable member, 3 minutes. Sir, ours is the land where mothers and motherland has been given a pedestal greater than heaven. Janani Janmabhumi Sarvati Garyasi. Sir, today the entire nation is captured by this
bill which is being discussed in both the houses of parliament. Sir, virtually everyone is discussing this, about it in passing or in detail. Sir, last month, sir, when Vikram landed in the south pole of the moon, sir, the place was called Nari Shakti. Sir, hopefully this bill will bring Shakti. Sir, hopefully this bill will bring Nari Shakti into our parliament and hopefully lead to better decision making and better policy making in our governance structure. Sir, every time I go to different places in Odisha for political work, sir, and I interact with sarpanchas, women block pramukhs and JP members, I ask myself, has the representation of women, the reservation for women in the PRI system led to better development outcomes at the grassroots? Has it led to better investment for women, for issues concerning women? And sir, the answer I found is an emphatic yes. Sir, I found that women in the PRI, in the Panchayati Raj systems and urban local bodies have been making very meaningful contributions. And also, sir, the concern which has been raised in many quarters that men are acting as proxies for women in the urban local bodies and the PRIs has been found to be baseless, sir. Sir, when we talk of women-led development, sir, I feel that the best case study today in the country is probably the state of Odisha, sir, and the Odisha model of development. Sir, I'll substantiate this with facts, sir. Sir, my party, Biju Janata Dal, and my Chief Minister, Naveen Patnaik, has always believed that no society, no country can be called a Vishwaguru unless women are given the pedestal they deserve. Sir, we have always believed in the empowerment of women in public life and in all spheres of social life, sir, social and economic life. Sir, please allow me to quote some statistics. Sir, even before the 73rd Amendment Act of 1993, sir, way back in 1992, the then Chief Minister, late Sri Biju Patnaik, had given 33% reservation for women in the Panchayati Raj, being the first state in the country to do so, sir. Subsequently, sir, his son, the current Chief Minister, Naveen Patnaik, in 2011, in November 2018, the government of Odisha passed a resolution in the State Assembly, sir, urging for 33% reservation in the Parliament and the State Assemblies. Then, sir, a month later, in December 2018, sir, Honorable Chief Minister of my state sent 22 delegations, sir, to all the parties, including 7 national parties. Senior leaders of our party went to these leaders, sir, trying to build a consensus that women reservation bill should be passed in the parliament and women should get their due place under the sun. Thank you. Sir, just 30 seconds, sir, I'll conclude. Sir, in 2019 elections, 7 out of 21 Lok Sabha seats, sir, women got from our party, out of which 5 won. Sir, 42% of our BJD MPs are women in our Lok Sabha. We are talking of 33%, sir, we have already reached 42% in our party. Sir, sir, not only political empowerment, we believe in social and economic empowerment. I can give you 2 examples. Thank you. Sir, in 1991, Government of Odisha reserved 30% of all government jobs for women. Sir, we have a health scheme. We have a health scheme called Biju Swasthya Kalyan Yojana, where women get double the benefit of men, sir. Sir, we introduced Mamta Yojana way back in 2008, where pregnant women, lactating mothers, got health benefit and financial benefit. Sir, I could go on and go on, but sir, at the end, I will say, sir, this is not reservation, this is rightful representation. So, sir, as mother of democracy, sir, we, India, that is Bharat, should give rightful representation to our women. Shrimati Jaya Bachchan, 4 minutes. थैंक यू सर. ये आखिर में बोलने के नुकसान बहुत हैं. बोलने को कुछ बचा ही नहीं. हाँ मैम, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. सर, अभी आप तो समय मत गिनवाइए, ये तो गिनवाते ही हैं. सर, सबसे पहले मैं चेयर को धन्यवाद दूंगी कि आज आपने महिलाओं को इतना महत्व दिया, उनको कुर्सी में बैठने की मौका दिया. मुझे भी नहीं दिया. अच्छा, मैं सर, आई होप दिस इज नॉट कॉस्मेटिक. दिस परंपरा विल बी कैरिड ऑन एंड रिमेन. नहीं तो आपको ये हाउस की महिलाएं सब प्लास्टिक सर्जन कहेंगे. I know their firepower. I know your firepower.
सर आपकी कुर्सी बहुत मजेदार है। वहां बैठो तो वो झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है। तो नाउ आई नो व्हाई यू कीप कमिंग बैक एंड सिटिंग हियर फॉर सो लॉन्ग। दिस इज ये 7 स्टार होटल में अगर कोई अच्छी चीज है तो ये व्हील लाभ चेयर जो है बहुत बढ़िया। सर हम लोग कौन होते हैं महिलाओं को आरक्षण देने वाले? Who the hell are we? हमारे में हिम्मत है हम तो आ गए, हमारे लीडर्स में हिम्मत है हमको ले आए। अब जिनको लाना चाहिए वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। 29 तक आएगी नहीं आएगी, इलेक्शन हो जाएगा, जीतेंगे, महिलाओं को हरा देंगे, जिताएंगे, ऐसे टिकट्स देंगे जहां से वो हार जाएंगी। ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए सर। और स्पेशली इस हाउस में मुझे याद है राज्यसभा में वो बहुत मज़ेदार अच्छा घर था, वो बिल आया, सुषमा जी और वृंदा कारत जी उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण दिए उन्होंने, बिल पास हो गया। इतना अच्छा लगा, बीजेपी सीपीआईएम गले मिले, हंसे, जो बहुत मज़ा किया। गाली एसपी को दे दी, हमने अपोज नहीं किया। We asked for the same thing, reservation within reservation. मगर it suited everybody. माफ करिएगा, आप लोगों के यहाँ बहुत विद्वान हैं, मगर आप लोग सही वक्त पर चुप रहते हैं। उस वक्त आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया था ना, आप कभी देते हैं, ऐसे तो चलता रहता। दिस इज पॉलिटिक्स। अभी आप अगर बीच में बोलेंगे तो I will take great objection. I've been sitting quietly. Please do not make a comment. You have brought the bill. We are supporting the bill. Let us say what we want to say. हर चीज में सर इन लोग कमेंट करते रहते हैं और हम करें तो फिर नाराज हो जाते हैं। आप मानते हैं ना सर? आप मानते हैं? मैं तो बीच में हूं। तब तो दोनों आपको परेशान करेंगे। सर ये सबसे पहले मैं आप लोगों के अंदर, बाहर भी मुझे लोग पूछते हैं, एमपीज पूछते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप लोग इस बिल के अगेंस्ट में हैं। हम इस बिल के अगेंस्ट में नहीं हैं और मैं आपको कह सकती हूँ, हमारे इस हाउस के पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथी जावेद अली यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे कुछ कंडीशंस हैं। हमारे वही कंडीशंस हैं जो बाकी लोगों ने भी बताए। सर एक चीज जो है, this has been bothering me for a while. If you are really serious, if you are really serious about giving tickets to 33% in the upcoming elections, especially to the representation of the minority community, which you have shown great empathy towards these Muslim women by bringing in the triple talaq. बहुत आपने उस वक्त ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत बात की। अभी उनको दीजिए टिकट। And if you are really serious, pass it. You have the strength, make the will. Do not bring anything which you do not mean. सिर्फ प्रचार के लिए मत करिए। आप लोगों की आदत है, प्रचार बहुत करते हैं आप लोग, खर्चा भी प्रचार के ऊपर करते हैं, बात के ऊपर भी प्रचार करते हैं, इसके ऊपर भी प्रचार, उसके ऊपर। तंग आ गए सर इसका वीडियो देख देख के। थैंक यू। आई विल सर, I request on behalf of my party
reservation within reservation. And as everybody else has said, I support 20% seats and 15% of seats shall be reserved for women belonging to other backward classes, especially the Muslim minority, and women belonging to minority communities, respectively, out of the total number of seats reserved for women, and to be filled by direct election in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. And then the rest I don't want to read and waste my time. I'd rather give this time to somebody else who has to speak after me. Thank you very much, sir, and thank you very much for giving me the opportunity to sit there on the rocking chair. Ma'am, on a point of information, I started the practice of 50% women being on the panel of vice chairman in the earlier house. And it is in practice, I will take it higher also. Jayant Chaudhary. Yes, leader होते हैं. इससे हायर लेके जाओगे तो आपको मेन रिजर्वेशन के लिए आपके पास आना पड़ेगा सर. मैं तो अपने घर में वैसे भी माइनॉरिटी में हूं. जयंत चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष जी. आज मैं देश की नारी शक्ति, यस, आज मैं देश की नारी शक्ति के सम्मान में और उनका सहयोग करने, उनके पक्ष में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ. हमें हमारे देश में महिलाएं अलग अलग रूप में दिखती हैं. घर के अंदर, घर के बाहर, खेत में मजदूरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं, उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, रोज़गार ले भी रही हैं, रोज़गार दे भी रही हैं, छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं. और राजनीतिक व्यवस्था के बुनियाद से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पे आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है. लेकिन ये कटु सत्य है कि विधान पालिकाओं में जो संख्या उनकी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी, वो आज तक बन नहीं पाई. और इसलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को लेकर आज हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हैं. आज के दिन मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं. बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में वे ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ शौच की व्यवस्था पे भाषण दिया करते थे और प्रकाश डालते थे. आज जातियों में इतने संबंधों में कट्टरता बनती जा रही, वो अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर बनकर लोगों को जोड़ने की बात करते थे. क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि समाज बदले. उनके ज़माने में और आज तक बहुत चीज़ें हो गई हैं, बहुत चीज़ बदल चुकी हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है. मैंने खुद देखा है महोदय, गांव में अगर सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के कारण लज्जा और शर्म को बहाना बनाकर अगर उन पे बोझ ज़्यादा लगाया जाता है, तो शहरों में भी, मध्यम वर्ग में, बहुत बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों में भी घर की महिलाएं खाना बना रही हैं. बाहर वालों को, घर वालों को पहले खाना खिलाती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में वो खाती हैं, चाहे वो गर्भवती भी हों. और आप समझ सकते हैं कि अगर माँ आखिर में अपने पोषण का ध्यान रखेगी, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है. और इसलिए गुजरात से भी ताज्जुब करने वाले आंकड़े आते हैं, बहुत निराश करने वाले आंकड़े आते हैं जब कुपोषण की हम बात करते हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे, लाख प्रयासों के बाद नहीं रुक पा रहे. ये हैवानियत क्यों है? उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, मणिपुर हो, महिला जो हमारी खिलाड़ियां थीं, कितना अत्याचार चुपचाप सहेंगे. अच्छा होता कि आज ट्रेजरी बेंचेस से जो आवाज निकल रही है, उस समय भी आपको उनके पक्ष में बात रखनी चाहिए. मैं मानता हूं कि इन चीजों का समाधान तब होगा जब हम जैसे लोगों की संख्या ऐसे सदनों में कम होगी और महिलाओं को खुद एजेंसी मिलेगी और खुद अपने नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका महिलाओं को एज अ वोटर, एज अ सपोर्टर एंड एज अ लीडर मिलेगा. और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं. बिल के लिए संबंध में दो ही सवाल है मेरे. नंबर 1, आप ही की प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो 10 साल तो कहीं नहीं गए.
तो जो चीज 2034 तक शायद आनी है, उसके लिए ये जल्दबाजी क्यों? स्पेशल सेशन होगा, पहले बताया नहीं जाएगा क्या बिल है, उसके बाद जल्दबाजी में ये लो बिल और पास करो। क्या मजबूरी है? विंटर सेशन में भी ला सकते थे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि हम ये जो आयोग बना रहे हैं, परिसीमन आयोग, ये जन सुनवाई करेगा। क्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें जनसंख्या तलाशनी पड़ेगी? जिले जिले में जन सुनवाई करनी पड़ेगी? क्या आज भी महिलाओं को आगे आके गवाही देनी पड़ेगी कि हमें आरक्षण दो? फिर दोबारा मांग उठानी पड़ेगी, फिर दोबारा विरोध झेलना पड़ेगा? तो इसलिए परिसीमन आयोग की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। और मैं सवाल पूछता हूं कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो कानून आया था, जो प्रस्ताव आया था, जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या कमियां थी? बाकी आगे पीछे जो प्रस्ताव थे उन्हें भूल जाइए, आप वाजपेयी जी को क्यों भूल गए? तो सीधी बात है, लोग समझ गए हैं कि ये रोड़ा तैयार किया जा रहा है, ये अड़चनें तैयार की जा रही हैं। नीति तो ठीक हो सकती है, नीयत में कुछ खोट। आपने धूम पिक्चर देखी, उसके बाद धूम 2 आई, मुन्ना भाई आई, फिर आई लगे रहो मुन्ना भाई। कई बार होता है ना पार्ट 1 पार्ट 2, उसी तरह से अच्छे दिन आई थी, अच्छे दिन आएंगे। लोग समझ गए अच्छे दिन आएंगे पार्ट 2 है और कुछ है नहीं, करें आपका और कुछ नहीं। 2022 तक महोदय, 2022 तक देश के हर गरीब को छत मिल जानी थी, किसान की आय दुगनी होनी थी, 100 स्मार्ट शहर बनने थे। फिर कहा चिंता मत करो, अमृतकाल है, रुक जाओ। आज कल और परसों का हिसाब दीजिए, आज महिलाएं इंतजार क्यों करें बताइए? अगले चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया ये बताइए? ये सवाल सबके मन में है। और संत कबीर जी का एक दोहा दोहराता हूं कि आज कल काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरे करेगा कब। धन्यवाद। माननीय सदस्य घनश्याम तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि संपूर्ण सदन में एक बात पर तो सहमति है कि सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रौनक बनी रहे, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बीच में आ जाती है। लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र का यह सौभाग्य है कि आज हम सब लोग एक बात को मानकर चलते हैं। एक प्रश्न यहाँ बार बार उठाया गया सभापति कि ये स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया, अरे बिलाज क्यों रखा गया? मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सदन में प्रवेश करने के लिए गणेश चतुर्थी से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, इसलिए सदन बुलाया गया। और चतुर्थी की सृष्टि हिंदू संवत्सर के अनुसार सृष्टि का उत्पन्न होने का दिन है, और चतुर्थी सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, इसलिए उस दिन इस सदन में प्रवेश किया गया कि नई सृष्टि का प्रारंभ हो भारत के लोकतंत्र में, और 2047 तक हम विकसित राष्ट्रीय सदन के माध्यम से बने, इसलिए किया गया। अब दूसरा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल इसमें क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि पंचमी की तिथि जो है वो ऋषि पंचमी होती है, और ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की पूजा के साथ साथ एक संकल्प होता है, जिस संकल्प का नाम है हेमाद्री संकल्प, मतलब स्वर्ण संकल्प। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वर्ण संकल्प लिया है कि इतनी बार ये बिल पास नहीं हुआ, रुक गया, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन हम संकल्प ले रहे हैं कि अब ये आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे, इसलिए काम किया गया। तो ये चतुर्थी और पंचमी के जो दिन थे वे दोनों महत्वपूर्ण दिन थे, इसलिए सदन का ये बुलाया गया। पहला तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है ना सर? दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार एक बात कही है कि ये कल से लागू कर दो, ये परसों से लागू कर दो। भैया रोका किसने? रोका आपने। जब इस बार का डिलिमिटेशन हुआ था, उस डिलिमिटेशन कमीशन का जो राजस्थान के 5 लोग थे उनमें मैं भी मेंबर था, और कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो उसके चेयरमैन थे। और इसी संसद ने यह प्रस्ताव पास किया था
कि 2026 के पहले डिलिमिटेशन नहीं होगा और 2026 में डिलिमिटेशन होगा। इसलिए डिलिमिटेशन 2026 में हो, ये बिल, ये संविधान संशोधन बिल इस सदन के द्वारा पास किया गया है, इसलिए उसमें होगा। और उसमें यह भी प्रावधान था कि 2021 में जनगणना प्रारंभ होगी और उसके बाद ये काम होगा। अब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो इस बिल के पास होने के बाद में जल्दी जनगणना करा लेंगे और जल्दी जनगणना कराकर फिर जल्दी ही डिलिमिटेशन कमीशन बन जाएगा और कमीशन बनकर महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ दो बात बार बार कही गई है। एक तो ये कहा गया है कि जी पहले बोल देता, आप कहते तो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बार बार वर्णन किया कि बंधन क्यों आया, बंधन क्यों आया। भाई बंधन क्यों आया, आप सबके लोगों के लिए मैं एक श्लोक सुना रहा हूँ, तब ये बंधन शब्द का उसमें आ जाएगा। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। उन्होंने कहा कि तो जटाधारी है, जिसके गले में सांप पड़े हुए हैं, जो भूतों का देवता है, उसको जगदीश बना दिया। क्यों बनाया? शंकराचार्य जी ने कहा भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी, तेरे से इनकी शादी हो गई इसलिए जगदीश बन गए, नहीं तो नहीं बनते। अब आप लोग भी घरों पर जाकर पूछ लेना, ये कह देना कि भाई आप एमपी कैसे बन गए, एमएलए कैसे बन गए, तो कहेंगे कि तेरे से शादी हो गई इसलिए बन गए, और मना कर दिया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ये जो बिल है, तो इसलिए हमने वंदना इसलिए की है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं उस सब में बैठने का कारण यही है। और मुझे लेकिन जो तकलीफ हुई वो हुई कि हमारे केशव वेणुगोपाल जी जो है माननीय सदस्य, वो है तो केरल के, उन्होंने अपनी सीट का त्याग कर दिया राहुल जी के लिए। अब त्याग तो करा केरल में और 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष का समय ले लिया राजस्थान से। अब राजस्थान से आ गए लेकिन मणिपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कहावत है कि पैर बलते हुए पैरों में लगी आग दिखाई नहीं दे रही है और पहाड़ पर लगी हुई आग दिखाई दे रही है। राजस्थान में आदिवासी महिला को निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में गुजरों की एक लड़की को 4 लोगों ने बलात्कार करके भट्टी में जला दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये सारा काम करने वाले लोग ये सोचें कि महिला आरक्षण के बिल पर इन बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो बिल आया है, ये बिल, ये सदन का विशेष सत्र, ये सब विशेष पर्पज के लिए आए हैं। वो सारे के सारे काम पूरा होंगे। हम ये आंदोलन चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम आंदोलन चला रहे हैं। और आंदोलन चलाकर महिलाओं को जो उनका स्तर देवता सारे देश में देवताओं का वास हो, इसलिए नारियों की पूजा करके ये नारी वंदन विधेयक लाया गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत। माननीय सदस्य अमी याचित। Thank you, madam. I stand here on behalf of my party to support the bill. Madam, I have been hearing the speeches on Women Reservation Bill from none less than ministers and leaders, but I think they have been talking only about the social welfare schemes of the present government, and they have mixed up the issue that this is a matter of right to be given to the women. The social welfare schemes are there to strengthen their social standing in society. The crux of this bill is that women need to have political empowerment. She has to come and sit and give her, she has to participate in decision making. That is not happening. And for that, I think we have to go back
and see the journey which Rajiv Gandhi started. And Rajiv Gandhi started why? Because when he went traveling to the rural areas, he saw that here there is absolutely no governance, and that is why the Panchayati Raj institutions were brought. And with that, there was 1/3 reservation for women, because there would be never any easy entry for women in the power corridors. He realized that, and that is why he made a speech in the parliament that women are mothers, grandmothers, daughters, and sisters. But to bring them into the political arena, we need to give them this right. And that is how that law came. And after 20 years, 2.5 decades of the 73rd and the 74th Amendment, we see that there are 40% of the women sarpanchs out of the total 100%, and that was a reply given by the Minister of Panchayati Raj in the Rajya Sabha. Today, that is the situation. Now, what is the spillover effect? When a woman sarpanch sits, she brings to the table her experience, her sensitivity, her participation, and whatever she has experienced as a woman. And that has a spillover effect in the society. And that is where there is a social progress in society. Madam, along with that, you have to see the journey. After Rajiv Gandhi's vision, Sonia ji carried on that vision, and she insisted that the bill be passed for legislative assemblies and the Lok Sabha. She tried her best. The bill was passed in the Rajya Sabha in 2010. But alongside, under UPA 1 and UPA 2, we also had legal empowerment, right-based laws, which gave power to the women within the domestic sphere. Domestic Violence Act, which was removed from the criminal jurisprudence to a civil environment. She could knock the doors of the family courts. Came the law post-Nirbhaya, which was to see that women in public spaces get legal protection. That also is empowerment. After that, madam, came the sexual harassment at workplace. So in workplace also, all the 3 spaces, women were given protection by way of right. And this is the constitutional mandate that women and men are equal before law. This is what is the crux of reservation. We don't want to hear policies. We don't want to hear about Ujjwala. We don't want to hear about all this other policies of the government. Talk on reservation. You have brought a bill with conditions, with caveats. That means your intention is not fair. You do not want to give empowerment to women. You do not want women to sit in decision-making procedures. You do not want her to be having a political empowerment alongside you. What is that which you are fearing? And why have you put such programs in it? Delimitation and census. They are in your hands. What were you doing for 9.5 years? What have you been doing for 9 years? You have only done lip service. You want to make tall claims. You want to think that every space is a rally. Every space has only political passions. You do not want to actually translate social justice embedded in the Constitution of India to the women of this country. Women need political empowerment. She wants to sit and take decisions. During the corona time, we saw that women got all the infrastructure for online empowerment. Again, it was Rajiv Gandhi's vision to take the country in the 21st century while he was in the 20th century. That women and everyone should have these computer systems, and that is why today we are empowered socially. Women have mobile telephony. Women have all kind of online applications. You talk of digital India. You talk of mother of democracy, but you don't want the mothers to sit with you. You don't want to give them the rightful place in political empowerment. So, ma'am, there was legal empowerment in UPA 1, UPA 2. Women got all the rights. Women got all the infrastructure during that time. Right to food, right to education. And that is where women are today graduating, going for post-graduations, and we have the scientists. And let me give one example, madam. One of the largest banks had a chairman and MD who was manning the position. The position was women in that seat. So you mean to say that she was born in 2014, she finished her schooling in 2015, she graduated in 2016, and she became the chairperson MD in 2018?
The education system infrastructure was put in place post-independence. And I would like to bring to your notice, ma'am, just one minute. Just 1 minute. If you are talking of democracy, democracy needs development, and development can happen only if you give freedom of right, freedom to exercise that right which is in the constitution to the women of this country. The women have to be a part of participatory democracy and decision-making processes. And that is where I think this reservation bill has to be implemented right away without caveats and without any conditions. Thank you, ma'am. मुजीबुल्लाह खान, आपके पास 1 मिनट का समय है माननीय सदस्य। कितना है? 1 मिनट। हाँ। नारी का सशक्त होना ही समृद्धि का मार्ग है और सशक्त महिला ही समाज को सशक्त बना सकती है। मैडम, मैं स्वाधीनता सेनानी लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो कैसे नारी समाज स्वाधीनता सेनानी में भाग लिए थे। उसमें उड़ीसा से थे रमा देवी, सारला देवी और मालती देवी। रमा देवी के गर्भ में बच्चा पल रहा था और वो तब भाग लिए थे सत्याग्रह आंदोलन में और ब्रिटिश सरकार उनको मार मार के जेल में घुसाया था। उस दिन कुछ दिन के बाद वो जेल में एक पुत्र संतान को जन्म दी थी। उड़ीसा के नारी कितना मजबूत है आप खुद ही सोच सकते हैं। बिजू पटनायक जब पहली बार 1960 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, वो एक ऐसे नारी को लाए जो स्टूडेंट करियर में अपना धाप दिखा चुकी थी, जो आंदोलन से आई थी, लाके उसको राज्यसभा भेजे। 1962 में अगले 10 साल के बाद वो उड़ीसा की मुख्यमंत्री के रूप में वो आई। वो होती है श्रीमती नंदिनी सतपथी। मैडम, बिजू पटनायक जब 33% रिजर्वेशन पंचायत राज सिस्टम में किए तो आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि 5 ट्राइबल वुमेन जो महिला पढ़े लिखने नहीं जानते, अंगूठा लगाते हैं, उनको एडवाइजर के रूप में बिजू पटनायक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए थे और उन लोग बिजू पटनायक जैसे चीफ मिनिस्टर को एडवाइज करते थे और उड़ीसा सरकार चलता था 90 दशक में। बिजू बाबू ट्राइबल लोगों के लिए जितना काम किए हैं, महिला लोगों के लिए जितना काम किए हैं, शायद ही कोई नेता किया होगा। महिला लोगों के लिए सरकारी नौकरी में भी 30% का रिजर्वेशन बिजू बाबू दिए। 5% एक्स्ट्रा उनको बढ़ाया, 35 साल का उम्र था और 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया उनके नौकरी के लिए। दूसरी बात, जब बिजू बाबू रिजर्वेशन किए तो 28,000 महिला पंचायत में और जिला परिषद में पंचायत समिति में चुन के आए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आने के बाद बिजू बाबू का अधूरा काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और वो 33% जो था 33% उसको 50% में कन्वर्ट करे। 1 मिनट मैडम, 50% रिजर्वेशन करे नवीन पटनायक। और 2018 में जब सर्वसम्मति से उड़ीसा असेंबली में पास हुआ महिला आरक्षण बिल का, उसके बाद से आज तक नवीन बाबू ना जाने कितना मेहनत किए हैं, अपना डेलीगेशंस भेजे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन भेजे हैं। सबको रिक्वेस्ट किया गया है, सब पार्टियों को रिक्वेस्ट किया गया है कि महिला बिल को आप लोग समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ के हमारे डेलीगेशन वाले हर पार्टी हर मुख्यमंत्री के पास गए थे, जिसका नतीजा आज आ रहा है मैडम। इसीलिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, मेरे उड़ीसा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उनके मेहनत आज रंग लाया है और माँ बहनों को रिजर्वेशन मिलेगा, ये उम्मीद मैं करता हूं। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। रिजर्वेशन क्या होगा मुझे तो पता नहीं, आगे चल के उम्मीद करता हूं हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका समर्थन करता हूं। माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ किया जाए। केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटीज बहनों के लिए कुछ किया जाए। उन लोग का भी हक है, उन लोग का भी भागीदारी होना चाहिए। अगर संशोधन करना है तो संशोधन कीजिए, कानून में संशोधन कीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए, लेकिन माइनॉरिटी बहनों को कुछ स्कोप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। माननीय सदस्य श्रीमती वंदना चौहान। Thank you, Madam. On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand to support the 128th Constitution Amendment Bill. Ma'am, after consistent failures to pass the bill on reservation for women in Parliament and state legislatures, it is indeed a happy occasion that the bill... आपके पास 2 मिनट का समय है। Ma'am, 3 minutes at least you must give. The light of the day, at least in its passing, though we have serious doubts in its implementation. I come from Maharashtra, where we have been very fortunate to have leadership of Honorable Shri Sharad Pawarji, who has taken concrete decisions for women. And I would like to touch upon a few.
Maharashtra became the first state in India to have 33% reservation at all local self-government level in 1991. This was much before the 73rd, 74th Amendment that was passed in 1993, and I am a product of that decision. Maharashtra became the first state to amend the Hindu Succession Act 1956. In 1994, this gave equal right to women, the girls, the daughters in the ancestral property. And this then became a law, a central legislation in 2005. There was an immediate decision taken. As defense minister in the UPA regime, from June 91 to March 93, Pawar Sahab took a decision to induct women in the armed forces. This too was an immediate decision which was implemented. Needless to remind this august House that the pride which filled us all to see Lieutenant Alka Khurana Sharma leading the contingent of the Republic Day in 1994. Ma'am, we in Maharashtra, under the leadership of Pawar Sahab and during the UPA times, we have got used to seeing well-studied, well-researched bills which were put out immediately for implementation. And therefore, a bill such as this, which has to wait for census, delimitation, etc., is difficult for us to fathom and digest. Ma'am, I would like to ask the government, didn't you do the demonetization overnight? Didn't you declare a lockdown almost with immediate effect? Didn't you not bring in the bill to abrogate Article 370 without any notice on one fine morning? You are indeed a very capable government. Then why are you taking so much time to pass the reservation bill? Why can't the bill be implemented in 2024? There are no excuses. Why do we have to wait for a census? We have already delayed it. Why do we have to wait for delimitation? We know it's a difficult process because the southern states are going to stand up in arms. They have worked towards reduction of their population and the northern states have not done it. So delimitation is going to be a difficult process. Why do we not want to give reservation in Rajya Sabha and state legislative councils? According to me, ma'am, this bill appears to be intended, to appease the women and girls of this country. Let us face it, this government has not been sensitive to women when they needed their protection. We have not forgotten and will not forget treatment meted out to our women wrestling champions. Release of convicts in the Bilkis Banu case. Ma'am, I finished. Just 2 lines. Government silence on Hathras, Unnao and Kathua. Inaction on Manipur. In spite of several doubts about the implementation of this bill, for which time will only stand witness, we support the bill and make an appeal to reconsider the bill to make it implementable in 2024. Thank you, ma'am. Thank you. Honorable Abdul Wahab. Thank you. 2 minutes. Madam. How many? 2 minutes, sir. Oh, that's good. Thank you. And first of all, my party, Indian Union Muslim League, support this bill, but not wholeheartedly. We require this one reservation in reservation or quota in quota. But yesterday in the Lok Sabha and all we tried, but we know what will be happening to our demand, what will be happening to our amendment bill. But one thing I can say, caste is a reality. Even in Kerala, I am telling why, even in Kerala, our Devasam Minister, Mr. Radhakrishnan, was telling, I experienced from the temple, being a minister of Devasam, he was not allowed to light in the temple. That is the way it is going on. Even Kerala, then what is the other places and all? And about, Mr. Tiwari was talking about Rajasthan. But what is happening in Madhya Pradesh? What happening in Manipur? Okay, one incident happened, immediately the CM went, Rajasthan CM went there. But so far, our Prime Minister is not looking at it, Manipur and all other places. So what I am trying to tell you, within 2 minutes, what I can tell you is, our party wholeheartedly will not support because of this. We support, we want this one. Because of Rajiv Gandhi, this happened in Panchayati Raj, our ladies, Muslim ladies,
they are working in our district in Kerala as district panchayat presidents and all. But you being in the center with power, I request once again, consider Muslims not as a just minority. We are having this much of percentage here. At least consider. BJP also got, after triple talaq, all the Muslim women are with you. After the triple talaq bill, all Muslims are with you. I have seen ladies coming in buses here today. I don't know who brought them, but they are completely inside and outside New Delhi. That is good. It is Nari Shakti. I give all the respect to Amit Shah ji and the Prime Minister. At least if your niyat, intention is correct, then do one thing, do it first, if at all, because our Naddaji was telling, it is legally, it is not possible. Okay, if it is so, just see that 33% of the BJP candidates are competing in winnable seats. At the end of the day, we will come here again. We will be here, Jayasabha. So, including everywhere, anywhere, I want to see BJP MPs with triple talaq ladies coming here, time is over, and sir. In future, we hope everywhere it will be happening. Thank you very much, and I support the bill. Thank you. Ms. Indubala Goswami. Ms. Indubala Goswami. Three minutes. कहाँ है यार मेरा माननीय सभापति महोदय, मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर देकर अनुकंपित किया है, आपका आभार। मैं नारी शक्ति पर एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियाँ दिखती हैं, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। महोदया, मेरा कविता सुनाने का तात्पर्य था कि देश में नारी को दुर्गा के रूप में देखा जाता है। जिस देश में कन्या का पूजन दुर्गा शक्ति के रूप में किया जाता है, जिस देश में नारी को सृष्टि की जननी माना जाता है, उस देश में आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद लोकसभा में मात्र 14 व राज्यसभा में 12% महिला जनप्रतिनिधि हों। देश की विधानसभा में यह संख्या नगण्य के बराबर हो तो आप सब क्या कहेंगे? और ये भी संभव हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है, अगर उसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो फिर भला नारी कमजोर कैसे हुई? अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपकी माँ की माँ ना होती तो क्या आपकी माँ होती? और अगर आपकी माँ ना होती तो इस सभागार में बैठे हुए चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, हम और आप होते क्या? मंदिर में बैठा हुआ, मंदिर में बैठे हुए, मंदिर में विराजित घनश्याम और श्री राम होते क्या अगर उनकी माँ ना होती? फिर क्या कारण रहे कि आज़ादी के 70 वर्षों के से अधिक बीत जाने के बाद भी भारतीय नारी को वह सम्मान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था? वह सबला से अबला कैसे हो गई? प्रश्न आप सबके सम्मुख रखती हूँ, इस पर थोड़ा सोचिएगा। लेकिन नारी के अदम्य साहस, क्षमता व बुद्धिमत्ता को पहचान कर उसका समूचे राष्ट्र को एहसास करवाया तो वह देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में करवाया। भारतीय नारी के लिए
अमृत कालखंड का 19 सितंबर का शुभ दिन, जब हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया, नए भारत में भोर की नई किरणें लेकर आया है। अमृत काल के इस कालखंड में एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद मजबूत हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए देश की नारी शक्ति को मात्र आरक्षण देना ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को ससम्मान नेतृत्व व निर्णय प्रक्रिया में पूर्णता भागीदार बनाना भी देश के प्रधानमंत्री जी का ध्येय है। यह इस विधेयक के नाम में ही रेखांकित हो जाता है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले इस विधेयक का नाम पहले महिला आरक्षण विधेयक था, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मातृशक्ति को केवल आरक्षण ही नहीं बल्कि सम्मान भी देना चाहते थे। इसलिए इस विधेयक का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखना देश के प्रधानमंत्री का देश की नारी शक्ति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। नारी उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गईं। आप सब ने, जो मेरे पहले वक्ता थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया। मेरे पास चूंकि 3 मिनट का टाइम है, उस तरफ से कहा गया कि 9 सालों में आपने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन आपने तो 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया। आपने महिला बिल को लागू क्यों नहीं किया? आपने महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित क्यों रखा? ताज़ा उदाहरण हिमाचल का मैं देती हूँ। हिमाचल में अभी कांग्रेस सत्ता में आई और वायदा किया महिलाओं से कि 1500 रुपया आपको हर महीने दिया जाएगा। आज 9 महीने हो गए, महिलाएं अपना पर्स खोलकर देखती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से, चाहे वो दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, पूछती रहती हैं कि 1500 रुपये कब आएंगे, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी 1500 रुपये नहीं आए। कोरोना के कारण जनगणना और परिसीमन विलंबित हुए हैं, तो स्पष्ट है कि प्रक्रिया में विलंब होगा, किंतु ये कुछ क्षण की देर है, इतने वर्षों का अंधेर नहीं। ये अधिनियम उस कर्मशील नेतृत्व की विचारधारा का प्रण है जिसके यहाँ 3 तलाक से बहनों को मुक्ति मिलने का प्रण है, जिसके यहाँ मातृशक्ति को सम्मान, अधिमान और मान मिलता है। महिलाएं मान्यवर परंपराओं के जाल काटने के लिए बहुत लगन, ध्येय और स्वयंशीलता की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा है कि रिवायतें की सफ़े सबसे कट नहीं सकती, कई बरस में कोई एक जाल काटता है। महिला आरक्षण विधेयक पर 27 वर्षों के मौन का जाल, राजनीतिक दलों के गलियारों में इस विधेयक पर पसरे अंधेरे का जाल जिस व्यक्ति ने काटा, उन्हें केवल भारत ही नहीं, समूचा विश्व, भारत की नारी ही नहीं, पूरी सृष्टि की मातृशक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानती है और आने वाले समय में जानेगी। अब इस देश की महिलाएं लोकतंत्र के इस शीर्षतम मंदिर और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को देखेंगी। ये देश के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ है। अब नेतृत्व करने का अवसर है, और ये अवसर देकर इतिहास किसने बनाया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज ये मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसे जल्दी लागू करने की बात की जा रही है। इसमें जातिगण आरक्षण ना होने के कारण इसे अपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन आप इंतजार करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का मातृशक्ति को वायदा है 33% का, और देश की मातृशक्ति को पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उस देश की मातृशक्ति
मैं उस देश की मातृशक्ति बाप बेटियों के चेहरे पर छाए उल्लास को पढ़ सकती हूँ। मैं उनकी उम्मीदों के तेज को देख सकती हूँ। इस बड़ी पहल और बड़े साहस के लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और इस विधेयक का स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। Honorable members, a notice of statutory resolution has been received from the government and I have admitted the same. In view of the urgency, I have also permitted the minister concerned to move the same now. Shri Bhagwat Karad to move the following resolution. In pursuance of Section 8 of Custom Tariff Act 1975, this House hereby approves of notification number 47/2023- Customs dated 19th August 2023, dated 19th August 2023, which seeks to amend the second schedule of the Customs Tariff Act in order to levy export duty on export of onions falling under HS code 070310. In pursuance of Section 8 of the Customs Tariff Act 1975, this House hereby approves of notification number 49/2023- Customs dated 25th August 2023, GSR 628E dated 25th August 2023, which seeks to amend the second schedule of the Customs Tariff Act in order to levy export duty on export of parboiled rice falling under HS code 10063010. Resolution. Sir, on behalf of my senior colleague, Srimati Nirmala Sitaramanji, I rise to move the resolution. Resolution moved. I shall now put the statutory resolution moved by the minister to vote. The question is, those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolutions are adopted. That the resolution be passed. Okay. Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity. While it is the maiden speech, I Yes. understand, of the Honorable Member, but given the time constraint, I am sure he will use his discretion. Please. I will seek your indulgence, Chairman, sir. Thank you so much. Sir, I rise in the favor of the Nari Shakti Vandan Bill, the 128th Amendment Bill. I want to start my speech with two lines from Nawaz Deobandi, which says, सफ़र में मुश्किलें आएं तो जुर्रत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आएं तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है. Chairman, sir, I stand before you as the strongest supporter of Women's Reservation Bill, as I believe the time has come and we can't wait any longer. The first Prime Minister, Pandit Nehru, in his letter to the Chief Ministers wrote, and I quote, "The future of India will probably depend ultimately more upon the women than men." These words of the first Prime Minister were prophetic. I am proud to say that I am the part of the Parliament under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has shown grit and determination and a unique foresight to turn it into a reality. Just before me, a couple of minutes ago, a senior member of Parliament was talking about doers and talkers. I would like to highlight that Prime Minister has shown by bringing this bill that he is a doer and not a talker. I come from the state of Haryana, which had for the longest time grappled with the issue of unequal sex ratio. The sex ratio in Haryana was 879 females for 1,000 males in 2001, but has shown steady improvement since 2015, when the Prime Minister Narendra Modi launched the Beti Bachao Beti Padhao Andolan from Haryana. Sir, I would like to inform the House that in 2022,
the ratio has improved to 917. It has increased by 85 points. This shows the initiative backed by the state and the firm commitment by the government. Sir, in the first general elections, there were 66 women who contested and 19 were elected to the House of People. Even though we have made rapid strides in women representation in Parliament and local bodies down to the lowest level, much remains to be done, and thus I back this bill wholeheartedly. Lasting revolutions are not achieved overnight. They require a civil society awakening. This bill is taking us in that direction, sir. So, writing in the Harijan on the 21st of April 1946, Gandhiji emphasized the need to, and I quote, enroll women as voters, impart or have imparted to them practical education, teach them to think independently, release them from the chains of caste that bind them so as to bring about change in them. If they will do this, they will purify the present unclean atmosphere. Sir, he prophetically said, as long as the women of India do not take part in public life, there can be no salvation for the country. Adoption of our constitution brought a new era of equity and equality for women in India. It guarantees equal political rights, including the right to vote to women. Not only does that constitution guarantee equal political status to women, there is even a scope for positive discrimination in their favor, as it is evident in Article 15(3) of the Constitution. Article 14 provides for equality before law. Article 39A states that the state shall direct its policy towards securing equity to men and women, the right to an adequate means of livelihood. And 39D enjoins the state to direct its policy towards securing equal pay for equal work for both men and women. Sir, Article 42 provides for securing just and humane conditions of work for maternity relief. And Article 51A(e) refers to the fundamental duty of citizens to renounce practices derogatory to the dignity of women. Sir, in the words of B.R. Ambedkar, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. In 1975, the Committee on the Status of Women in India commented on the declining political representation of women in India through majority. Though majority within the CWSI were against reservation in the legislative bodies, all members agreed on reservation for women in local bodies. The National Perspective Plan from 1988 to 2000 also recommended 30% reservation for women in all elected bodies, although the document was not clear whether the reservation was through nomination or election. The BJP government had repeatedly reinstated the bill in Parliament in 1998, 99, 2002 and 2003. The Congress, when it came to power in 2004, prompted the UPA to integrate the bill into the common minimum system and tried to introduce the bill with a little progress. It was opposed by its own partners who were a part of the government. Sir, a very senior member of Parliament before me said, that this decision has been taken by brain and not by heart. Sir, these decisions are taken by brain, heart and soul all put together. You need a will of steel to implement these decisions. And that is what is being done by the current government. Sir, in the last decade of the 20th century, the issue of political empowerment of women gained momentum throughout the world. In the 1990, the United Nations Economic and Social Council endorsed a target of 30% women in decision-making positions in the world by 1995. This target was far from being met in 1995. Only 10% of the world's parliamentarians were women. Back home, in the Rajya Sabha, we have 31 women MPs, whereas in the Lok Sabha, we have 82 women MPs. Among the state legislature, the average representation of women MLAs is about only 7%. Of the total 8,054 candidates in the 2019 general elections, only 726 were women. An interesting statistic presents itself here, sir. While almost 11% of the women contestants were successfully elected as MPs, only 6% of men could be successful. When it comes to trusting their future, voters trust women candidates more than they trust men. Not only do women make for winning candidates, but as candidates they spur greater economic growth. An academic paper by the United Nations University World Institute for Development Economics Research
in 2015 studied the impact of women politicians on economic performance in the state legislative assemblies. The researchers examined data for 4,265 state assembly constituencies for the 1992 to 2012 period, using night luminosity as a measure of economic performance. The paper estimated women legislators raised luminosity growth in their constituencies by about 15 percentage points per annum more than that of male legislators. They were also found to be far more effective at completing road projects and hence creating infrastructure for growth. Sir, I got to hear some speeches from the honorable members of the Lok Sabha yesterday, where some mentioned why the government took so long to introduce the bill. Why wasn't it introduced earlier? Sir, it is important to understand. In 2014, the challenges before this government were many. Women had the right to vote, but no toilets, no gas connections, no access to equal opportunities, and very little representation. One of the most celebrated campaigns of the Honorable Prime Minister Modi and this government, the Swachh Bharat mission, was launched with the idea of building toilets. It was done with an effort to restore the dignity and privacy of women. Some people complained toilets have been built, but there was irregular supply of water, no water. I would like to say to them, be patient. Such a mammoth campaign are bound to come with some learnings and challenges. Today, most of them have regular water supply. Sir, I am a positive person. I am an optimist, not a pessimist. And I believe in the positivity and the power of change. Soon after people complained, women in rural India were still cooking food with cow dung cakes or wood, leading to health hazards. Today, almost all homes have gas connections. It is important to understand the change has not happened overnight. It requires assistance of society and change in the mindset. Sir, in the words of Victor Hugo, no one can stop an idea whose time has come. Sir, the idea of women's reservation has come, and no one can stop it. As the Honorable Prime Minister said, the country can't wait anymore. So research has shown that when women are empowered, the entire nation is empowered. And women legislators are more. Sir, I will seek your indulgence to just complete my maiden speech, sir. Sir, I thought I would mention some of the top women leaders, scientists, engineers, businesswomen, social workers at the end of my speech. But I was writing their names and I got a feeling that being a successful female leader in the field cannot be their identity. For they have outgrown their genders. In a male-dominated world, they are not successful because they are women. They are successful despite of it. It is our narrow lens that we see them in gendered roles. It is our shortcoming that we see their gender first before we see their capabilities and their talent. It is the men who need to change their view and start treating them as equal colleagues. Sir, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister, who has been able to reorganize, bring on track this bill which had been derailed for the longest time. And in a time where the whole world is going through difficult times, whether it's climate change, hostile nations, income inequalities, only the healing and caring touch of a mother can save humanity from falling further down. Sir, discuss as much as we may, debate, fight, shout, do whatever. But the bottom line is that such a provision cannot wait any longer. It is our need. Sir, I would like to finish my speech with a few lines from the famous poet Dushyant Kumar. हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए. हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. धन्यवाद. Sir, I only want to say that let us come together and change the picture of the Indian polity. Let us unanimously support the bill. Otherwise, when history is written, people who are standing on the other side will not be judged kindly. Thank you so much, sir. धन्यवाद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी. माननीय श्रीमती कांता करदम जी. हाँ, माइक ऑन प्लीज.
जी माननीय महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल है, जो हमारी सरकार, हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये आज पास होना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 के बाद महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, उससे पहले उस तरह से महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है। जब से आए हैं, बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाओं में भी उनको स्थान दिया, सम्मान दिया है। हर जगह महिलाओं को सम्मान दिया है। विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी जगह सभी पार्टियों से ज़्यादा हमारी पार्टियों की भागीदारी है। अभी सामने से कहा गया कि बहुत जगह का नाम लिया गया, मैं बार उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि राजस्थान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जो राजस्थान के हालात हैं वो सबको मालूम है, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मेरा भी राजस्थान में जाना हुआ और कई जगह जो गंभीर स्थिति थी, जो महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचार किया गया, जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया, वो सब की संज्ञान में है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, ना कि निर्भर। लेकिन जिस प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, उस प्रदेश में महिलाओं को जो भागीदारी और जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो उस तरह से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्लीज बैठकर चर्चा में बैठिए, डोंट स्पीक फ्रॉम चेयर प्लीज। राजस्थान, अभी आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। राजस्थान में जो रेपिस्ट के बचाव में आंदोलन चल रहा है, किसी से छिपा है क्या? ये आंदोलन चल रहा है। एक तरफ तो कहती है प्रियंका, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में लड़ने के लिए क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं बोलती? एक बार भी गई हैं वो, बेटी हूं, लड़ सकती हूं। चेयर से बैठकर नहीं, प्लीज। अगर प्लीज राजस्थान की स्थिति अगर आप जाने तो वहां आप देखेंगे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन पे कितने अत्याचार हैं। एक मिनट माननीय से प्लीज, वो किसी से छिपा नहीं है। प्लीज माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, जो एक माँ की को गुजार दी गई, सबसे है कि आप जो अपेक्षा करते हैं सब एक दो बच्चों का सरेआम करें, उन चीजों का पालन। गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। प्लीज, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। मैडम आप बोले। तीसरे को सिसकता हुआ छोड़ दिया गया, वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है। उस माँ की को गुजारी, राम रमेश जी, उसका भाई, राम रमेश जी, नथिंग इज एक बहन का भाई छीन लिया। वो एससी समाज से थी, हाँ बोलिए, वो दलित समाज से थी, पिछड़ी जाति की बात करते हैं आप। राजस्थान में देखिए कि पिछड़ी महिलाओं के साथ में आपकी सरकार ने क्या किया है। यहाँ आपने देखा कि गैंग रेप के बाद महिलाओं को जलाकर मार दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया, झोंक दिया गया। वो किसी से छिपा नहीं है। माननीय सारे सदस्यों से आग्रह, प्लीज अपने चेयर पर बैठकर बात न करें प्लीज। प्रदेश में हर दिन 17 मामले हर दिन रेप के दर्ज होते हैं। प्रदेश में हर 2 घंटे में नाबालिग बच्चियों का अपहरण होता है, किससे छिपा नहीं है। आप देखिए, तलाशिए, 1,90,000 से अधिक मामले महिलाओं के अत्याचार का दर्ज हैं।
अब तक प्रदेश में बच्ची और महिलाओं के रेप के केस 45,000 से अधिक मामले दर्ज हैं। माननीय कांता जी, आपका समय खत्म महोदय, हो गया, जो ये कहते हैं पिछड़ों की या दलितों की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा सम्मान दिया अपनी सरकार में? जहां जहां इनकी सरकार है वहीं ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पर भी और पिछड़ों पर भी उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। आपने देखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाओ, ये किसने कहा है? ये प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो सपना साकार करके दिखा दिया। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप रक्षा का क्षेत्र लोगे या कोई भी क्षेत्र लोगे या शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ऐसे नहीं किया है। आप देखेंगे कि समान। माननीय कांता जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। बेटी और बेटे में आज कोई फर्क नहीं। प्लीज 1 मिनट। नहीं, प्लीज, आपका समय खत्म हो चुका है। प्लीज प्लीज। आप ये देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। ज्योतिबाई फुले का सपना था कि हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। आप अपनी पार्टी के दूसरे वक्ता का समय ले रही हैं। साकार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब मैं दूसरे उज्ज्वला योजना की बात हुई यहाँ। उज्ज्वला योजना का 400 रुपए सिलेंडर पर कम किया गया है। माननीय रामदास अठावले, सामान्य सीट पर ये माननीय रामदास अठावले, आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। उनका समय खत्म हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप बोले, वो अपने समय से 2 मिनट ज्यादा बोली। प्लीज 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 राजेश प्लीज प्लीज। उप सभापति महोदय, प्लीज, मैं बहुत बार गया हूँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, प्लीज। सभापति महोदय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ खुश। प्लीज प्लीज राजीव जी, प्लीज आप बोले। तो आज मैं अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति। उप सभापति महोदय, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति। महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी। महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी। महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। सशक्त हो गई है नारी, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, और मोदी जी के साथ अब आएगी महिलाएं सारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ। महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं। मोदी है तो विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं। मोदी है इसलिए नया संसद भवन है। मोदी है इसलिए नया संसद भवन है, मोदी नहीं तो नया संसद भवन नहीं। मोदी है तो G20 की अध्यक्षता है, लेकिन मोदी नहीं तो अध्यक्षता नहीं। मोदी है तो सामाजिक न्याय है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, प्लीज। मोदी है तो सामाजिक न्याय है, मोदी नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। डू नॉट प्लीज, आप बोलो। हाँ, उप सभापति महोदय, महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ। महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कई साल महिलाओं के लिए लड़ा हूँ। मोदी जी का ये निर्णय बहुत आपका समय खत्म हो रहा है। आप
मोदी जी का ये निर्णय बहुत ही माननीय बड़ा ठावले है। जी, conclude, इसलिए समय मैं खत्म आपके हो रहा है। सामने खड़ा हूं। समय खत्म हो रहा है आपका, प्लीज। समय खत्म हो रहा है, प्लीज मैंने मुझे और कंक्लूड। बोलना है ना। मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन बिल, पूरे भारत की महिलाओं का खुश है दिल, सारे विरोधी अब हो जाएंगे किल, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील। माननीय ठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज। माननीय ठावले जी, और मैं मोदी दूसरे जी बढ़ा स्पीकर को रहे बुलाऊंगा। विकास की स्पीड और स्किल और विकसित भारत बनने की आशा अब माननीय होगी ठावले सुनती। जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज कंक्लूड। मुझे लगता है कि ये कंक्लूड। जो बिल है, आपका समय खत्म हो गया, ये मैं दूसरे बिल- को बुला रहा हूँ। बोलने नो दो। नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ। जो महिला आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण विधेयक को लाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका और उनकी योगदान भारत की जनता कभी नहीं भुला सकती है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में पेश किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 1948 में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 9 अप्रैल 1948 को एक चयन समिति द्वारा भेजा गया था। 4 साल के विचार विमर्श के बाद यह अनिर्णायक रहा। उनके अपने शब्दों में उन्होंने बोला था, मार डाला और अप्रयुक्त और गुमनाम होकर मर गए। स्वतंत्र भारतीय संसद में किसी विधेयक पर संभवतः यह सबसे लंबी बहस थी। ठावले जी, थैंक यू। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ, स्पष्ट करने के लिए उत्सुक नहीं थी प्लीज। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने श्रीमती रमीला बेन विचार भाई 12, प्लीज। श्रीमती रमीला बेन विचार भाई 12, प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, प्लीज। नो, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आपने समय से 2 मिनट अधिक बोला, आप बोले। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री। यस, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज। ऐतिहासिक सदन में नारी शक्ति वंदना अधिनियम ચર્ચામાં છે। આ ઐતિહાસિક બિલને અનુમોદન આપવા માટે ઊભી થઈ છું અને આ ઐતિહાસિક બિલ માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબને સમગ્ર જગતની મહિલા વતી કોટી કોટી વંદન કરું છું, અભિનંદન આપું છું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આઝાદ ભારતમાં અનેક સરકારો આવીને ગઈ, પણ આ સરકારો નારી સન્માનની વિરોધી હોવાના કારણે સંપૂર્ણ બહુમત હોવા છતાં પણ આ બિલ લાવવામાં નિષ્ફળ રહી અને સાથે સાથે આજે સામે પક્ષથી પૂછવામાં આવે કે મોદીજીએ 9 વર્ષમાં શું કર્યું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી હું એ કહેવા માગું છું કે 2010ની અંદર આ વિધેયક લાવવામાં આવ્યું હતું, સંપૂર્ણ બહુમતી હતી, તો પછી 2014 સુધી શા માટે લટકાવવામાં આવ્યું, શા માટે એને પસાર કરવામાં ના આપ્યું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દેશના વડાપ્રધાન માન્ય મોદીજી મહિલાઓના હંમેશા પ્રેમી રહ્યા છે, મહિલાઓ માટે હંમેશા હકારાત્મક રહ્યા છે અને મહિલાઓમાં જે શક્તિ રહેલી છે એ માન્ય મોદીજીએ પીછાણી છે અને એટલા માટે આજે મોદીજી મહિલાઓ માટે અનેક કામો કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતથી આવું છું। માન્ય વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગર્ભમાં રહેલી બાળકી સુરક્ષિત જન્મે અને સાથે સાથે બેટી પઢાઓ, બેટી બચાવો અને દીકરીને ભણાવો, કન્યા કેળવણી રથ લઈને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એ ભમીને દીકરીને ભણાવો અને દેશના વડાપ્રધાન અને એ વખતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મહિલાને સશક્ત કરવા માટે, દીકરીને સશક્ત કરવા માટે એક જ વસ્તુ કહેતા, હું તમારી સમક્ષ ભિક્ષા માગવા આવ્યો છું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ભિક્ષામાં એ રૂપિયા નહીં પણ ભિક્ષામાં કહેતા, મને ભિક્ષા આપો, ભિક્ષામાં તમારી દીકરીને શિક્ષા આપો। આ દેશના વડાપ્રધાન કન્યા માટે, દીકરીઓ માટે એક ભિક્ષા માગીને દીકરી સાક્ષર બને। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે આપણા સાક્ષરતા દર દીકરીઓનો 33%થી ખૂબ નીચો હતો અને ડ્રોપ આઉટ રેશિયો પણ વધારે હતો, પણ મોદી સાહેબના પ્રયત્નો
દીકરી ભણે, મહિલા સાક્ષર બને અને સમાજ આગળ આવે. એ કહેતા દીકરી ભણશે તો બાપની પેઢી તારશે, 7 પેઢીની તરી જશે. અને આ શક્તિ પીછાણીને દીકરીઓ ભણાવવાનું કામ એમને કર્યું. એટલું જ નહીં, હું આદિવાસી વિસ્તારમાંથી આવું છું. માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આદિવાસી વિસ્તારની અનેક સમસ્યાઓ આજે આપણે જળ શક્તિ મિશન યોજના દેશના વડાપ્રધાનનો એક મોટો છે, એક ભગીરથ સ્વપ્ન છે કે પહાડી વિસ્તારમાં રહેતા, આદિવાસી વિસ્તારમાં રહેતા બહેનોના માથેથી બેડા ઉતરે, પાણી નળથી ભરે, નળથી પાણી પીવે, પોતાનો સમયનો સદુપયોગ પરિવાર માટે કરે. અને એટલા માટે આજે આદિવાસી વિસ્તારની બહેનો નળથી પાણી ભરી રહ્યા છે. આજે ઉજ્જવલા યોજનાની વાત કરીએ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આદિવાસી વિસ્તારની બહેનો, ગરીબ બહેનો, બિછડી બહેનોને માથે લાકડા ચૂલો સળગાવવાનું કેટલું અઘરું હોય. આઝાદ ભારતમાં કેટલી સરકારો આવીને ગઈ, પણ બહેનોની આ પીડા, એમના ફેફસા નબળા પડી રહ્યા છે, એમને ધુમાડો ખાઈ રહ્યા છે. આ ચિંતા કોણે દૂર કરી? દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. શા માટે? કારણ કે બહેનોની લાગણી જાણતા હતા. માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, બહેનની જવાબદારી કેટલી હોય છે? કોઈએ બહેનોની તાકાતનો અંદાજ કર્યો છે ખરો? બહેનની રહેલી શક્તિનો અંદાજ કર્યો છે ખરો? આપણા ઘરમાં લાઇટનું મીટર હોય ને, તો એ મીટરનો કાંટો પડે તો આપણે બિલ ચૂકવીએ જ, પણ બહેન સવારમાં ઉઠે, બધાને સુવડાવીને સૂવે, કદી એની પગે મીટર બાંધીને એની મીટરના માધ્યમથી એની કિંમત આંકી જોઈ છે ખરી? તો બહેનમાં એ તાકાત રહેલી જ. અને એટલા માટે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ આપણા જનહિતમાં, રાષ્ટ્રહિતમાં મહિલાઓ પણ ભાગીદાર બને એ માટે આ ખૂબ જ અગત્યનું બિલ લઈને આ સદનમાં આવ્યા છે. અને એટલા માટે આપણે જોયું કે મહિલા કેટલી શક્તિશાળી છે, અને શક્તિશાળી મહિલા ભાગીદારી બને આ વિચારથી આ બિલ લઈને આવ્યા છે. અને એટલા માટે અંતમાં કહીશ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, સાચા અર્થમાં નારી તું નારાયણી સાર્થક કરતું આ બિલ છે. એટલે વાદ નહીં, વિવાદ નહીં, પણ સર્વસંમતથી આ બિલને વધાવીએ. આ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ધન્યવાદ શ્રીમતી રમીલાબેનજી. માનનીય શ્રી કપિલ સિબ્બલજી, 3 મિનિટ. Thank you, sir. Thank you for allowing me to intervene in this very historic piece of legislation. We all know that the bill is going to be passed. There are no doubt about it. And we all know why it was not introduced in 2014 and why it's being introduced today in 2023. We don't have to discuss that anymore. But I want to place on record my concern for the future of this bill. And I'll tell you why. There have been about 3 delimitations that have taken place in this country: 1952, 1962, 1972, which was completed in 1976. And as you know, that there's a decadal consensus that happened in 1951, 1961, 1971. And from 72 to 76, it took 4 years to do the delimitation. Then came 2002, when a constitutional amendment said that we will now do the next delimitation in 2026. The census of 2001 was done. The census of 2011 was done, and there's never been a delay in the census. But the census of 2021 has not been done till date. The reason given was that during that period of time, 2019-20, there was COVID. So therefore, the census could not be completed. But the COVID happened in 2021, and United States, England, China completed their census even during the course of the COVID. The reason why there's a connection between the two, because when the Finance Commission sits, it allocates resources on the basis of population. And if you don't do your census, then the allocations become skewed, because the population is increased, but you don't have a latest census. The result is the Finance Commission cannot allocate proper resources to regions, to the states in this country. Now, 4 years it took for the 1972 delimitation process. Now, the delimitation has not happened between 2021 and now. So we are going to wait till 2026 for the census to happen.
Now, if the census happens in 2026, and the census will reveal the new population figures, and the reason why it was frozen in 2002 was that by 2026, the Health Ministry gave an opinion that by 2026, the entire population will not be growing anymore. So the result was that we will then see in 2026 how allocations are to be made and what delimitation is to be done. Now, as it happens, the North, population in the North has increased exponentially, and that in the southern states has not. So there's going to be a big problem in dealing with the issue of delimitation after the census is done. I'll just finish, sir. I'm not going to waste your time because I'm not going to enter into the politics. Please. That's all. So just give me a bit of time. Please. Right. So therefore, the problem will be that this is now a time when there'll be rotation, when the delimitation process will be freshly done, and if it's not going to be completed by 2029, this is not going to happen. So now I want the Prime Minister and I want the Home Minister to make a statement in this House. We don't know who will come to power, but they must make a statement that if they don't complete the process by 2029, they will resign as Prime Minister and Home Minister of this country. Let them make that assurance to this House. We'll then know whether... That's another matter. That's another matter. But at least they should give that assurance to this House. We will know the genuineness of why they have moved it in 20. So that's one point I've finished with. One other point. And that's the last one, and then I'm done. Your time is already over, So sir. give me just 1 minute. I'm not going to waste time. I never waste time. 30 seconds, please. 30 seconds. So I now- have time constant, now please. I want You sit, all please members. let him speak, please. I want Please all conclude. members of this House Please to place conclude. their hand on their heart when they go out of this House, and can they say that women of this country have been socially empowered, educationally empowered, economically empowered? And if they ask that question, the answer is no. Please ask all members of this House to go out of this House and ask about the scheduled castes and scheduled tribes. Please. Despite the reservation, have they been socially empowered, economically empowered, and educationally empowered? The answer is no. This is just a very small step, a delayed step. We want a leap forward for the empowerment of women politically. Thank you very much. Dr. Sonal Man Singh ji, we have 5 minutes. Dr. Sonal Man Singh ji. Thank you very much, sir, for this opportunity to speak here in this majestic hall of the new building of Parliament. I'm here, sir, as nominated member also for art and culture, and that is because of Prime Minister Modi's respect and love for the heritage of India, both for culture, art. He considers culture as the soul of the nation. Sir, Bharat is known as mother of democracy. The Janapadas, the state republics, were autonomous bodies beginning with Vaishali. Elected representatives were responsible for smooth functioning of governance according to law and well-debated policies. Sir, Amrapali, known as a great and superb dancer, was called Janapada Kalyani and was also a part of this decision-making body. Today, in the largest democracy of the world, we are on the threshold of recreating those glorious acts, one of which is the Women Representative Reservation Bill, a bill which will become, in the words of late Srimati Sushma Swaraj, a milestone. Such bills change the lifestyle of a particular section of society. She further said the 73rd, 74th, and 81st Constitution Amendment Bill will come in category of such bills which have become milestones. And such bills bring revolutionary change in the life of women, which provide 33% reservation for women in municipal corporations, municipalities, and gram panchayats. Now, as a natural progression from there, after reservation was granted to women in the Panchayati Raj institutions and urban local bodies, we are on the threshold and we are enthused and excited to welcome the Women Reservation Bill, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, for which we thank Prime Minister Modi wholeheartedly. Reservation for women is reserving seats for women, that which flows from the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 15 in brackets 3 of the Constitution of India.
Moreover, reservation for women has been granted by various laws of parliament and state legislatures for achieving the ideals of equality and social justice, like reservations in jobs, educational institutions, elections to Panchayati Raj, etc. Reservation, as envisaged in the bill, will ensure considerable political empowerment of women in the true sense. It will pave the way to the achievement of political justice to women, as promised in the preamble and Article 38 of the Constitution of India. It will enable women to have greater participation in the decision and policy-making process. It is the long-awaited affirmative step in that direction. I seek your indulgence to invoke names of Sita and Draupadi, Nayikas, heroines of the great epics Ramayana and Mahabharata, who had decisive role in governance and policy making. Women as rishis of the Vedic times, such as Lopamudra, Maitreyi, Ghosha, Gargi. Women as Satyavadinis, such as Savitri and Jabala of the Upanishads. Saints and seers, such as Lalleshwari, Meera, Mahadevi Akka, Bahanabai, Anandamayi Ma, Mata Amritanandabayi, who brought societal changes in the attitudes and mores of male-dominated society and who provide examples of the strength and power of women. The brave deeds of women as queens who ruled over large kingdoms and as army chiefs, as freedom fighters, educationists, social reformers, entrepreneurs, artists and artisans, lawmakers, medical practitioners and healers, as counselors, mothers and homemakers, women who are everywhere, coalescing and contributing their best to build a society, a nation of great power, strength and character. Nothing is too small. Every detail is important. She creates, she nurtures and disciplines. She is the binding force that keeps disparate elements in family together, families that build a society by which a nation is known. Today, under the inspiring leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, who walks the talk, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो संकल्प से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र को जीवंत रखते हैं, who believes in सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, who believes in बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, and now बेटी बढ़ाओ, who has put faith in women-led development, results of which are for everyone to see. In his speech on Budget 2023, he said, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति के प्रतिबिंब। सर 1 minute प्लीज। नारी शक्ति का ये सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। We are witness to first ever tribal woman president of India, Honorable Srimati Draupadi Murmu. We are witness to entry and participation of women in combat units everywhere. For the awe-inspiring success of Chandrayaan-3 also, sir, credit has been given to almost 100 women scientists. Sir, at the end, I would like to say that I'm so honored and privileged to be here to speak on this. Bharat Kanya, Desh Dhanya, Bhumi Janya, Bharati, Gagan ko, Agan ko, Vachan ko hai Dharati, Desh Bala, Deep Mala, Deep Bati, Bharati. Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। माननीय सदस्यगण, 70 से अधिक स्पीकर्स हैं, इसलिए कृपया लिमिट योरसेल्फ विद इन टाइम। माननीय श्री विनय विश्वम जी 3 minutes। माननीय विनय विश्वम जी 3 minutes, प्लीज। थैंक यू सर। सर, फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द पार्टी ऑफ ईदा मुखर्जी, the lady, the great fighter who fought for the Women's Reservation Bill throughout her life, I support the bill. Sir, while supporting the bill, I request the governments make sure it will be implemented in 2024 elections. Remove all the hurdles in the name of census or delimitation. Make it sure that it would be extended to Rajya Sabha and to all the legislative councils of states. Make sure the rights of the OBCs and the minorities will be taken care of and they get the rightful share in the present and future
lawmaking bodies. Having said this, let me state very clearly that the BJP is most insincere in this attempt. The bill they brought only for the electoral gains. Sir, BJP, everyone knows, is the political outfit of the RSS. We all know that there is no space for a single woman in the RSS. Why? Why the Rashtra Sevika Samiti was formed? Why? No, answer me. Why the Rashtra Sevika Samiti was formed? Because you don't believe that a woman can sit with the man in the RSS. That's the reason. So it's ideological. Because BJP and RSS believe that Nastri Swatantra Varhati. Because you follow Manusmriti. The followers of Manusmriti cannot be sincere to a human empowerment bill. We are sure of that. But you are concerned only about the electoral victories, and for that purpose you brought it. Sir, we all know one more thing. Why the woman president of India, Draupadi Murmuji, was not seen when this house was inaugurated? Why she was not seen? She's a woman, she's an Adivasi, but she had no place for that great function. That is BJP, that's RSS. Sir, you please tell us why, in your rule, the women of Manipur was paraded nakedly there on the streets. Why? Your time is over, sir. Please. Sir, please. Your time is over. Please conclude. Sir, 1 minute more, sir. 1 minute. No, 1 minute. 1 30 minute. seconds. 30 seconds. Conclude. Okay. Conclude. Okay. Sir, when you insist me to conclude, I may tell you, you came with the bill, but with so many hurdles. Census, delimitation. I remember that story, sir. A fox invited a crane for a dinner. Thank you. Gave a soup on a broad plate. From that plate, the crane could not You have taken already 1 minute. Bring a single drop of soup. Thank you. That happens in the future also. Because this is not for the women empowerment, only for the BJP's Vinayji. And the country knows it. And we will defeat you when the election comes. Thank you, sir. Srimati Geeta alias Chandra Prabha. Srimati Geeta urf Chandra Prabha. Please, 5 minutes. 5 minutes. धन्यवाद महोदय 5 मिनट कि ऐतिहासिक पल में मुझे साक्षी बनाने के लिए आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सुबह से सुन रही थी उधर से कि बंधन शब्द का जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए अगर जो बंधन शब्द आया तो उसमें आपत्ति किस बात की है? महिला वो शब्द है कहने के लिए 3 अक्षर से बना है, माँ, हा और ला, और तीनों अक्षरों में अलग अलग अपने को परिभाषित करता है। माँ का ममता मतलब है ममता, और हा का ममता मतलब है हिम्मत, और ला का ममता है मतलब है लज्जा। इन तीनों को महिलाएं सजो के जब घर से बाहर निकलती हैं, राष्ट्र हित में काम करने के लिए निकलती हैं, तो किस बात की आपत्ति? इसीलिए इसी को सोचकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन शब्द स्वयं में ही माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में देश की माताओं बहनों के लिए के प्रति आदर्श दर्शाता है। पिछले 9 वर्षों में लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार अगर जो हम देखते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में बराबर मतदान किया है। इन्हीं को देखते हुए आपने देखा होगा कि जब 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी में आपने जब टिकट के जो उम्मीदवार थे उसमें 8049 उम्मीदवार थे, जिसमें महिला केवल
9% की भागीदारी थी। वर्तमान में देश के संसद में भी मात्र 15% सांसद महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, जो कि अब महिलाओं के द्वारा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व पहली बार इतना संसद में देखने को मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि यह स्थिति कैसे बनी है, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है, कि क्या कारण हुआ है कि आज प्रधानमंत्री जी को यह महिला विधेयक लाना पड़ा है। लगातार स्वतंत्रता के पश्चात लंबे समय से देश में आप उधर बैठे कांग्रेस की सरकार रही है। मैं जानना चाहती हूं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार इस 1998 में ये विधेयक जब लाए थे तो कांग्रेस लगातार विरोध करती रही। राज्यसभा में किसी तरीके से पारित भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं होने देने का काम किया। मैं महोदय जानना चाहती हूं कि 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी विधेयक की मांग करती रही, पर लगातार इन्होंने विरोध करते हुए विधेयक को पारित नहीं होने दिया। परंतु कांग्रेस के द्वारा विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, पारित नहीं होने दिया। आज कांग्रेस बात करती है महिलाओं के ओबीसी के अधिकारों की, तो मुझे हंसी आती है। मैं सुबह से सुन रही थी कि ओबीसी की, मैं एक साक कुशवा मर्द समाज से आती, जो अति पिछड़ा समाज है। अभी तक देश आजाद के बाद पहली बार कोई महिला राज्यसभा में आई है, तो वो गीता साक करके एक किसान की बेटी, एक छोटे से किसान की बेटी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आई है। मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। मैं जानना चाहती हूँ कि ओबीसी की बात करते, फिर वही बात आती है ओबीसी की। मैं जानना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक कांग्रेस ने कितने प्रधानमंत्री ओबीसी के बनाए हैं, आप बताइए। जब बने तो आप लोग खुद जानते हैं कौन बना है। इसलिए जब मैं जानती हूँ कि जब, अरे सुनो तो भैया, जब सुनो तो सत्य तो यही है, आप सुनिए तो सत्य तो यही है कि जब कहीं से छिपी नहीं है कि आदरणीय देवगौड़ा जी और चौधरी चरण सिंह जी जैसे ओबीसी समाज से आने वाले बड़े नेता जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सामने वालों ने उनकी सरकार को चलने नहीं दिया, ये आप सभी जानते हैं। महोदय 2000 कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्यों नहीं 2024 में ये बिल ये लागू किया जाता, ये नियम लागू किया जाता। इनकी पार्टी में अनेकों वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, सभी अधिवक्ता जानते हैं कि उन्हें स्वयं अच्छे से पता है कि किसी भी विधेयक को कानूनी रूप देने तथा उसको लागू करने के लिए नियमों की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परंतु सब पता होने के बाद भी देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार से बातें की जाती हैं। बस 1 मिनट में चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं चाहती हूँ। ओबीसी की बात करती, देश आज़ाद हुए एक लंबा समय हुआ और इनको नहीं चिंता ओबीसी की आई। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा आयोग का नहीं दिया, लेकिन मैं बधाई देती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सरकार आने के बाद ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, मुझे पता है। अंत में मैं एक बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करूंगा। उससे पहले माननीय सांसद बैठे, वो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आरोप लगा रहे थे। मैं उनको बताना चाहती हूं कि वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो आप पर आरोप लगा रहे। 2017 के जब जो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले उन्होंने प्रदेश में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना के संदेश दिया है कि वो बेटियों के लिए कितने संवेदनशील है। आप अपनी बात पूरी करें। बता दो क्यों नहीं करेंगे, अभी आरोप लगा रहे। वही मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की बेटियों के लिए अपनी बात पूरी करें। महिला बटालियन शुरू किया, जिससे कि राष्ट्र में अपना योगदान दे सके। मैं अपनी पंक्तियों से 27 वर्षों का सपना आपके द्वारा पूरा किया जा रहा है। मानी 27 वर्षों का सपना आपके द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, देश की नारी शक्ति की ओर से आपका कोट कोट आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमान संतोष कुमार पी।
Madam, आपके पास 3 मिनट हैं। I rise to support this important piece of legislation. CPI always stood for the empowerment of women. Leaders like Geeta Mukherjee were instrumental in bringing this women reservation. And now the important question is whether the government is serious in implementing this bill. Why the government is linking both census and delimitation with this bill? Okay. The government should answer clearly. The union minister who forwarded this bill was explaining many things, but he did not explain why we need this connection between this bill and census plus delimitation. Now they say no time at all. What is the problem in implementing these decisions in the coming election? We have 542 or 40 Lok Sabha seats. So 181 can be given. What is the problem in giving that? You please answer to this question in a very simple manner. This is what the country wants to know. Many other issues are there. I don't want to go into the details. But what prevents you from bringing this legislation to make it practical in the coming election? To that question you have to answer. Others, you speak always on Modi, it's a different issue. Now, one important point is that, Madam, I would like to bring you notice. There is a case pending in the Supreme Court of India, initiated by one of the prominent women organizations in this country called NFIW, National Federation of Indian Women. That case is pending, in which all political parties made a party to it. The government of India and almost all states are also part of that case. Now, the Supreme Court last time asked, what are the steps taken by the union government? And the councils representing the union government was absolutely defenseless. Now, this is a face-saving mission, in fact. But even then, India, a country which stands 140th rank in the world human political report, women's role in politics, a report was recently came out, and India stands at 140th position. So we all wholeheartedly support, but we sincerely doubt this intention of the government. They want to make it a jumla, it's a political jumla only, and later on they will say, oh, we have given many offers. So who is going to make it practical? So while supporting this bill, important piece of legislation, we sincerely doubt the intention of this government, and they want to make it another piece of jumla only. And with these words, I support the bill, but I do share these apprehensions on this bill. माननीय सदस्य श्रीमती पीटी उषा। Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak. Nari Shakti Vandan Adhiniyam. First of all, my Vandan to all the female of this country and the Honorable PM Sir who put this bill on the table. I request all my fellow colleagues to support this bill with utmost capacity. Thank you so much, sir, for taking us finally on this platform. This is called the real Amrita Kal for women. Swabhiman, which is given by Honorable PM Sir. From the President of Bharat to the women who are living in the remote villages in mud houses, that's called the N.D.A.I.N.D.I.A. All the schemes like Ujjala Yojana, Pradhana Mantri Awas Yojana, Beti Bachao Beti Padhao Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana, Triple Talaq, and so many like others. This is not only strengthening women, but also a matter of the dignity of the women. Now I want to draw your attention. Yesterday PM Sir told that this Pavitra Karma done by me. Yes, you are right, sir. You are doing Sapavitra Karma. I must say in the conclusion that today we must thank and offer our pranam to one incredible woman,
Swargiya Srimati Hiraben Modi ji, the mother who gave Bharat an illustrious son who would bring justice to the entire women population of Bharat, who would usher an Amritakal of equality and remove all barriers that prevented women from achieving their fullest constitutional, political potential, and guide the nation to the glory to deserve and serve Bharat Mata with commitment. As we reach 2047, may we see Ma Bharati's daughters leading this nation and leading from front, and Rani Lakshmi Bai, Rani Ahalya Bai Halkar, Kittu Rani Channamma, Kyun Velu Nachiyar, and every other woman of modern time, like our respected Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, with whom I am learning on everyday basis. I want to thank to all the women who's building this nation, who's raising their children, whose works in this field, whom are Atmanirbhar and whom are Karma Yoginis, under whom's able hands Bharat will be more stronger and mightier. I will end my words because it's not my speech, it's feelings of gratitude. It is called Sashakta Bharat ki Sashakta Bharat Madai. With this word, I support this bill. माननीय सदस्य श्रीमती सीमा द्विवेदी। शक्ति बंधन अधिनियम 1028वां संशोधन बिल आज जो राज्यसभा में आया है उसके समर्थन में खड़ी हूँ और मैं विश्वास भी करती हूँ कि आज यह पूरा सदन सर्वसम्मत से इसको पास करके इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करेगा, ये मैं चाहती हूँ। महोदय, मैं इन बातों से इस बात को कहना चाहती हूँ, मोदी जी के नेतृत्व ने जिंदगी संवारी है, दुनिया मुट्ठी में करने को अब बेटियों की बारी है। महोदया, हमने पढ़ा था कई हजार साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु जी ने कहा था कि अगर मुझे कोई 100 शिक्षित माँ दे दे तो मैं उसको एक शिक्षित राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ, ऐसा अरस्तु जी ने कहा था। महोदया, आज 70 करोड़ महिलाएं को आज आज़ादी मिली है। कहने की बात है कि 1947 में हमको आज़ादी मिली, हमारे संविधान में तमाम संशोधन हुए, हमको मूल अधिकार मिले, हमको मौलिक अधिकार मिले, वहीं पर हमको समानता का भी अधिकार मिला। लेकिन उपसभापति महोदया, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि समानता का अधिकार आज यहाँ पर 70 करोड़ बहनों को जो देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिला सब कुछ करने में सक्षम है, बशर्ते समाज एवं सरकार उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दें। महिलाओं को जीवन के हर पड़ाव पर मदद करके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लेने का काम किया है। अभी हमारे एक कांग्रेस की हमारी बहन रजनी जी कह रही थी कि आप लोगों ने बिल को क्यों नहीं आपने पहले ये बिल क्यों नहीं लाया जब आपकी सरकार थी 2014 के बाद। तो हमारे आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी बार बार पत्र लिखते रहे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आप याद करिए जब 10 वर्षों तक नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी रहीं तो उन्होंने इस बिल को सदन में क्यों नहीं लाया। और मुझे अच्छी तरह याद है लोकसभा में कई बार बिल आया, कई प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को रखा। और मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत कम कार्यकाल में, अल्प कार्यकाल में हमारे देश के सबसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बिल को लाने का काम किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी दुनिया देखी थी जब उनके सहयोगी दल के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उस प्रस्ताव को छीन करके फाड़ने का भी काम इन लोगों ने किया था। हमें याद है वर्ष 2010 में इसी राज्यसभा से सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ था और हमारी पार्टी के लोगों ने उसको समर्थन दिया था। मैं पूछना चाहती हूँ
तब आप लोगों ने लोकसभा में उसको पेश क्यों नहीं किया? क्यों आपने उसको छुपा करके रखा? आपने उसको छुपाने का काम किया है। महोदय, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए समय समय पर बहुत उपयोगी काम किए हैं, बहुत उत्साहवर्धक काम किए हैं। मैं उनकी कुछ योजनाओं का यहाँ उदाहरण करना चाहती हूँ। फिर सिलाई मशीन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसके आलोक में हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी काम किए हैं। महोदय, समग्र विकास का प्रयास सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली नारी शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए प्रतिवर्ष 8 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भी हम बीते वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ते देख सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। 2021 में 119 में से 29 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया। 2022 में 128 में से 34 पुरस्कार महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी संख्या में यह काम किया गया। बजट में भी 1.5 से अधिक की बढ़ोतरी की गई। महिला आज खेत से खेल तक, शिक्षा से रक्षा तक हमारी बहनें काम कर रही हैं। महोदय, मैं अभी अपनी बात को 5 मिनट का और समय दीजिए। आधी आबादी में हमारा हिस्सा है। अंतरिक्षयान की यात्री के रूप में पहली महिला कल्पना चावला, पहली महिला IPS किरण बेदी, पहली महिला शिक्षक फातिमा शेख, उड़न परी हमारी सामने बैठती आदरणीय PT उषा जी, और कलम क्रांति के क्षेत्र में पहला स्थान अमृता प्रीतम जी को आता है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ पद्म पुरस्कार से भी भूषित किया गया। महोदय, मैं राजनीति की बात आती है तो सुषमा स्वराज जी को विस्मृत नहीं किया जा सकता। सुषमा स्वराज जी के साथ साथ हम सुचित्रा कृपलानी जी को याद करते हैं, हम सरोजिनी नायडू जी को याद करते हैं, हम बहुत सारी अपनी ऐसी बहनों को याद करते हैं जिनका योगदान रहा। हम लता मंगेशकर को नहीं भूल सकते, हम आशा भोसले को नहीं भूल सकते, हमारी महिलाओं ने क्या से क्या नहीं किया, सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं भूल सकते, महादेवी वर्मा को नहीं भूल सकते। महोदया, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। पिछले 27 वर्ष में महिला विधेयक लाने का अनेक बार प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में जो प्राविधान किया, वो प्राविधान किया ही किया है। बालिका विद्यालय को मंजूरी और हमारी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ाने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको हम विस्मृत नहीं कर सकते। और अभी हमारे माननीय पाठक जी जो पंजाब से चल करके आते हैं, आपने कहा महोदया बस 5 मिनट बोलने, आज न बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आज तो हमारा दिन है, आज तो हमको सीमा में न बांधिए, आज सीमा को तोड़ दीजिए, आज हमको बोलने दीजिए आप। महोदया, मैं कहना चाहती हूँ, भी हमारे पंजाब के पाठक जी कह रहे थे कि महिला सुरक्षा को लेकर के दिल्ली में CC कैमरे लगाए गए हैं। महोदया, मैं कहना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा CC कैमरों से नहीं हो सकता। महिला सुरक्षा हो सकता है अच्छी नीतियों के कारण, महिला सुरक्षा हो सकती है अच्छे परिणाम के कारण, महिला की सुरक्षा हो सकती है अच्छे संस्कार के कारण। मैं पूछना चाहती हूँ, बेटा रात को 2 बजे घर पे लौट के आए, कोई न पूछे कि बेटा तुम कहाँ थे? और अगर हमारी बेटी 1 घंटे में, आखिरी बात, और बेटी अगर 10 मिनट लेट में आती है तो हम पूछते थे बेटी आप कहाँ थे? तो मैं कहना चाहती हूँ 7 मिनट हो गए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ 2 बात कह करके अपनी बात को विराम करती हूँ। महोदया, बस 1 मिनट, एक लाइन। महोदया, 1 लाइन। माननीय तिवारी जी, 1 लाइन, 1 मिनट। मैं आपके सम्मान में कहना चाहती हूँ, मैं 1 लाइन। तिवारी जी बैठ जाइए, आपके सम्मान में बोल रही हूँ। माननीय तिवारी जी, आपका सम्मान सुनिए। आज मैं अपने भाइयों के सम्मान में एक बात कहना चाहती हूँ, आज मैं अपने भाइयों के सम्मान में एक बात कहना चाहती हूँ। जल्दी करिए। कि माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन जीतती हर बार नारी है। जैसे सांवरिया के 56 भोग में एक तुलसी दल ही भारी है। सीमा जी, समाप्त करिए जी। श्री राम जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे 128वां संविधान संशोधन बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया।
साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस बिल पर बोलने और देश की ऐतिहासिक पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट में समाज सेवा और देश सेवा करने का गौरव प्रदान किया। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। महोदया, फिर सुनते हैं। महोदया, 20 जुलाई, मैं बाबा साहब की कुछ बातों को दोहराना चाहता हूं। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय शोषित वर्ग महिला सम्मेलन के आयोजन में कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। यानी जिस समाज की महिलाएं प्रगति नहीं करती, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं की प्रगतिशील बनाने के लिए उनकी शिक्षा में भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक स्तर में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को तमाम तरह के हक, अधिकार और पिता पति की संपत्ति में बराबरी का हक दिया, ताकि उनका सामाजिक स्तर बढ़ सके। शिक्षा और नौकरियों का अधिकार भी संविधान में देने का काम किया। संविधान के प्रेम्बल में जस्टिस और इक्वलिटी की बात बाबा साहब ने कही। 25 नवंबर 1949 में कहा, मैंने राजनीति में आज बराबरी का हक दिया, वन वोट वन मैन वन वैल्यू का सिद्धांत कायम किया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता के आने वाली सरकारों को जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा। महोदया, इतिहास गवाह है, महिलाओं ने तमाम जुल्म और जातियों को सहा है, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और यहाँ तक कि शिक्षा पर लगा सामाजिक प्रतिबंध, जिसे भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल खोलकर इस प्रतिबंध को खत्म किया। महोदया, इन तमाम सामाजिक कृतियों के बावजूद भी महिलाओं ने देश की आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, सरोजिनी नायडू हो, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई कोरी, उदा देवी पासी, बिजली पासी, चाहे मुजफ्फरनगर की महावीरी देवी वाल्मीकि, यहाँ तक कि दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना गया, चाहे सिक्किम से हेलेन लेप्चा हो उर्फ सावित्री देवी हो, नागालैंड से चाहे रानी जायदिन लियू हो, चाहे वो गोरखा से पुतलीमाई देवी जी हो, इन सभी महिलाओं ने तमाम महिलाओं ने अपने प्राण देश की आज़ादी के जंग में न्यौछावर भी करने का काम किया है। यही नहीं महोदया, जब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम महिला कॉलेज खोले। मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना भी शुरू करी, जिसमें 25,000 रुपए और साइकिल देने का काम किया। महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूँ कि अगर महिला सशक्तिकरण देना है तो SC ST OBC की महिलाओं को भी इसमें अलग से रिजर्वेशन देने का प्रावधान करें, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भी इन महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। अगर सही माने में मैं फिर से आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूं, SC ST OBC की महिलाओं को 33% आरक्षण में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का काम करें। इसको संज्ञान में ले, गंभीरता से ले। धन्यवाद। श्रीमती SK फांगन कोन्याक। Honorable Deputy Chairman, ma'am, I stand here today in support of this bill because it is a defining moment in the history of our country for women. I'm here today because my party chose to give me the ticket. महिलाओं का सम्मान करिए। आज महिलाओं का दिन है, महिलाओं का दिन है, महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं को सुनिए। आज I'm here today as an MP because my party chose to give me the ticket in spite of many male capable ticket seekers. And BJP as a party is a party which practices 33% reservation in the party setup. The enabling environment created by our Honorable Prime Minister has led to women empowerment, transitioning to women-led development. Now, Prime Minister's various initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao, Ujjwala scheme, Mudra scheme, Ayushman Bharat, Sukanya Samriddhi, all this has led to now the sex ratio of women
increasing to 120 females for every 1,000 males. And this increase in sex ratio can all be contributed to the various initiatives of our Honorable Prime Minister. We have a Prime Minister who speaks about menstrual hygiene from the ramparts of the Red Fort, and we have a Prime Minister who thinks for women. Today, there were many questions of if, what, how, why, when. But then, if we have political will, then we will find a way and this bill will be passed. I thank Honorable Prime Minister also and all stakeholders for keeping intact the provisions of the law to safeguard the interests of scheduled tribes and scheduled castes, especially for Northeast. And also take this opportunity to thank Honorable Prime Minister for being the champion of women empowerment initiatives, and now with the passage of this bill, a dawn of women-led development will begin. I support this bill. Thank you. श्री अजीत कुमार भूया 3 मिनट आपका समय. Thank you, Madam. I stand to support the bill since 50% population will be benefited in participation of formulation of program and policy. Since the reservation for women at the local body level had been for decades, there is no doubt that women leadership emerged, but majority of them are from family of influence. In the present bill, there is no safety net for negating such trend. Since the bill will be implementable by 2029, the first 15 years, that is 3 tenures of Lok Sabha and Vidhan Sabha, women with political influential family will get chance to be elected. Is this way women be empowered? Madam, I do not want to take any individual name, but there are few constituencies where family of influential political clout always got elected, and even if such constituencies get reserved for women, no outsider will get chance to be elected. Madam, however, if several women stalwart have represented the parliamentary democracy in the past, and many of them were not from political influence family. Hence, I will like to remember Bhagavati Devi, who got elected from Gaya in Bihar in the year 1996. This could happen due to the very honest intent of Lalu Prasad ji, then Chief Minister of Bihar. And I salute Lalu Prasad for giving opportunity to such women. Sir, Madam, when democracy in our country is getting matured, representative political participants should be from all sections of the society. But my strong apprehension is that the present women reservation bill may not fulfill the desired expectation of wider political participation of women. Madam, the time frame of the bill has been designed in such a way that Bhagavati Devi like women get chance only around 2050 to represent the parliamentary democracy. I am from Northeast, only opposition voice. Madam, give me 1 minute. You have given everybody 2-3 minutes. The Prime Minister and many senior cabinet ministers intervened in the discussion of the bill and claimed that the leadership of the previous government was not bold enough to get bill passed, but the government led by Modi made it possible. Will any member of the August House deny that the demand of 33% reservation in Parliament and Assembly originated only after constitutional amendment of women reservation at local level? On 2 points only, Madam. Thereafter, since 1996 onwards, all successive governments at the center piloted the bill and tried to evolve consensus. Perhaps this is the first government who do not believe in consensus
behavior and diluted the bill, and women has to wait for years. The best consensus course of immediate implementation should have been made possible to immediate election, as the ECI Election Commission is capable of identifying the constituency. Finally, let me quote a very interesting couplet, famous couplet. इतना गुमन में मत रहो कि सब कुछ तुमने किया, इतना गुमन में मत रहो कि सब तुमने ही किया, अरे कुछ तो शर्म करो कि कुछ तो तुम्हारा पूर्वज ने भी किया होगा जो आज तुम यहाँ हो। थैंक यू। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि। माननीय सभापति महोदया, आज भारत के ऐतिहासिक निर्णय में मुझे भाग्यशाली अवसर प्रदान हुआ है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर 128वें बिल के समर्थन में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। माननीय महोदया, बीते 9 वर्षों में देश महिलाओं के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लीड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की महत्वपूर्ण G20 में अध्यक्षता रही बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ था। इस वर्ष का बजट भी वुमेन लीड डेवलपमेंट के प्रयासों को नई गति प्रदान करेगा। इसमें आप सभी की बड़ी भूमिका है। माननीय महोदया, हमारे यहाँ वर्षों से राजनीति के लिए महिलाओं का नाम बहुत बार लिया गया। महिलाओं के लिए ये किया वो किया, ये दावे बहुत हुए और अनेक बार हुए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी 9 वर्षों में मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने हमारी बहन बेटियों माताओं के जीवन में हर समस्या से जुड़ी हुई समस्या का निदान करने का पूरा अवसर दिया। राजनीतिक परिदृश्य में यदि देखा जाए तो मैं स्वयं इस बात का आपके सामने उदाहरण हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भारत के श्रेष्ठ सदन में स्थान देकर अपने कार्यों को चरितार्थ किया, वरना अभी तक तो यह वर्ग सिर्फ वोट बैंक में रहा। महिलाओं की दीन दशा सुधारने का कार्य माननीय मोदी जी ने NDA सरकार ने किया। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए माननीय मोदी जी ने मातृ वंदना योजना चलाई, जो 3 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजने का कार्य हुआ। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी वृद्ध अभियान चलाए गए। बेटी को कोख में ना मारें, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन हुए। मोदी जी ने जनता से आह्वान किया कि आप मुझे बेटी भीख में दे दो, मैं बेटी को संवारूंगा और आगे उसे राष्ट्र की संपत्ति में शामिल करूंगा। बेटी बड़ी होकर स्कूल जाए तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी शिक्षा जारी रखे, इसके लिए सुकन्या योजना दी। इसके लिए माननीय बेटियों को एवं बहनों को मुद्रा योजना दी। सैनिक स्कूलों के द्वार खोले। इस अवसर पर सेना में अफसर बने। तीनों सेनाओं में बेटियों को रास्ते खोल दिए। आप आज देखेंगी बड़ी संख्या में अग्निवीर में बेटियां भर्ती हुई हैं, जो NDA पुणे में पहले बैच की ट्रेनिंग ले रही हैं।
माननीय महोदया, यही नहीं, मैं गांव तक यह सेल्फ हेल्प के ग्रुप के विस्तार की सहायता को दुगना कर दिया। रसोई गैस के उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दे, उनके जीवन में नया और सुलभ बनाने के लिए कदम बढ़ाए। प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को भुगतान किया जा चुका है। 5 मिनट। माननीय महोदय, बस बेटियों और बहनों के हर घर जल नल योजना के अंतर्गत कार्य किए गए। माननीय महोदया, बेटियों को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए सौभाग्य योजना चलाई। बेटी बीमार ना पड़े, इसके लिए आयुष्मान कार्ड योजना एक ताकत बनकर उनके सामने आई। मैं कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह से भाग्य भारत का बहनों के हाथ आगे बढ़ रहा है, इसी के लिए मैं अपनी ओर से 2 लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ कि सामने है मंजिल तो रास्तों में आगे बढ़ना। अभी वक्त है, जो भी हो मन में वो इच्छा न छोड़ना। कदम कदम पे मिलेगा साथ भाई मोदी का, बस राह चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर एम तंबीदुराई, टाइम 3 मिनट। Thank you very much, Madam. On behalf of ADMK party and former Tamil Nadu Chief Minister Palnisammy, it's a great coincidence I raised to speak and support the bill. When a similar bill reserved 1/3 of seats, I introduced in 1998 as Law Minister under the leadership of Vajpayee at that time. But the time it could not be passed. Now, it is the opportunity. I congratulate Prime Minister of Modi ji has come forward, and whatever we had dreamt at that time, it is going to be coming to the practical now. Sir, I want to say about Madam, ADMK party played a historical role in empowering of women and reservation for women in governance. Under the leadership of former CM's Tamil Nadu, Purachi Thalaivar MGR and Purachi Thalaivar Amma Jayalalitha ji, we have given lot of power to the women, so many welfare schemes implemented the scheme. And also we are astonished to see that even though Revenant party said we have to give more power, 2 chief ministers in Tamil Nadu given by the ADMK party, Madam Jayalalitha ji and Amma Janagi. But other party, if they are claiming as Revenant party, they cannot give such kind of power. This is the fact I want to tell you because empowerment. And also, Madam, sir, I would like to remind the House that under the leadership of Amma, Tamil Nadu has already enacted a law to reserve 50% of seats for women in Panchayat Raj institutions. Reservation to women had been increased from 1/3, one of the total number of seats, PRI. Thus, 50% of the seats in the wards of villages, panchayat unions, and district council reserved for women, Madam. And also, I want to say other things. In 4 elections, 1991, 2001, 2011, 2016, 4 elections, ADMK party under the leadership of Amma, the women, what we are telling empowerment women, we have to think that Madam Jayalalitha ji fought the elections and won the thumping majority, and consecutively 4 times she was the Chief Minister of Tamil Nadu, historical thing which had happened in Tamil Nadu, which cannot be denied. And also, sir, regarding the welfare schemes, when we are saying about empowerment of women, first of all, giving welfare schemes more important. As our Modi ji has implemented many welfare schemes, before that, our Amma also schemed a lot of welfare schemes implemented in Tamil Nadu to empower the women and give the protection of women. For example, Madam, for female, whatever baby bachao we are telling now, that is the scheme originally originated in Tamil Nadu under Amma, that is implemented as a baby cradle scheme to save the women children. At that time, many people used to kill the women children at that time. She saved a lot of women children. That is the scheme which applauded by throughout the world. They applauded the scheme which is giving the protecting. And also,
police forces. If you take police forces, the role of the women is very important. For that, all women police stations in Tamil Nadu first established by under President Amma at that time in Tamil Nadu. And also women commandos also in police service also implemented in Tamil Nadu. And also giving for education is very important. For that, first giving free bicycles and laptops and everything for women students, everything done by ADMK party at that time under the leadership of Amma. Same way, Madam, apart from that, I want to say, first of all, when MGR was alive, she made Satyavani Muthu, Srimati Satyavani Muthu, as the cabinet minister in Charan Singh government at that time. The first Dravidian so occupied such kind of position in central cabinet minister. That is the achievement of the ADMK party, how we have given the more power to the man. That is the first thing that cannot be forgotten. That thing. So like that, so I am telling, we have dreamt to implement. And also I am very sorry we have given a short time. At the same time, our party is a 4 members party. Still I got the late. But I have seen that some kind of difference what has happened in the House now. Most of the members spoke with the northern side. Southern states members are less because the empowerment is more given in southern states. That is because of Periyar movement. That is the achievement of that thing. That is what happened. That is why we are well aware of the thing, southern state. But most of the northern state, because the power has not given more. Now Modi ji has come forward to solve this problem and give more power to the women. That is why the bill has introduced and successfully it is coming up. Therefore, he is aware the seriousness of the situation, but political parties said, why could not they implement it 2014 onwards? I want to ask the opposition UPA government, 2010 they passed, except in the Rajya Sabha. Why they failed to introduce in the Lok Sabha and pass, remaining the 4 period, they would have done that. Why they have done, I could not understand. But they are blaming this government, they have not delayed. This is the point. This is how if you take the figure, I want to tell this, yeah, just 1 minute. माननीय सांसद आपका समय समाप्त हो गया. No, I want to finish. No, this bill was introduced 1998 in the Vajpayee period, and also 99 also introduced by Vajpayee period, 2002 also introduced by Vajpayee period, 2003 also introduced by Vajpayee period, but they could not support that bill can be passed, not passed. But at the same time, 2010 they introduced and passed. Why this UPA government, when DMK also part of the government, why they failed to do that, I could not understand. Therefore, DMK is a champion for the women and giving empowerment to women that then part of DMK and they are now facing is not seriously they have done. They are only saying this kind of things. I am proud that ADMK under Purshal, the NGR and the President Amma, Palaniswamy, we have given more power for the women, not the DMK party or the UPA government, and the NDA is government implementing. We are the party, that is why we are supporting the NDA government and also part of the government. Thank you very much. श्रीमती दर्शना सिंह जी. धन्यवाद उपसभापति महोदया. आपका समय 5 मिनट. माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया. महोदया, मैं बताना चाहती हूं कि ये मेरी मेडन स्पीच है. यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर ये बोला है और जिसको उन्होंने धरातल पर भी लाने का काम किया है. महोदया, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश अमृतकाल का उत्सव मना रहा है.
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिला आरक्षण बिल को नई संसद के प्रथम बिल के तौर पर पेश करना सभी महिलाओं के लिए गौरवान्वित करने का वाला क्षण है। महोदया, ये बिल महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कदम होगा और भारत के संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 38 में किए गए वायदे के अनुसार महिलाओं के लिए राजनीतिक न्याय की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। महोदया, यह बिल संविधान के इस मूल भावना का सम्मान है। इससे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की करोड़ों महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएं से मुक्ति दिलाई। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में 3,24,00,000 से ज़्यादा महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक संख्या है। महोदया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास का स्वामित्व परिवार की महिला को दिया जाना, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाकर उन्हें नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने का काम करना, इस तरह के साहसिक फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली सरकार ने लिया है। महोदया, मैं बताना चाहती हूँ कि देश की परंपरा एवं जीवन मूल्यों की रक्षा में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आज देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, देश की बेटियां सीमा पर सुरक्षा भी कर रही हैं। यहाँ तक कि अभी हाल ही में चंद्रयान-3 मिशन भी महिला वैज्ञानिक के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है, जिससे कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। महोदया, हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं को शुरू से ही विशेष दर्जा दिया गया है। इसी देश में वर्ष के 365 दिन में 18 दिन मातृशक्ति की देवी के रूप में पूजा की जाती है और अगर गणना करें तो देवों से ज़्यादा देवियों की संख्या मिल जाएगी। हमारे यहाँ विद्या, धन, शक्ति एवं शांति की अधिष्ठात्री देवियाँ ही हैं। इतना कुछ होने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज यह बिल बहनों को और मजबूत करेगा। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक विषय रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये एक संवेदना का विषय है। महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले एक बड़ा ही अराजकता का माहौल था। हमारी बेटियां, महिलाएं असुरक्षित थीं। अपराधियों के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए और उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और आज उत्तर प्रदेश में बेटियां और महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महोदया, महिलाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं, करुणामयी होती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि महिलाओं के विकास के साथ साथ अब समय आ गया है कि महिलाओं के नेतृत्व में
इस देश का विकास हो, हमें इस दिशा में काम करना है। माननीय उपसभापति महोदया, महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले, इससे पहले 4 बार भाजपा सरकारों द्वारा लाया गया, लेकिन विपक्ष की नकारात्मक सोच एवं उनकी खराब नीयत के परिणाम स्वरूप ये कभी पारित नहीं हो सका। लेकिन 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के सुअवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के पक्ष में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक लाने का साहसिक एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, अर्थात नारी समाज की आदर्श शिल्पी है। महोदया, मेरी ये मेडन स्पीच है, बस थोड़ा सा समय और आपका लेना चाहूँगी मैं। देश में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होगी, तब इस देश की समस्त मातृशक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सदैव ऋणी रहेगी। महोदया, आज का भारत नया भारत है। आज का भारत युवा भारत है। आज का भारत ऊर्जा से भरा भारत है। आज का भारत महिला सशक्तिकरण का भारत है। आज का भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता कर विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत है। अतः अंत में मैं सभी महिलाओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूं कि आपने हम सभी महिलाओं को सम्मान से जीने का बारंबार अवसर प्रदान किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के अधिकार के समर्थन में लाए गए इस महत्वपूर्ण बिल का मैं समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। श्री J.K. वासन, माननीय सदस्य J.K. वासन। Sir, I stand here to support this important bill on behalf of my party, Tamil Maanila Congress, Mupanar sir. Sir, for the past 4 decades, many governments have been trying to pass the examination for bringing this bill positively. Unfortunately, sir, they have failed for various reasons. Today, madam, the Bharatiya Janata Party, its government, has passed the examination of winning the women's bill being passed in both the houses. This was the dream come true for our women in the country. I thank the government and support the government on this historic day. Madam, responsibility and empowerment are the need of the hour today after this bill is passed, which our forefathers of the nation wished. I am sure this will be achieved through the continuance of this government after the next election. Especially, madam, this bill is being passed at the 75th year of the Amrit Kal, which is very special. Today, our women in the country are achieving exemplary goals in various fields. Army, Navy, and Air Force. They are in the top positions and doing wonders. They are examples for the world. Yesterday we discussed about women's role in space and science. Women in India excel in all fields. We see women in various capacities. Today, the first person of the country is the President of India, governors, ministers, party presidents are all women today. Unfortunately, legislation, we are very low. That is why we have come forward to introduce this important bill. Madam, to conclude, I wish to quote the famous and apt lines of poet Bharati, a popular and immortal poet of Tamil Nadu. Pattangal aalvadum, sattangal seivadum, parinil
பெண்கள் நடத்த வந்தோம். ஏட்டு அறிவினில் ஆணுக்கிணங்க பெண் இளப்பிள்ளை கானொன்று கும்மியடி. To put in English, the immortal poet Bharati says, women have come to govern offices and enact laws. The world will prosper in wisdom if we respect women as equal to men. The value of men is to protect women's self-esteem. Then there will be nobody else to degrade. And now the time has arrived to fulfill our long-pending aspiration. As the representative and leader of Tamil Maanila Congress, Moopanar, I support this bill wholeheartedly and thank the government, the Prime Minister, for bringing this bill at the right time. Thank you very much. Thank you. Srimati Sangeeta Yadav. माननीय सभापति जी, आपने मुझे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। और यह मेरी मेडन स्पीच है, तो आपका संरक्षण भी चाहूँगी। माननीय सभापति जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश की आधी आबादी की तरफ से मैं साधुवाद देती हूं कि लोकतंत्र के इस नवनिर्मित मंदिर में पहला अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को दिलाने को लेकर वो आए हैं। माननीय सभापति जी, कल हम लोकसभा में सुन रहे थे माननीय गृह मंत्री जी को, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देना या सशक्त करना कभी भी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा नहीं रहा है। अरे नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम तो महिलाओं की मान्यता से, सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मातृ शक्ति को सम्मान देने वाला अधिनियम है, महिलाओं के लंबे संघर्ष को ख़त्म करने वाला अधिनियम है। और माननीय सभापति जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से 2017 से लेकर 22 तक MLA रही, तो इन 9.5 वर्षों में कैसे महिलाओं के जीवन स्तर में क्या सुधार आया है, ग्रामीण स्तर पे मैं बात करना चाहूँगी, ग्रामीण स्तर पे, और कैसे उनकी सोच बदली है, कुछ अपने एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहती हूँ माननीय सभापति जी। और ये भी आंकड़ों के साथ बताऊँगी कि कैसे हमारा महिलाओं को आगे बढ़ाना राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं माननीय सभापति जी, आधुनिकता का नारा भी लगा रहे हैं, परंतु जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे आते हैं तो सत्ता चुप हो जाती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल राइट टू हाइजीन से है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी था राइट टू हाइजीन। सैनिटरी पैड के बिना यह कभी भी संभव नहीं था। हमारे देश को महिला प्रधानमंत्री भी मिली थी, लेकिन कभी भी ये चर्चा का विषय नहीं रहा। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मोदी जी ने 2020 में लाल किले से 15 अगस्त को सैनिटरी नैपकिन का उल्लेख किया और उसके बाद से यह एक अभियान बना और हजारों लाखों महिलाओं को जाने कितनी बीमारियों से हमने बचाया है। तो माननीय सभापति जी, मैं इसी में एक और उदाहरण जोड़ना चाहूँगी। मैं अब जब विधायक थी तो बहुत ग्रामीण स्तर पर महिला और पुरुष कोई भी हो, बीमारी के लिए हम लोग पैसा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिलाते थे। तो इसमें पुरुष भाई थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे, जो मेरा अपना अनुभव है मैं वही बता रही हूँ। जब पति को कोई बीमारी हो जाती थी और पैसे दिलाने के लिए पत्नियाँ आती थी तो बोलती थी, बहनी पैसा मिलने में टाइम नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो बताना, मैं अपना खेत बाड़ी बेच दूंगी, लेकिन इनको ठीक कराऊंगी। लेकिन जब वही गंभीर बीमारियों से हमारी बहनें पीड़ित होती थी और पुरुष भाई आते थे तो क्या बोलते थे, अरे बहनी टाइम लगेगा क्या, तनी और मेहनत करा, थोड़ा सा और मेहनत करे, पैसा मिलेगा तो इलाज शुरू करवा देंगे। ये सोच में अगर किसी ने फ़र्क डाला है तो वो आयुष्मान कार्ड योजना ने डाला है। माननीय सभापति जी, आज आयुष्मान कार्ड होल्ड, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ तो जगह जगह मुझे मेरी बहनें मिलती हैं और वो कहती हैं कि आयुष्मान कार्ड का लाभ अधिकांश महिलाएं उठा रही हैं और कैसे उठा रही हैं। माननीय सभापति जी, स्वच्छ मिशन भारत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी बहुत चिंताजनक बात थी कि देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी 11 करोड़ शौचालय हमने परिवारों को पहुंचाए हैं। कई बार मैं विपक्ष को सुन रही थी, लोग कह रहे थे बीजेपी वाले हैं छोटी बात करते रहते, वाकई में छोटी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये छोटी बात पहले आप लोगों ने कर दी होती तो हमें कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ती। मैं उज्ज्वला की बात करूँगी, उसमें भी एक छोटा सा आपका अनुभव बताऊँगी।
जब कभी ग्रामीण क्षेत्र में खाना बनने का समय ना हो और हम लोग पहुंच जाते थे और कोई महिलाओं से कह देता था कि चाय बना दो, तो कोई कह तो कुछ नहीं पाती थी, लेकिन चूंकि मैं घर के अंदर जाती थी तो मैंने उनके चेहरे पर वो झिझक देखी थी, वो परेशानी देखी थी। लेकिन आज जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं अरे बहनी बैठो, मोदिया का सिलेंडर है। तो मतलब ये जो बदलाव है जीवन में, ये मैंने अपने अनुभव देखा है, सुना है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे हमने गैर राजनीतिक कार्य महिलाओं को सशक्त करने के लिए किया है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आती है और जब माननीय प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं तो मैंने देखा कैसे लोगों ने अपने गाड़ियों के पीछे लिखा, अपने घर की दीवार पे लिखा, सोशल मीडिया पे अपने डीपी बनाया। और उसी की देन है कि हमारा घरेलू हिंसा कम हुआ है, सेक्स रेशियो बढ़ा है, महिलाओं के प्रति सोच बदली है। और जब सेल्फी विद डॉटर शुरू हुई तो बच्चियों का समाज में सम्मान बढ़ा है। एक और अनुभव बताती हूँ माननीय सभापति जी, 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जनधन खाता योजना आई। उस समय मैं विधायक नहीं थी, पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता थी और मैंने गांव-गांव में जाके कैंप लगाना शुरू किया। तो जब महिलाएं घूंघट में आती थी तो वो यकीन नहीं करती थी कि एक फार्म भरने से खाता खुल जाएगा। अरे नहीं बहनी, लेकिन जब खाते खुल गए तो वो लोग मुझे बहुत कई बार धन्यवाद देने भी आई। और आज 52 करोड़ लगभग जनधन खाते के अधिकांश लाभार्थी हमारी महिलाएं हैं। और जब ये खाता खुला तो मखौल भी उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज जब बिना लीकेज के पैसे पहुंचते हैं तो इससे हमारे पीएम साहब की दूरदर्शिता हमें दिखाई देती है। इसी की अगली कड़ी मुद्रा योजना है। हमारे मोदी जी ने सोचा कि महिलाओं का बैंक में आना जाना शुरू हो गया है, अब अगली कड़ी ये है कि अब वो अपना कुछ लोन लेके अपना व्यापार भी शुरू करें। आज मुद्रा योजना के 70% जो लाभार्थी हैं वो हमारी महिलाएं हैं। माननीय सभापति जी, मैं अभी बेटियों को तो बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा आंकड़ा बता देना चाहूँगी कि कैसे हम ग्रामीण स्तर पे और राजनीतिक स्तर दोनों पे चल रहे हैं। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण में विशेष बल दिया है, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण तबके की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में कार्य किया है। वहीं पर अपनी मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा महिला मंत्रियों के अब तक का रिकॉर्ड है रखकर उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। 8 महिला राज्यपाल बनाने का रिकॉर्ड भी हमारी सरकार के पास भी है। देश के सर्वोच्च पद पर आज माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय सभापति जी, मैं सबसे निवेदन भी यहाँ करना चाहूँगी कि हम ये इतिहास रचें और ये जो हम राजनीतिक एजेंडे के रूप में नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बिल लेके आए हैं उसमें सभी का समर्थन मिले। मैं अभी सुन रही थी सुबह से, चूँकि मेरा अंत में काफ़ी लास्ट में टाइम आया है तो अच्छा सुनने का मौका मिला। लोग कह भी रहे थे कि ऐसे बिल की क्या ज़रूरत है। उसमें मैं कुछ 2-4 बातें रखना चाहूँगी माननीय सभापति जी। आज भी हमारे जब देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हमारा संकल्प है कि देश को 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाना है। इस उद्देश्य के लिए माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया है। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी देना बहुत ज़रूरी है। माननीय सभापति जी, लोकसभा के 539 संसद सदस्यों में से मात्र 82 ही महिला सांसद हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह भी 2019 के चुनाव में ही अभी तक सर्वाधिक भागीदारी है। माननीय सभापति जी, यही हाल देश की विधानसभाओं का भी है। लगभग पूरे देश में विधानसभाओं में महिला विधायकों का औसत केवल 8% है, संसद में 15% से भी कम है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि आधी आबादी को उनका हक दिलाने की बातें तो बहुत ज़ोर ज़ोर से की जाती रही हैं, लेकिन बराबरी का दर्जा कभी नहीं दिया गया। हर क्षेत्र में महिलाएं आज परचम लहरा रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्पेस हो। अब यह सोचने का समय है कि प्राचीन भारत की गौरवशाली नारी की गौरवशाली यात्रा कहाँ पीछे रह गई। हम तो धन के लिए लक्ष्मी जी को, विद्या के लिए सरस्वती जी की पूजा करते रहे हैं और इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, भारत में अर्ध नारीश्वर के रूप में सम्मान पाने वाली स्त्री पुरुषों से कैसे पीछे रह गई, ये हमारे सोचने का समय है। और उसी परिणति के रूप में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हमारी पार्टी लेके आई, हमारी सरकार लेके आई है।
आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जैसा कि हमने G20 की अध्यक्षता में देखा भी। G20 की बैठक में महिला नेतृत्व की भागीदारी पर चर्चा हुई। ऐसे में यह अति आवश्यक है कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का हर संभव कानून बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ मेरी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टी के भी नेतागण मौजूद हैं। आज जब किसी भी राजनीतिक पार्टी में हम देखते हैं तो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पुरुषों के बराबर ही दिखाई देती है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अब भागीदारी पुरुषों के बराबर है। अब यह कार्यकर्ता के रूप से जनप्रतिनिधि बनने का सफ़र हर महिला का एक सपना है, एक इच्छा हो रहा है। और मैं ये चाहूँगी कि महिलाओं की इस इच्छा पूरी करने में पूरा सदन सरकार का सहयोग करे। मुझे हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पद पर महिला आरक्षण तो पहले से ही लागू है। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूँगी कि हमारी महिला बहनें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 1971 में यह महज 48% थी, 2014 में ये 67% से भी ज़्यादा हो गई है। जागरूक मतदाता, बस मैं मेरी मेडन स्पीच है, बस 1-2 मिनट लूंगी बस। आपको ऑलरेडी मेडन स्पीच के तहत 10 मिनट समय मिला, प्लीज 30 सेकंड्स, क्योंकि कुल 70 वक्ता हैं, अभी बहुत लोग बोलने बाकी हैं। मैडम, मतदान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। अब यह हमारा समय, अब हम ये समय आ गया है कि आधी आबादी को उनको राजनीतिक सहभागिता का समान अवसर मिले। माननीय सभापति जी, अभी मैं सुन रही थी तो लोग कह रहे थे कि लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा 10 साल महिला थी, लेकिन महिला बिल नहीं आया। प्रधानमंत्री भी महिला थी, राष्ट्रपति भी महिला रही, लेकिन ये बिल नहीं आ सका। तो मैं आज अपने सभी लोग निवेदन के साथ इस बिल को समर्थन करें। You have 3 minutes. इसी निवेदन के साथ अपनी Nothing is going on record now. 3 minutes only, sir. आदरणीय उपसभापतिज्यू, आज म नारी शक्ति बन्धन 128 संशोधन बिल 2023 को समर्थनमा म यहाँ उभिरहेको छु सिक्किम जनताको पक्षमा। र यो ऐतिहासिक दिनमा भारत सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथमा सारा भारतका नारी या चेली सबलाई बधाई दिन चाहन्छु, किनभने आज यो बिल पारित भइहाल्छ, भोलिदेखि यो कानुन हुन्छ। अनि साथमा सिक्किम राज्यमा नारी सशक्तिकरणमाथि या अथवा उत्थानमाथि थुप्रो काम भएको छ। विशेष गरी एसडीएफ सरकारको शासनकालमा 50% आरक्षण पञ्चायत र अर्बन लोकल बडिजमा भएको छ। र आज त्यो साथसाथमा 33% सरकारी कर्मचारीमा नारीहरूलाई सीट आरक्षण भएको छ। अनि यो प्रकारले आज यो ऐतिहासिक दिनमा म भारत सरकारका सारा नेतालाई या सरकारलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, लामो समयदेखि थातीमा रहेको लिम्बू र तामाङ समुदायको 2003बाट माग गरेको विधानसभामा सीट आरक्षणको मागलाई पनि यो साथसाथमा हेरचाह गरिदिनु भएको खण्डमा सारा सिक्किमे जनता भारत सरकारसँगै हामी अवारी रहनेछु। र यो बिलको साथमा हाम्रो लिम्बू तामाङको पनि अलिक केही रेखदेख भइदियोस् भनेर म तपाईँ सबलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। र यो साथमा आजको बिल जो लेख छ त्यसको निम्ति हामी सारा सिक्किमे जनताको तर्फबाट हामी समर्थन गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही राख्न चाहन्छु। जय सिक्किम, जय सिक्किमे जनता। बहुत धन्यवाद हिसेला चुंगुपा जी। डॉक्टर कल्पना सैनी। मैं आज लोकतंत्र के नए घर, जिसमें आत्मा वही पुरानी है, मैं नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूँ। आदरणीय उपसभापति जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर, जो स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बनेगा, बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी सदस्य का विरोध होना चाहिए। ये हो सकता है और हुआ भी है कि विभिन्न दलों ने इसमें अपना क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। मैं अपनी बात को, चूँकि मेरे पास सीमित समय है, मैं बहुत संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगी। जब सत्ता थी, अंतिम छोर पर बैठी भारत की उस संघर्षशील नारी के लिए दूरगामी नीतियां बना करके प्रयास नहीं किए गए और न ही अपने भारत की इस आधी आबादी को संरक्षण देना चाहा। और तो और मेरे देश की गौरवशाली महिलाओं के इतिहास की भी चर्चा नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने न सिर्फ महिलाओं के लिए सोचा बल्कि अपनी सरकार की दूरगामी नीतियों के द्वारा उन्होंने उस महिला के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। मुझे याद है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से घर घर जाकर छोटी बच्चों के स्कूल में दाखिले का अभियान चलाया, वो इस तरह की हर छोटी शुरुआत से लेकर जीवन को बदलते हुए नारी के आज वो इस विधेयक तक आ पहुँचे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालांकि आज भी विपक्ष ने भ्रमित करना चाहा, न्यायोचित रास्ते का विरोध करते रहे, पर मैं अपनी बात को संक्षिप्त में ही, पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनमें व्यक्त करते हुए आपका समर्थन चाहती हूँ। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो घर घर शौचालय बनवाकर महिलाओं के अभिशापित जीवन से मुक्ति दिलाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के द्वारा बेटी का जीवन संवर्धित संरक्षित करने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो उज्ज्वला योजना लाकर धुएं से घुटते जीवन से बचाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। अरे प्लीज। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर बराबरी का स्तर दिलाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो प्रधानमंत्री आवास योजना से घर की आधिकारिक स्वामिनी बनाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो किशोरियों गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योजना चला, स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो कोसों पैदल चलकर भी प्यासे जीवन से बचने का हर नल में जल जल जीवन मिशन द्वारा मजबूर होने से बचाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो तुम्हारे गांव के घर घर में बिजली व राशन पहुंचाकर जीवन को सुगम बनाने का माध्यम कौन बना? मोदी जी। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो संघर्ष भरे अनुसूचित जनजाति जीवन को महामहिम तक लाने का माध्यम कौन बना? प्लीज कंक्लूड, आपका समय खत्म हुआ मैडम, प्लीज। सर एक मिनट। हे संघर्षशील भारत की नारी, मुझे बताओ तो मैं गांव गली की ओबीसी महिला आज उच्च सदन की सबला बन बैठी हूँ, इसका माध्यम कौन बना? प्लीज प्लीज खत्म हे करें। संघर्षशील भारत की नारी, मुझे मैं बताओ दूसरे तो स्पीकर को बुलाऊंगा मैडम, प्लीज। आज महिला आरक्षण बिल से
राजनीतिक अधिकार सुरक्षित होंगे, इसका माध्यम कौन बना। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। Honorable Jose K. Mani, you have 3 minutes, sir. Thank you, sir. Sir, about 12 years back, during the year 2011, I had an opportunity to participate in the Inter-Parliamentary Union meeting in Switzerland, along with the Lok Sabha Speaker. There I was asked to speak on a plenary session, and the topic was women empowerment. I was given a 5 minutes time, and I spoke about the greatness of India. I spoke about the first citizen of India, the president, a woman, Pratibha Patel. I spoke about the Lok Sabha Speaker, the then Lok Sabha Speaker, Meera Kumar. I spoke about the Chief Minister of Delhi, Sheila Dixit. I spoke about Jayalalitha, the CM of Tamil Nadu. I spoke about Mayavati. And I came to my small, beautiful state of Kerala. I said, the Godsom country, and the most literate state in India. And we have a reservation for the local body of 50%. And we have the best governance in the local body in India. Then I came to the subject that we have introduced in the Rajya Sabha about a 33% reservation and the discussion. And that time, my 5 minutes, 5 minutes time has been elapsed. And I was exhausted. My microphone was switched off, and I came back to my chair. And the other next speaker was called on. But the co-chairman was a lady. She came to me, to my chair, and asked, what did you say last? Did you pass it in the Rajya Sabha and Lok Sabha? I said, no, it has been introduced. Then she told me that you should pass it at the earliest and you should take the initiative. I was just thinking, why in other country, a lady is asking me to pass a legislation. It is not of her concern. But I later came to know that being in the largest, the biggest democratic country in the world, when we pass a legislation like the Women Empowerment Reservation for the women, there will be a compulsion for the other democratic country to pass the same bill. Having said that, the whole world is watching. Today in Rajya Sabha, yesterday in the Lok Sabha, not only the bill passing, but are they going to implement it? How candid, how sincere are the government's approach in implementing it? If the Indian citizens are watching this, my only request is, you need to implement immediately 2024 election itself. What is the hassle? You say you need to go for the census and for the delimitation. You have the list of all the electoral, the female and male voters of 2019. 2 minutes, sir. No, always sir. when I speak, you are very strict. 30 seconds. I think the men should speak more for the ladies than the ladies. So last few seconds, sir. See, you call us this for the special session. If it is a special session, you need to implement a 2024. Otherwise, you should not call in for the normal session in the winter session. Why should you call here now? So I am just asking the sincerity of it. Please see that the bill is passed during the 2024 election itself. Thank you so much. Nothing is going on. Manya Vivek Thakur, please. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। If not us, then who? If not now, then when? ये शब्द मेरे नहीं, ये कथन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी का है, जो उन्होंने तब कहा था जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। आज हमारे समक्ष भी यही प्रश्न है, इफ नॉट अस देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। भारत की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए आज़ादी के अमृतकाल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। आदरणीय सभापति महोदय, 26 वर्ष हो गए जब इस संकल्पना ने संशोधन का आकार लिया था,
जब भारत अपने आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण कर चुका था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पबद्धता का ही परिणाम है कि यह संशोधन पास होकर मूर्त रूप ले रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, क्या केवल ये बोलने से कि ये बिल हमारा है आपकी जिम्मेवारी पूर्ण हो जाती है? तेरा मेरा करने से क्या भला होगा? उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी न मेरा मजाक होगा, गुरूर न कर शाहे शरीर का, यह शरीर भी एक दिन खाक होगा। आदरणीय सोनिया जी की कल की लोकसभा के बहस में एक और बात कही जिससे मैं असहमति व्यक्त करता हूँ। कल लोकसभा में उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में ये कहा कि धुएं से भरी रसोई से लेकर स्टेडियम की जगमगाती रोशनी तक स्त्री का सफर बहुत लंबा है। यह आपकी सरकारों में जरूर हुआ करता था जब स्त्री की रसोइयों से धुआं उठता था, आज उसकी रसोई उज्ज्वला से उज्जवल। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां अमेरिका जैसे राष्ट्र को महिलाओं को वोटिंग राइट देने में 120 वर्ष लग गए, वहां भारत की संविधान सभा ने महिलाओं को शुरुआत से ही समान मताधिकार दिया। क्या इसके बाद हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है? क्या हम आश्वस्त हो चुके हैं कि हमने महिलाओं को उनके अधिकार दे दिए हैं? नहीं, सितारों के आगे जहां और भी। सभापति महोदय, इस बिल का भी एक जीवन है। आयु 26 साल और इस जीवन में इस बिल ने काफी उतार चढ़ाव, धोखा, पॉसिबल टू इम्पॉसिबल जैसा ही इसका जीवन रहा है। Please take your seat. Take your seat, please. Please. Please take your seat. Please take your seat. आप बोलो। और इस जीवन में इस बिल ने काफी उतार चढ़ाव, धोखा, पॉसिबल टू इम्पॉसिबल जैसा ही जीवन रहा, किंतु आज इसके 26 साल के तप का फलीभूत होने का ऐतिहासिक दिन आज आ गया है। लेकिन इसके अनुभव और त्याग की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। आदरणीय सभापति महोदय, ये संशोधन लाना क्यों जरूरी था, इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। महिलाओं के लिए अक्सर ग्लास सीलिंग की चर्चा होती है। ग्लास सीलिंग अर्थात वो बाधाएं जो दिखाई नहीं देती। राजनीति के संदर्भ में ये ग्लास सीलिंग की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ ज़्यादा होती है और उसकी बानगी में पूर्व के प्रमुख नेताओं के बयान के द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहूँ। एक हिंदी भाषी राज्य के पार्टी के संस्थापक ने महिला आरक्षण बिल का जब विरोध किया तो कहा कि सिर्फ अमीर और शहरी महिलाओं को फायदा होगा और गरीब गांव की महिलाओं को नहीं, क्योंकि वो आकर्षक नहीं होती। और महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट में भी सीटी बजाने वाले लोग आएंगे। ये दुखद वाकया हो चुका है। इसके साथ जदयू के हम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए परकटी महिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और लालू जी ने अपने सांसद से बिल को ही सदन में फड़वा दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि ग्लास सीलिंग के कैसे उदाहरण हैं। ये वाकया सब हो चुका है। राजनीति में ग्लास सीलिंग का एक और उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तमिलनाडु विधानसभा में स्वर्गीय अम्मा जी के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अगर सदन में 33% महिला विधायक होती तो तमिलनाडु सदन का यह दुखद वाकया भी नहीं होता। आदरणीय सभापति जी, यही ग्लास सीलिंग है जिसको दूर करने का प्रयास ये बिल करता है। ऐसा ही एक और उदाहरण मुझे याद आता है जो सीधे तौर पर इस बिल से जुड़ा हुआ है। जब स्वर्गीय गीता मुखर्जी ने बिल को प्रस्तुत किया था और लेफ्ट के हमारे साथी मौजूद हैं, कितना विरोध उनको झेलना पड़ा था, परंतु दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिला सांसदों ने उनका साथ दिया और उसमें सबसे प्रमुख नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का था। उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि ये बात कि अगर आप रोड पर इस बिल को लेकर संघर्ष करेंगे तो मैं आपके साथ। आप बोले। ये तब होता है जब सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो उनकी सामूहिक क्षमता भी बढ़ती है। कल लोकसभा की चर्चा में भी और आज सदन में भी चर्चा के दौरान ये बात विपक्ष के साथियों ने रखी कि आप बिल को कब लागू करेंगे, तारीख बताओ, तारीख कब बताओगे।
और इसी से मुझे राम मंदिर आंदोलन का दौर याद आता है सभापति महोदय, जब हमसे ये सवाल पूछा जाता था हम पर तंज कसते हुए, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज क्या स्थिति है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं अपने मित्रों को यही बताना चाहूंगा, तारीख बताई नहीं, तारीख बनाई जाती है। खत्म कर रहे हैं विवेक जी। विवेक सर जी, मुझे 10 मिनट बोला गया था सर। प्लीज आपके मुंह से तो ये बिल्कुल समय ओवर हो गया। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ये शोभा नहीं देता सर। बीच में तो ये स्क्रीन का लफड़ा शुरू हुआ कि जो 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण का कानून तो पारित कर देते हैं, परंतु लोकसभा में अलायंस के बहुमत होने के बावजूद इसको अटका देते हैं। मैं अब दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। विवेक जी प्लीज 2 मिनट सर। नो कंक्लूड कर रहा हूँ सर। मैं बुला रहा हूँ दूसरे 30 सेकंड्स प्लीज। सर इस महिला सशक्तिकरण की योजना के 9 साल के बेमिसाल में सर एस्पिरेशन बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा और महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका जो आई है, इसका कई उदाहरण है जिसकी चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है। और ये प्रधानमंत्री जी के वुमेन डेवलपमेंट के बजाय वुमेन लेड डेवलपमेंट के स्पष्ट विजन का यह सूचक है। तारीख मांगने वालों को संविधान पढ़ना चाहिए और मेरा यही कहना है कि 7 सिफारिशें। Please speak. Your speech will go on record. सभापति महोदय, nothing is going on record. No, please, Doctor. Thank you, Deputy Chairman, sir. On behalf of my party, Patali Makkal Katchi PMK, I rise to support this bill. Sir, in India, till about 100 years ago, women weren't allowed to go out of the houses. Till about 75 years ago, women weren't allowed to vote. Till about 50 years ago, women weren't allowed to go to colleges. Till about 25 years ago, women weren't allowed to go to work. Today, it has all changed. Women are being empowered, but at a very, very slow pace and in very few numbers. Sir, down 25 years, I'd like to see a situation in India where women are so empowered that men will try to bring in a similar bill in Parliament for themselves in this August House. Sir, after the 73rd and the 74th constitutional amendment brought in 1992 and 93, we had the first local body elections in 96. During that elections, many of the party cadres had made their wives, their daughters and their mothers as panchayat presidents or samiti presidents or district zilla parishads, thinking that they could control them through proxy. But then I saw after 2 years, the women acted independently. By the end of their tenure, they did wonderfully well in their positions they held, and some of them got re-elected again and went on to become MLAs and MPs and ministers. So if you give women an opportunity, they definitely will excel in whatever they are doing. So I have 2 requests to the government. One, to kindly bring in the OBC representation in this bill. Either today or at least during the winter session, bring in an amendment so that OBC women are equally represented, because they comprise 60% of Indians' population, and without the empowerment of OBC women, India can't develop. Second, sir, we have 3 pillars of democracy: the legislature, the executive, and the judiciary. We have fulfilled the demand of the legislature because we have a reservation for women in the local bodies, and today we're bringing in for MLAs and MPs. I kindly request the government to bring in reservation for women in the executive as well as the judiciary also. After 75 years post-independence, we still haven't had a woman Chief Justice of India, and there are very few women judges in the High Court and the Supreme Court. We need more women officers in IAS, IPS, IPS, IFS, and defense sector. And definitely we need, so the government should bring in and act an amendment, constitutional amendment, so that women are empowered in the executive as well as the judiciary. Sir, I would like to end with the saying, if boys get education, only he is educated. But if girls get education, the entire family gets educated. And I would urge upon the government to empower women, respect them, and give them empowerment in all sections of society. And that is when India will become a developed country. Thank you very much. With these words, I support the 128th Constitutional Amendment Bill 2023. Thank you, sir. Thanks for confining yourself to time. Please, Sri Biplav Kumar Dev, 3 minutes.
माननीय विप्लव कुमार देव, माननीय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड प्लीज। माननीय विप्लव कुमार देव 3 मिनट्स, 3 मिनट बोलिए। माननीय आप बोले आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। नारी शक्ति बंधन विधायक 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जब आज घर से आ रहा था तो मेरे 2-4 मित्र मिले हैं, पुरुष स्वाभाविक होगा, तो मुझको बोल रहा था आप सुना आज बोलने वाले हैं, तो बाद में आपका क्या होगा आप लोगों का। तो मैं तब से सोच रहा हूँ मेरे मित्रों को जाके क्या बताऊँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरे माँ ऐसा सोच लेती तब विप्लव यहाँ कहाँ पहुँचता। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस सभागार में देखा हूं सुबह से अपने अपने दल के नेता का नाम सब लोग लेते हैं, हमने किसी ने विरोध नहीं किया। जैसे ही मोदी जी का नाम लेते हैं तो जैसे सांप सूंघ जाता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सुबह से आप चेयर को एड्रेस करिए शाम प्लीज। तक आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप इधर प्रदेश बोलिए, के नेताओं का नाम लीजिए, आप इधर बोलिए लीजिए, किंतु प्रधानमंत्री का नाम आते ही जैसे आसमान टूट पड़ता है। मैं आज बताता हूं, मैं बताता हूं आपको, सुनने का क्षमता रखिए। हमने छोटे से सुना जो देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो रहा है। असलियत में देश में आर्थिक और आर्थिक और सामाजिक सुधार किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाया है। सुन लीजिए, सामाजिक सुधार के बाद बहुत लोगों ने बोला है, सामाजिक सुधार के बाद नरेंद्र भाई मोदी बोलता है करता है। 3 तलाक उन्होंने ही खत्म किया। आर्टिकल 370 अमित भाई शाह जी गृह मंत्री बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व ही सुधार हुआ है। राम मंदिर बन रहे हैं, ये सामाजिक सुधार हुआ है। आज महिला आरक्षण बिल आया है, ये सामाजिक सुधार हो रहा है। अरे मातृशक्ति जब तक नहीं बनेगा 30 तो भारत माता का जय कैसे हो सकता है। 30 सेकंड्स विप्लव जी प्लीज, टाइम कांस्टेंट। उपसभापति महोदय प्लीज, मैंने ये बात बताना चाहता हूँ विरोधी पक्ष के मेरे कांग्रेस से मित्रों को, हमने कुछ नहीं बोला, मैं बताऊंगा। प्लीज आप इधर चेयर को एड्रेस करिए। जी सुनिए, कपिल सिब्बल जी आए थे, आके 3 मिनट वक्तव्य रखा। उन्होंने बोला ये महिला आरक्षण बिल में कमी है, ये 29 तक भी नहीं कर सकता है, और 29 तक नहीं करेगा तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देगा क्या नहीं। इसका मतलब कांग्रेस ने मान लिया 24 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ही रहना। धन्यवाद, धन्यवाद हमने नहीं बोला, विप्लव जी, सिब्बल जी ने बोल के गया। विप्लव जी धन्यवाद। इसलिए आप लोगों ने मान लिया, दूसरे स्पीकर महिला आरक्षण हो कोई भी बात हो हम ही के लोगों को करना है। और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ भारत के सभी महिला को, इस सभागार में जितने भी महिला है सबको भी नमन करता हूं। धन्यवाद। जो आप लोग मेरे जगह भी लेना चाहते हो राज्यसभा में ले लो, तब भी महिला को आने दो। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री रवंग वरान नार जारी 3 मिनट्स। 3 मिनट सर। धन्यवाद सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान 128 संशोधन विधेयक 2033 पर बोलने की आपके अनुमति के लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य विधानसभा सहित लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 कोटा प्रदान करने का प्रावधान करता है। विधेयक का इरादा स्पष्ट रूप से
महिला सशक्तिकरण के माध्यम से नारी शक्ति को आगे लाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना से 2047 तक विकसित भारत हासिल करना है। हालांकि महिला आरक्षण का विधेयक संसद में कई दशकों से लंबित है और लंबित होने का कारण केवल अपेक्षित संख्या प्राप्त न कर पाना था। मुझे खुशी है कि आज इसे पारित करने के लिए मोदी जी द्वारा इसे संसद में नए सिरे से लाया गया है। मैं इस विधेयक को मंजूरी मिलते ही महिलाओं के लिए राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण मंच में जनप्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का द्वार खोलेगा। मैं ST/SC समुदाय के लिए भी आरक्षण के प्रावधान पर सहज महसूस करता हूं और इससे दलित समुदाय को महिला सशक्तिकरण का द्वार खोलेगा। मैं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी रिवाइवल UPPL के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके साहसिक कदम के लिए धन्यवाद, जिससे महिला शक्ति मजबूत होगी। मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं, यही सही समय है। समय मोदी जी का इंतजार कर रहा था और मोदी जी किसी का इंतजार ना करते हुए कर दिखाया। यदि हर राजनीतिक दल सचमुच महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं तो महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा एक बार सर्वसम्मति से हल किया जाना चाहिए और पारित किया जाना चाहिए। मैं भारतीय महिलाओं को अभिनंदन देना चाहता हूं। आज नया संसद से नया एक अधिकार मिलने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर K. लक्ष्मण 3 मिनट 3 मिनट्स। Deputy Chairman, sir, it is indeed a privilege for me and feel honored to stand in the support of this Women's Reservation Bill, which is supposed to be an historical bill which can be written in golden letters of Indian annals. At the outset, I would like to thank our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, for bringing out such an important बिल फॉर वुमेन रिजर्वेशंस। नव भारत के निर्माण के लिए नया संसद का भवन के अंदर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहला बिल लाया गया। ये मोदी जी को धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में संभव इसीलिए हुआ, कई लोग तो कई साल से प्रयास किया जा रहा पर किसी से मुमकिन नहीं हुआ। मोदी जी से मुमकिन हुआ, इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी सबका साथ सबका नारा लेते हैं तो समाज के भिन्न वर्गों के हित के लिए ये काम करते हैं। मैं कल से सुन रहा था, खास तौर से हमारे कांग्रेस भाई, हमारे बाकी क्षेत्रीय दल OBC समाज के बारे में इतने हमदर्द बता रहे कि मुझे समझ में नहीं आता। जब भी ये महिला आरक्षण का मुद्दा आया, क्यों OBC समाज का ये इसमें जुड़ा जा रहा है, समझ में नहीं आता। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा OBC विरोधी है। नेहरूजी ज़माने से लेकर आज राहुल गांधी तक एक इतिहास के पन्ने में अगर देखेंगे तो पता चलेगा, काका कलेक्टर कमीशन गठित किया नेहरू जी ने, तब से लेकर मंडल कमीशन तक जब जब समय समय पर OBC समाज का आरक्षण का मुद्दा आया, ये कांग्रेस ने हमेशा खिलाफ किया। कम से कम काका कलेक्टर कमीशन को दोनों सदन में चर्चा तक नहीं करते हुए किस तरह तंडे बस्ती में डाल दिया गया, ये कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने आज मगरमच्छी के आज आंसू बहते हैं। दे आर ट्राइंग टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टुवर्ड्स OBCs। उतना ही नहीं, ये कांग्रेस नेता ने ये मंडल कमीशन सिफारिश के समय में जब सदन में चर्चा हो रहा था, विरोधी दल नेता के नाते राजीव गांधी ने किस तरह
ये ओबीसी समाज का आरक्षण को विरोध किया। अरे मंडल कमीशन में तो कम से कम सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षा में आरक्षण प्राप्त करने लेके मुद्दा था, उसी के लिए वो माना नहीं था। ये आज राजनीति में आज आरक्षण का अगर कांग्रेस कल से जो चर्चा कर रहा, ये कोई मुमकिन नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं ये कांग्रेस हमेशा ओबीसी समाज को धोखा दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने आज जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज ओबीसी समाज के हित के लिए इतने योजना और इतने कार्य। 2 मिनट कंक्लूड प्लीज। और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये मोदी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का माहौल बन गया, ये सही नहीं पा रहे। हमेशा मोदी जी के जाति के ऊपर टिप्पणी करना या चाय बेचने वाले बोल के ऐसा टिप्पणी करना, चाय बेचना कोई गना नहीं है, देश को तो नहीं बेचा, चाय बेच के गरीब परिवार से आके ये देश को चलाकर आज विश्व पूरा आज मोदी जी के ओर देखने का आज मोदी ने देखा। और हमारे तेलंगाना से मैं जहां आता हूं, हमारा बीआरएस के नेता बता रहे हैं ये हम वो ओबीसी के और महिला के बारे में हमदर्द बता रहे, ये तो हमेशा मैं दूसरे तेलंगाना राज्य बनने के बाद एक महिला को भी वो मंत्रिमंडल में शामिल किया, आज बता रहे ये महिलाओं के बारे में। आज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री महेश जेठमलानी, माननीय महेश जेठमलानी प्लीज। श्री प्रफुल्ल पटेल। Sir, I've just been asked to speak. Okay. Get going. So, how much time do I have, sir? May I ask? How much time do you need? 15 to 20 minutes. How much time do you need? 15 to 20 minutes, sir. All right, you get 5 minutes. Go ahead. So I should have pitched my case higher. Honorable Chairman, with your kind permission, I rise to wholeheartedly support this most significant and path-breaking constitutional amendment, the 128th Amendment Bill 2023, also known as the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. So, our first experience with women's representation in a legislature was in the Constituent Assembly. 15 women members represented us in the Constituent Assembly. Out of them, 10 spoke, and all 10 of them did not pitch for reservation. They did not pitch for reservation, and they said that we want women's representation based on merit. So Hansa Mehta's speech summarizes the expectation of women members. We have never asked for privileges of reserved seats, quotas, or separate electorates. What we have asked for is social justice, economic justice, and political justice. So all members who spoke reposed great faith that men who have fought and struggled for the country's freedom would guarantee the rights and liberties of women. Now, sir, what is the experience up till 2014 when the NDA government first came to power? So a quick look, because questions have been asked, why not 2014? Questions have been asked, why are you unfolding your social welfare program over here? But, sir, a quick look at the objects, only to remind them of their promises in the Constituent Assembly, the hopes of the women in that Constituent Assembly, and the faith they reposed in the men of the future that rule this country. I read paragraph 2 only to remind them of what in their long tenure, including the 10 years of UPA government, they did not do. Government has taken a number of steps to bring Nari Shakti to the forefront through women's empowerment
and women-led development, resulting in substantial improvement in financial independence of women and availability of equal access to education and health. Government has also emphasized ease of living, especially for women, through various initiatives, including Ujjwala Yojana, access to toilets under Swachh Bharat Mission, financial inclusion through the Mudra Yojana, etc. However, the empowerment of women will require greater participation of women in the decision-making process as they bring different perspectives and enrich the quality of legislative debates and decision-making. So had they done their job in their tenure, the first 5 years was spent in empowering women through financial inclusion, social justice, and dignity. It did not strike them at all. The shame of open defecation did not strike them at all. It is us who did it in the first tenure. So the next question that is raised is, can this be implemented before 2024? So it can't. That's a given. Unless certain things have to be ignored. Every time there is reservation, and we are now talking about women's reservation, 3 procedures have to be followed. The latest census figures, B, readjustment of boundaries by a delimitation commission, and C, identification and notification of constituencies for the purpose of reservation, in this case women's reservation, by the Election Commission. Now it is possible that even if we could omit the first 2 steps by using the census of 1971, that is the census that prevails today as per the Constitution, that we go for boundaries, territorial boundaries of constituencies as per the census of 1971. In 1971, there were 55 crore people. Today, there are 1.4 billion people. So, you will have to go by a census, which is dated. You have twice the number of seats if you do a fresh census today. Secondly, the procedure of identifying reserved constituencies for women cannot be completed by February, March 2024 because there is a procedure involved. And consider if you want to avoid this procedure. The Election Commission has to follow a particular procedure. First of all, it publishes its proposal. This is even if you want to give up. You want to go by the present census, not wait for the next census. If you want delimitation to be dispensed with by the Delimitation Commission, you still have to go through an Election Commission identification process of reservation seats. Now that requires a procedure. The procedure is, first, publish proposals for constituencies to be reserved for women in the Gazette of India and the official Gazette of the state concerned. Secondly, specify a date on which such proposals will be further considered. And third, consider all objections which may have been received by it. What? I am not yielding, and why are you talking? Sir. Carry on. Sir, consider all objections. Consider all objections which may have been received by it, that is the Election Commission, before the date specified for its consideration, and hold one or more public sittings at such place or places in each state as it thinks fit. This is a mandatory procedure, and it accords to transparency, it accords to justice, it accords to the views of all stakeholders. The Commission also sits as a court when it identifies constituencies for reservation. It sits as a court and can take evidence on oath for determination of reserved constituencies. This procedure is meant to guarantee fairness, transparency, and natural justice to all stakeholders.
No member of either house would want to do away with this procedure before constituencies reserved for women are identified. The alternative is to leave it to the arbitrary diktat of the Election Commission with the inevitable discontentment and heartburn it will cause you people. Members who insist on implementation for the 2024 Lok Sabha election have, with respect, not understood the inbuilt safeguards of the reservation procedure, and a demand for haste will only be at your own peril. Now, is it possible before 2029 and at the earliest after 2024? Yes. On the other hand, the scheduled 2021 census was postponed due to COVID. It is supposed to commence in the beginning of 2024. There is now digitalization. There is now digitalization of the census procedure. The census can be completed expeditiously and possibly within 2024 itself. Thereafter, the next two steps of delimitation by the Delimitation Commission pursuant to the census and identification of reserved constituencies for women can be completed by 2025. By 2026, reservation for women in state elections can be a reality, and consequently even so more for the 2029 Lok Sabha elections. I am afraid you people do not know the procedure that is required for identification. And please do not mix up. Please do not mix up OBC. Please conclude now. Please conclude. Sir, I will conclude, sir. In short, sir. Nick, conclude on a pleasant note. Yes. Sir, this is a bill. One of my young friends, Kartikeya Sharma, honorable member of this house, said that this is a bill whose time is due. I say that this is a bill whose time is overdue. I wholeheartedly support this bill. Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, first let me request you that I talk from this seat. I appreciate. Thank you, sir. So thank you for giving me an opportunity to talk on this very historic bill, which is, as Mahesh Jethmalani, honorable member, mentioned, whose time is long overdue. Time has come is not the word, but it is long overdue. And I actually what happened? Oh, okay. Yeah. No. Thank you very much. Yes, what's the problem? No, he's not objecting to that. No, he's not. I think certain things have to be over. Thank you very much, Pramod Tiwari ji. Thank you. But it speaks of a high level of attention. That's right. 360 degree. That's right, sir. But I'm very grateful that you reminded, sir. Sir, I speak in favor, and this is an intervention that you permitted me, I speak in favor of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. And this proposed 128th amendment has actually been very thoughtfully crafted, considering that we are at a very critical stage of our development process,
We've seen the success, and I certainly want to credit Shri P.V. Narasimha Raoji's government for having brought in the 33% reservation in the Panchayat Raj at that time. And as a result, we've seen the groundswell at the Panchayat level, where 33% reservation today by many states has been increased to 50% as well. About 20 states have already brought in 50% reservation, and showing, therefore, the contribution of women at the Panchayat, although it started with 33%, now has gone up to 50%. There are no regrets. Actually, people are very happy that there's actual participatory process which is seen in the ground. And in this context, I remember one of the earliest steps that as Chief Minister, Honorable Prime Minister in Gujarat had taken up was also to encourage 50% and also unanimous elections. He would incentivize so that it should be non-partisan and that it should be with a common call taken by the Panchayat. So innovative ways of wanting people's participation has been always attempted to. So this one is long overdue because it partly also answers a lot of members who have been saying from the morning, why did it take 9 long years for you to bring the bill now? I would like to respond, and equally as I'm going down talking about this bill, it is important, sir, that we build consensus and also show that we are committed for the economic, social empowerment of women as well. We've heard several members today speaking about how since 2014, there have been very sincere ground-level attempts to provide house, provide drinking water, provide smoke-free kitchen, provide dignity, which was a word used by Mahesh Jethmalani just before me, about providing toilets and so on. So these are also the fundamental bricks which build on empowering women. So social empowerment, economic empowerment, I'll go into a bit of detail a bit later. So what this proposed bill provides for is reservation of seats for women in the House of the People, in Lok Sabha. I've heard some members talk about reservation also should be brought in for the upper house. With the indirect election process and the way in which preference is shown in the voting, it's just not going to be possible to do any reservation. Let us keep that outside of this discussion, although it's well-meant. I mean, the well-meaning suggestion has come in, but that's not going to be workable if it is not a direct election. So this bill actually provides, therefore, for reservation of seats for women in the House of the People, Lok Sabha, and also in the legislative assemblies of every state, and also in the National Capital Territory of Delhi. It proposes, sir, again, people have picked up on this word, but I reiterate it. It proposes that as nearly as maybe 1/3 seats shall be reserved for women. So that's the first two salient feature of this bill. So what it would do is to bring in a new article 330A, which is intended for reservation of seats for women in the Lok Sabha. Second, it also brings in a new article 332A, which proposes reservation of seats for women in the state legislative assembly. Another, which is an existing article, which is 239AA, is proposed to be amended for providing reservation for legislative assembly of National Capital Territory of Delhi. So all these three are happening. It also then intends that there shall be a reservation for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes, in respect of the seats reserved for scheduled castes and scheduled tribes. So consequential amendments, sir, over and above all this, will also be made to the relevant acts for Puducherry and for J&K. Now, we come to the point on which, again, the previous speaker has gone into greater detail with his legal acumen to say how exactly this is going to be implemented. I'll have a minute on that. As far as the implementation
of the proposed reservation for women, the new article 334A is inserted into the Constitution. It intends that after the bill is enacted and after the bill comes into operation, and thereafter that, whenever the first census takes place and the relevant figures for that census are published, a fresh delimitation exercise shall be undertaken, and for the purpose of delimitation of seats for providing reservation for women in the Lok Sabha, in the state legislative assemblies, and also in the Legislative Assembly of Delhi. Now, this exercise of delimitation, sir, will be limited to identifying the number of seats and those seats which are to be reserved for women, and it shall not affect the interstate distribution of seats of Lok Sabha and the legislative assemblies of the state. So we just want to make this absolutely clear as to what this constitutional amendment bill is proposing to do, and the reservation of seats shall cease after a period of 15 years from the commencement of this very proposed law. So this is where I think we are coming up with this constitutional amendment. It also sort of very clearly states that this reservation shall not apply until the Lok Sabha or Legislative Assembly of a particular state or the Legislative Assembly of Delhi is dissolved. So that is the main feature of this proposed constitutional amendment. Is this the first time we are talking about this reservation for women? Not at all. There have been 4 genuinely serious attempts to get this bill through, sir. The first ever attempt was in 1996 on 12th September in the 11th Lok Sabha, where Sri H.D. Devegowda was the Prime Minister, and that bill which was brought in was referred to a joint committee headed by Srimati Geeta Mukherjee, who immediately took up the work, and within 3 months, on 9th December 1996, she gave her report, and the bill remained there for almost a year. But because of the dissolution of the Lok Sabha, the 11th Lok Sabha, on 4th December 1997, this bill also lapsed. This bill, one particular feature which I'd like to highlight is this bill provided for So it provides for rotation of seats. So the next one, second attempt made, was on 14th December 1998 by Sri Atal Bihari Vajpayee's government, 12th Lok Sabha. In this, the bill was almost identical to the one which was presented earlier, but a 15-year period was brought in. Now, this bill also lapsed due to the dissolution of the 12th Lok Sabha on 26th April 1999. A second attempt was made again by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on 23rd December 1999. That was the 13th Lok Sabha. And then the bill hadn't been pursued at all because they couldn't develop any consensus of view. And again, this also lapsed on the dissolution of the 13th Lok Sabha on 6/2/2004. The fourth attempt, which is the most recent attempt, happened on 6th May 2008. In the Rajya Sabha, the bill was introduced under Dr. Manmohan Singh's government, UPA 2,
very identical bill to the one which was previously tabled, which couldn't be pursued in the Lok Sabha. And this bill, which was brought in the Rajya Sabha, was referred to a standing committee, a department-related parliamentary standing committee on personnel, public grievances, law and justice on 8th May 2008 for examination. And it got passed, taken up for consideration and passed in the Rajya Sabha on March 2010, and then it was transmitted to the Lok Sabha on 12th March 2010. It was just transmitted. But till 2014, it couldn't be taken up for various reasons. I'm not here going to go into the detail as to why it couldn't be cleared, but it didn't get cleared, and it lapsed. It is important for us to know that it lapsed on the dissolution of the 13th Lok Sabha on 18 May 2014. So, I may be pardoned if I'm repeating something which honourable members already know. There is no bill which is pending that I have to bring back here to say, we'll consider this one, it's been waiting from then. No bill is waiting. With the dissolution of the Lok Sabha, that bill, which was passed in the Rajya Sabha, but which it didn't remain here, which naturally got transmitted to the Lok Sabha, also lapsed. So there's no bill before us. So empowerment of women in India is not a new thing. I just would like to go back in history to identify a few names which stand out for a lot of proof that is so required to say this civilization always held women high. Now, I'm not going into this thing, did we treat them as goddess, give us equality? I've heard a lot of members say with a lot of concern, we don't want to be treated like goddess, treat us equal. But it is a fact that we have held women very highly, and the women also had the courage to stand up and speak for themselves. So it's not a new thing for us. I'll just give you the example of Satyakama's mother. An Upanishad has been given in his name. He was a bright star. But when he went in search of his guru, the guru asked him, oh, okay, you want to become my student, but who's your father? Would you please tell me? He didn't know the name of his father. He goes back to his mother, Jabala, to ask her, Mama, please tell me who's my father. I have to go tell my guru, otherwise he'll not admit me. And the mother had the courage to tell him, I don't know who your father is, go tell this to your guru. And the boy, in all his earnestness, goes back to the guru and says, sorry, this is the reply given by my mother. And the guru understands the situation and readily admits him for his curiosity. That's the civilization we are talking about. It's not a civilization which treated women of one particular group or another particular group differently. We've treated all women with fairness. There can be differences during the age as we are coming down to today. But that is Satyakama Jabala, and Jabala, the mother, who could tell her boy to go say with pride that no, you'll know your mother's name, but the mother doesn't know the father, and the guru had no objection. Sir, similarly, when Adi Shankara had an argument with Mandal Mishra, there was a debate going on, and who was the judge there? A woman, Ubaya Bharati, Mandal Mishra's wife. Could she have been admitted or accepted as a judge between the two people debating if only there was some hesitation about dealing with women differently? They readily accepted her. She had the scholarship is one thing, but to accept a woman to judge between them two as to who is going to be the victor also reflects that men in India, learned or otherwise, did not have a different idea of woman, and that Ubaya Bharati's example tells us that. There are, of course, 22 women who contributed very richly to our Vedas and Upanishads. I'm not taking each one of their names. Gargi and Lopamudra stand out. Similarly, I heard members this morning also recall from the south eminent fighters, warriors. I also will name Abhay,
who was a great, simple two-line aphorisms from her, always enamors all of us. Karakal Ammayar, who was a great bhakti saint, she's treated as an Ironman. So in India, women have had a role in literature, a role in very many different situations. Women warriors, sir. Rani Abbakka, Kitturu Chennamma, Velu Nachiyar, Rani Gendunlu, Lakshmi Segal, and of course Jhansi Ki Rani. All of them, I've just taken a random list. So is their prowess in science. E.K. Janaki Ammal was one of the earliest scientists of India. Asima Chatterjee, Anandi Ben Joshi, Anna Mani, and Darshan Ranganathan are all women of eminence in science. So we've had this culture of allowing women to do whatever their aspirations lead them to do, and we've respected it. Of course, as they say in Hindi, Vikrutiya have come into the system, we'll have to cleanse that, and efforts are being made. Now in this I want to highlight, sir, that the party that I represent, BJP, has been consistent in its support for women's reservation. BJP held its national convention in 1994 in Vadodara, and there very clearly stated that we stand for reservations of women, reservation for women in the parliament and also in the state assemblies. If that was in 1994, 1998, BJP reiterated its commitment for women's reservation by introducing it in the Lok Sabha, which I just mentioned a while ago under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. In July 2003, BJP held a national executive in Raipur in Chhattisgarh, and there they passed a resolution seeking 1/3 of all Lok Sabha constituencies to be converted for reserving for women. Progressively, that opinion has been refined now that in 2007, in the national executive, it approved 33% reservation for all organizational positions within the party. And in 2008, sir, BJP amended its constitution to provide 33% reservation to women in its cadre posts as well. And let me take this opportunity, sir, in all humility, to thank my party. I am one of the beneficiaries of this reservation for women that I am here today, and I thank my party for having given me that opportunity. So BJP has been consistently supportive of women's reservations, sir. I remember those days were early days for me as a party spokesperson, but the now lapsed bill, which was passed in Rajya Sabha in 2010, late Sri Arun Jaitley supported it passionately in the Rajya Sabha, and it was passed in the Rajya Sabha. Of course, when it transmitted to Lok Sabha, it didn't get through. So BJP has been absolutely steady in its support for women's reservation, and this morning I heard some honourable members also refer to some very picturesque moments when Honourable late Srimati Sushma Swaraj had waited outside the Parliament House, received Brinda Karat, the Honourable former member of the Rajya Sabha, and they both hugged each other in joy that the Rajya Sabha passed the bill and it is now the turn for Lok Sabha. So there was a complete, across party lines, a sense of wanting to achieve this, and today we remember late Sushma Swaraj, and of course even today the activists and also former members of Parliament who have all been pursuing this agenda. To further this point, sir, 2014, prior to the Lok Sabha election, BJP's manifesto, the Sankalp Patra, openly said that BJP is in favor of bringing reservation, 33% reservation in Parliament and also in the state assemblies. So did 2019 Sankalp Patra. So just as Article 370 has always been in BJP's manifesto, so is women's reservation always been
in BJP's election manifestos, be it 2014 and now be it 2019. Sir, Sankalp se Siddhi principle, which Honorable Prime Minister follows very earnestly, is also proven by the fact that everything that which is mentioned in the Sankalp Patra is taken up to the level of achieving, that is, Siddhi tak, Prapt karne tak, we follow it in earnestness. I also heard some members this morning talk about you were paying attention to Article 370, you were paying attention to triple talaq, but you didn't do this women's reservation. I like to take this opportunity to say through you, sir, Article 370 has a very big women's component in it. Inter alia, you didn't allow women to hold property in J&K. Is it not important for them to have that honor back? They have, after all, been born there. Well, if they married somebody else from anywhere else, how right is it under Article 370 to deny them ownership of property? Is that not important? Therefore, when we restored the normalcy and also removed Article 370, women, SC, ST, Bakarwals, all of them get their rights. That is why Sankalp se Siddhi principle of Honorable Prime Minister makes complete sense. And between 2014 and today, these are the kind of achievements to empower women which have been happening. Similar is, I heard our Honorable National President, Shri N.D.A. speak about triple talaq this morning. He said triple talaq is not in A country, B country, C country, all of which are Muslim-dominated countries. But in India, it took us a whole process of going through the courts and again politically convincing our people and then bringing it in. But Prime Minister Modi did not hesitate. He said if that has got to be done for giving the rights to the Muslim women, we shall do it. So triple talaq also happened. So N.D.A. ji clearly explained, we don't involve or indulge in appeasement politics. But it is important for us for restoring the rights of women, because in women-related matters, sir, and I can say with complete confidence, in women-related matters, we don't play any politics. It is an article of faith for the Honorable Prime Minister, and therefore we do everything that we've done, whether it is Article 370 or whether it is triple talaq or looking at now Women's Reservation Bill. All of it is part of our manifesto anyway. So between 14 and 19, I shall not spend too much of a time, because yesterday all of us heard Honorable Home Minister speak in the Lok Sabha. He listed out the various measures which have been taken by Prime Minister Modi for social empowerment, for economic empowerment of women. I'll just very quickly flag off a few of them, sir. Ujjwala for smoke-free kitchen, 9.59 crores of people have been given free connection, and 200 rupees subsidy per cylinder, and newly we are adding 75 lakhs more connections. Swachhata Abhiyan, providing a dignified life for women, providing toilets to them. 11.72 crore toilets have been built in this country. Beti Bachao, Beti Padhao has actually helped in restoring a fair balance between gender, because gender asymmetry prevailed all over the country. I heard Honorable Member Thambi Durai talk about how there was this cradle scheme which was brought so that children, as soon as they are born, being girls, are not killed. And that was a step some time ago taken in Tamil Nadu. Many states have done many such steps in order to restore that parity in the gender, in the sex ratio. Sir, Prime Minister Modi's government is the one which gave from 12 weeks of maternity leave to 26 weeks of paid maternity leave for women. These are empowering women. What were we doing between 2014 and 19? These were the things which we were doing. So we didn't forget for a moment empowerment of women. Water to the house for health reasons. Otherwise, they were spending hours going miles to get drinking water. 9.82 crore
new connections of Nal Se Jal, Gar Gar Jal has been implemented. So I won't go further into that list of social empowerment and the economic empowerment. But I certainly will take a few more minutes, a bit of considerable time if you would permit me, sir. Empowering women, there cannot be a more substantial measure than finding them in the armed forces. I list out the kind of things Prime Minister Modi has taken to get women have that equal treatment. Many of our honorable members saying, treat us equal. We don't want you to do puja or treat us like goddess. No. Can there be a better place than the 3 armed forces where we have brought women to be at par with men and they stand there clearly? I'll give out the list, sir. All wings of the Indian Armed Forces have women in combat roles now. Women are allowed in combat services and in supervisory roles. I'll start with the Central Armed Forces, paramilitary forces. In 2016, Prime Minister Modi's government took a call, a historic move, decided to reserve 33% posts at the constable level for women in CRPF, CISF, and to begin with, 14 to 15% posts at the constable level in the border guarding forces such as the BSF, SSB, and ITBP have been brought in a phased manner. That's equality. That's treating men and women equal, literally in the uniformed services. Similarly, sir, admission of girls in Sainik schools, unimaginable, because there was so much resistance. No, you can't do it. Admission of girls in Sainik schools, with effect from academic session 21-22, girl cadets have been admitted in all existing 33 Sainik schools. That was clearly a step which was taken as a decision by Prime Minister Modi's government. Indian Army, sir, has opened up entry for women candidates in the National Defense Academy. You know how prestigious that center is. And it is one of the male domains which you could never breach. But today it has been opened for female cadets. 19 cadets, including 10 for Indian Army, joining academy every 6 months. Women candidates, women cadets. Sir, permanent commission is also being granted to women officers in the armed forces. You may think that it is only in the armed forces medical corps, or it's in the dental corps, and so on. No. Or it is in the nursing service. No. Over and above that, now women are being given permanent commission in the armed forces as women officers. Sir, similarly, Indian Army has opened up avenues for women officers to serve as pilots in the Corps of Army's aviation. So flying the helicopters for the Army is done by women now. Women officers are also being considered for colonel rank and are being given command appointments so they can lead commands. Also, sir, there are other ranks which are also getting into the core of the military police in the Indian Army, which has been introduced from 2019. So is the case with Navy. I wouldn't want to read each one of those steps, but today, whether it's Army, whether it's Navy, or whether it is the Air Force, they are all being treated at equal with men. Agniveer scheme, sir. I was very happy to hear Honorable Member Sumitra Balmik. Is she here now? Yes. She mentioned it, sir. Women are getting recruited as women Agniveers. I was going to mention it, but I was glad to hear it from another member of this House. From the first batch itself, we have women Agniveers. So now, without taking more time on talking about the larger issues, I'll come to responding to some of the members who have raised some issues
where I wish to explain. Sir, members Ramnath Thakurji, K.C. Venugopal, Priyanka Chaturvedi ji, Phulo Devi Nettam ji have all raised this issue about you came to power in 2014. Why have you taken 9 years to bring this bill? I think I've explained it that we've spent a lot of time and attention on delivering on social empowerment and also on economic empowerment. In the meanwhile, you also saw how they have been empowered to get into the armed forces and the central armed paramilitary forces as well. Explanations and details with facts have been given by the Home Minister yesterday in Lok Sabha. Women have become now job creators. 29 crore women have also benefited because of the Mudra scheme, where 70% of all beneficiaries are women. So there are several schemes which has helped women to come up to some level. That's what we've been doing since 2014. Then there was this question, I think in general, several members have raised saying, why a special session for this bill? Sir, that simply we've come into a new complex, new building for Parliament, new India. We would like this Parliament to deal with one of the best bills that it can deal with, where all of us agreed. And I'm glad to say this. I thank from the bottom of my heart for the consideration that all the parties have shown, irrespective of the little reservations they may have, questions they have in their mind, for extending support for this historic bill and this new building as a first bill. Handling this bill is, I think, a very good start for a building which is being built for the next 100 years for the country. Even if delimitation is going to come up with newer members, there's enough space to accommodate a lot of new ones. Sir, it was a bit disheartening to hear some members say, oh, this bill is a jumla. This is a very catchy word. A lot of people love using that word, but no. Whoever said it, I'm not particularly naming the members. It is not a jumla. This bill is not a jumla. I want you all to please attend to the points that I'm trying to talk. And the context in which the Home Minister said, I think has been well understood, but it's convenient for us to use jumla again, no? So we forget the context in which Honorable Home Minister said it. So the legal process, no, thank you. That was misunderstood, or you're interpreting it differently. I don't want to get into it. Now I'm talking about the Women's Reservation Bill. Legal processes which need to be adopted for enabling this provision has been defined and described by a legal luminary, but I will certainly repeat it for us to know, and I'm sure many of our senior members here will appreciate that without amendments as regards duties and without the delimitation happening, and delimitation process is a quasi-judicial process. It needs an appointment by law. It needs a Supreme Court judge retired to head it. It needs members from the Election Commission. It will also have member representatives from every party, recognized party. So it is not exercise to push the decision further, but once we pass this, and once the states also pass their respective law, is when this, and in the meanwhile, census taking place, with the number or the figures of the census notified, the ball sets rolling for a delimitation commission to come into play. So, unless we do it, and in that, I'll get into the detail why this 2026 stands out for us. Why 2026? Why can't it be earlier? I'll try to explain it as well. It is not something which we have done it.
we are carrying a legacy where delimitation dates have been frozen, not once, frozen twice, and for long periods of time. I'll get into that. But with these handicaps or with these realities before us, it shall not be possible to implement it now in 24 itself. Our intention is clear. Clear it all up. And once the census is over and the delimitation sets rolling, you're going to have it the moment it is finished. So, no Jumla ma'am, whoever said it, but truly it's going to set that course which was very clearly from a legal side explained. It also says, one of the discussions this morning, sir, saying, why did you have to bring it now? You're going for an election, you're probably worried about the election. No, as I said earlier, it is an article of faith. Whether it is now, whether it is all the 4 times when it was brought to this house, every time BJP has supported the bill. Even that time when it was brought into the Rajya Sabha by Dr. Manmohan Singh, BJP stood out to support the bill. So why would there be any hesitation in our mind? So I just want to be sure that the points that has been raised by some of the members are addressed. Sir, before I get into talking about the delimitation details, I want to pick up on Sri Binay Vishwam, who seems to have forgotten the bill and said many other things about, where are the women, why did you want to form a separate organization aside from RSS, why do you need a Sevika Samiti and so on. They are 100-year-old organizations. All of us know how they are involved in public service, particularly when there is a disaster, a cyclone, a flood. Man and woman are there first. Unclaimed dead bodies, they do the cremation or, as per the law, whatever process for the ultimate end rituals. They are completely dedicated for social service and keeping people together. And if that is worrying the honorable member about why the women have not been taken in RSS. Please, honorable member, I have not given you the floor. Please, sit down. No, don't do it. Please. Sir, why should there be a separate organization? Why they cannot be part of RSS and so on? At least there is an organization keeping all the women working together at par. If you don't mind me, sir, and if you'll allow me this little bit of indulgence, and with the honorable member not taking any offense, because he's spoken quite a lot, I'll rather respond with just one fact. Let me ask him, how long did it take for former member Brinda Karat to get into the Communist Politburo? To get into the Politburo, how long did it take for Brinda Karat? Nobody else. It was public debate. It was a public debate to say, Communist Party, you don't have one woman in the Politburo. And it's not as if you don't have women at all. Poor Brinda Karat had to fight away. And now you're talking about RSS and Sevika Samiti? Please. Sir, I heard honorable member Kapil Sibal, sir, talking about Finance Commission cannot allocate resource fairly till the census takes place and so on, and that we are using a old census because I'm talking about, he referred to Finance Commission, I am also referring to that, but the idea was that the census, old censuses are being used. I just want to tell you, sir, it was Prime Minister Modi who, after forming the government, said 2011 census data was first used for the 15th
Finance Commission, whose period is now current, 2020 to 2025. Till before that is prior to that, since the 7th Finance Commission, till the 14th Finance Commission, which is before us, before 2014, that is 8th Finance Commission for the finance period 1979-2020, have used the census data of 1971. 71 census has been used till 2014, and Honorable Member Kapil Sibal worries that we're using 71. No, sir. From the 15th Finance Commission, which is holds currency, which runs between 2020 to 2025, 2011 census is already being used. So I'm sorry, I want to just correct that perception of Honorable Member. All the earlier finance commissions have used 71 census figures. We have updated it. So I'll just quickly go to talking on the readjustment of seats. It's not a problem that we have created. It's not a problem that we suddenly, realize. I would like to trace back as to why readjustment of seats has to go through a particular process, and it's not new problem today. I'm not saying it's a problem, but it is a situation which was created long time ago. I'll just tell you that. Article 82 provides for readjustment of seats after each census. So as per this article, sir, seats of Lok Sabha allotted to the states, as well as division of each state into territorial constituencies, will be readjusted after each census. It provides restriction that such readjustments shall not affect the representation in Lok Sabha until the dissolution of existing Lok Sabha. Just the core facts before us. In 1976, and this is where I'll draw the attention of the honorable members. In 1976, the 42nd Amendment of the Constitution inserted two provisos to this article. 42nd Amendment inserted two provisos, which are under Article 82 and 173. First proviso provided as to when readjustment shall take effect, and the second proviso provided that readjustment shall not be necessary until a new census is done and its figures are published after the year 2000. In 1976 till 2000, delimitation was kept frozen, thanks to the 42nd Amendment. So that during that emergency, the infamous thing which happened, 42nd became a basket case where you put everything, Adobe's list, and passed it all. When the emergency extended period, the Lok Sabha, after completion of 5 years, ran the 6th year and did all this. So the 42nd Amendment froze it till 2000. Thereafter, this freeze till the year 2000 was amended in 2002, the 84th Amendment, and the year 2000 was replaced by the year 2026. So the 2026 is not somewhere coming out of our imagination. The freeze in readjustment of seats has happened in 76 up to 2000, and in 2002 it has happened as an extension till 2026. So, as first census of 2026 will be undertaken into 2031, until that period, there will be no readjustment and seats shall remain unchanged, is the position. Now, what we are trying to tell you here, therefore, is after the census now,
which can start from early 24 in all probability. It will go, and once the census is completed, its announcements are over about the findings of the census, the report of the census, then the delimitation commission can be set, and it will do its job not just for the Lok Sabha seats but also to the states. Then the reservation comes into implementation. So I won't spend more time on that, sir. There's one more response I want to give. Shri K.C. Venugopal had mentioned that what happened in 1989, I'm not repeating or quoting his words, broadly, what happened in 1989 when Rajiv Gandhi introduced reservation bill for women in local bodies. Entire BJP gang, if I'm wrong with the expression or words, you may correct me, entire BJP gang opposed it. Stalwarts like L.K. Advani, Atal Bihari Vajpayee, Ram Jethmalani, etc. opposed it. So I just want to go back to actually what happened then. 1989, it didn't get passed. Opposition was there, a lot of opposition happened. Then, of course, as I said, even at the very beginning, it moved to 1991-92, and in 92 it got passed under P.V. Narasimha Rao ji. But what actually happened then? BJP gang? No, I'm sorry. There are others who, it's very interesting to see. Sir, because the center-state relations at that time, and I'm purposely bringing this element, was such that it was felt that the Panchayati Raj plan clearly aims at depriving the states of power to manage their own local bodies. This was the narrative which went into the opposition's minds. Chief ministers like Sri Karunanidhi, Jyoti Basuji, Devi Lal, and Sri N.T. Rama Rao, all of them made it clear to Sri Rajiv Gandhi that this was an issue which required a national consensus. So it's not the BJP gang, sir. All states were standing up to say, sorry, you're taking away our powers. And I'm quoting here, sir, Sri N.T. Rama Rao, as reported in a newspaper, if you want, I can always leave this authenticated copy, said, Sri N.T. Rama Rao, let the Prime Minister, I'm quoting here, let the Prime Minister seek a fresh mandate from the people on this issue and then amend the Constitution. Sri N.T. Rama Rao said this about that Panchayati Raj bill. Again, sir, I will add, sir, Ramakrishna Hegde ji said, quote, and I'm reading it exactly as the quote is before me, Rajiv now wants to run the villages from Delhi. We won't allow encroachment on the rights of the states. That was Ramakrishna Hegde, sir. Then Saroj Mukherjee from CPM, sir. It's not BJP gang. I'm telling you about CPM also. The CPM's Saroj Mukherjee said, and I'm quoting here, sir, any attempt to reduce the power of the state in the area of local self-government would be resisted, unquote. So, sir, when you don't have a record to justify your center-state relations, and I also do remember the GST debates, you promise something to the states, you don't fulfill it, and the states don't have confidence in your word. GST didn't happen during the period. Whereas that's the confidence Prime Minister Modi could give to the states, and therefore GST was implemented by us. Center-state relations. Center-state relations is a topic on which somebody who used Article 356 to remove state governments so many number of times, more than 90 times, should not speak at all.
Sir, just one last point. Such one last point. Lot of people, sir, lot of people. One second. Sir, you want me to sit down? Yes. Sir? No, you want me to sit down, sir? Sorry, sir. You want me to sit down, sir? I request you Is to... this because you want to give them peace? I just want to say something to you, sir, in case you want them to be accommodated for giving explanation or clarification. If it's not preposterous from my side, would you permit me to just say that's exactly what my respected leader of the opposition objected to yesterday when we were timely getting up and saying, no, factually wrong, you're factually wrong, we want to say. I would want to cultivate, sir, let me finish. I would want to cultivate a habit. And I'm telling you, I would want to cultivate a habit for myself, sir. I'll keep quiet. I'll hear every speaker. And when there is an objectionable comment made, or when there is a factually incorrect statement made, after they finish, I will seek your permission to stand up and rebut it, provided they are here to listen, not if they are walking out. So please, sir, it's a two-way street. Now that you're saying, I'll sit down. No, please conclude. Honorable Finance Minister, please conclude. Can I? Please conclude. I'll come. Sir, just the last 2 points, sir. Just the last 2 points. So there's been a lot of question on why is it that we won't be able to do the OBC like the way we do the SC reservation or ST reservation? There is no specific mention of electoral reservation in the Constitution for OBCs as it is mentioned for the SCs and STs. That is why this bill, which brings in the amendment to have a 133% reservation, deals with the general category, deals with the SC category, which is provided for by the Constitution, and deals with the ST category, which is provided for by the Constitution. So there is no ambiguity in our mind. So the last point, which is a bit of a disappointment for me, which is a very worrying thing for me, I seek your indulgence and allow me to say this, which is really not what I want. Leave me, but I'm sure many of us wouldn't want that in the upper house. So this morning, I heard insinuations passed against the Prime Minister and Honorable Home Minister. Initially, I didn't think it was meant for them because it was very metaphorically said about, some men came, they carried money bags, they were also with money, media, muscle power, and misogyny. Sir, I would want this to be finished, and anyone who has an objection can please speak after that. So, when it was metaphorically said, two members came to Bengal, men came with money, media, muscle power, misogyny, and mocked the Chief Minister. I was just plainly hearing it. I didn't think I got perturbed. But I'm happy that you've already said, substantiate it. Sir, I'm glad you said substantiate it. And I thank you for it on the assumption that if it is not substantiated, it will be expunged. But why am I worried about any reference to any two men? I shouldn't really be worried, right? Agreed. That's how I thought it was. But when somebody from here objected to that comment, and finally when it was not permitted,
and the honorable member was allowed to speak, he used the names. And if I can recall the lines that he said, sir, he looked at you and said with aggression, sir, if whenever I take the name of Prime Minister Modi and Amit Shah ji, I get under their skin, is what he said. Now, if the two-man reference was without any name, I will not be bothered. But when somebody protested it from here, the true thought was betrayed. The true thought was betrayed. And the true thought was Prime Minister's Modi name and Amit Shah's name. Whenever I take it, which is what the honorable member said, whenever I take it, I get under their skin. So everything ties up. Everything ties up. I would humbly request you, sir, that that document be provided here, corroborated, substantiated. If the money, muscle man and the media have come, or else apologize and the remark be expunged. Thank you very much. Honorable members, One second. Take your seat. Honorable members, take your seat. Please take your seat. Take your seat. No. Don't do it. Nadimal, don't do it. You are not in a forest area. You are in this house. I'll look into it. Dola Sen, madam, I'll look into it. Sit down. Honorable members, after a long gap, if I take my tenure of 1 year, one second. Honorable members, please. Honorable members, I express my deep sense of gratitude for memorable, stimulating debate with emotive. I'm coming to that. Can't you have some patience? Can't you have some? What gives you the impression I will not give you the floor? Don't see a ghost in every dark corner. I am expressing something that after a long time, we have had very involved debate. Every member of the House has contributed. Every member of the House has been insightful. It has been very stimulating, emotive, intellectual exposure was also there. There have been differences which are to be there in democracy, commendable contributions from everyone. And I have listened to the input by everyone. There have been acerbic comments. There have been sarcasm also. There has been wit. Humor was lacking. Venugopalji, humor was lacking. You need to make up for it. Normally I should call Mr. Arjun Ram, but leader of the opposition seeks to make an intervention. Now, I had said a year back that when it comes to leader of the opposition, leader of the House, Prime Minister or former Prime Ministers, I would show extra consideration. I am therefore allowing leader of the opposition to make an intervention. Okay. It's a good suggestion, sir. Good suggestion. Sir, very reasonable suggestion. पर थोड़ा हंस कर कहिए सर. Yes.
So before leader of the opposition takes the floor, Mr. K.C. Venugopal, but I will make Mr. K.C. Venugopal, but K.C. Venugopal, 1 year. You will do it palatably, humorously. Yes, am I right? Yes, exactly. And mind you, Sir, if the Honorable Finance Minister has reacted to your statement, you should be happy and delighted. Take it as an accomplishment. Sir, 2 minutes. Sir, Honorable Chairman. 2 minutes. I don't know what happened, Honorable Finance Minister, by saying like this. What I say is very clear. Whenever this 1989, the 64th Amendment has been taken by the Rajya Sabha. After passing it in the Lok Sabha, the BJP members, including the stalwarts, Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani ji, Ram Jethmalani ji, Jaswant Singh ji, they voted against. Sir, this is the 1 minute. The question is, this is the proceeding, sir. The question is that the bill for her to amend the Constitution of India, 64th Amendment, passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. The voting is taken. Then Lal Krishna Advani voted no. Atal Bihari Vajpayee voted no. Jaswant Singh voted no. This is only I told, sir. Your stand is very clear. Then why Honorable Finance Minister putting the responsibility on other party's shoulder? I am asked about her party stand only. She has to clarify that stand. BJP stand. I didn't ask. So it's happy ending. One point of view, another point of view. Yes, obviously. It is at the suggestion of the Honorable Leader of Opposition that I gave opportunity to Mr. K.C. Venugopal. Sir, your intervention. Sir. और सर, आप दिल मिला दोगे, सबके दिल मिला देना. आपने देखा होगा. माननीय. नहीं, मैंने लेफ्ट में ज्यादा देखना शुरू कर दिया है. अभी देखे साहब, राइट को ज्यादा देखते. ना, मैंने लेफ्ट में देखा है. अब whatever it may, left right छोड़ी है. सर, माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ. आपने मुझे संविधान 128 संशोधन बिल पर बात करने के लिए इजाज़त दी. मैं इसके समर्थन में ही खड़ा हूँ और ये बिल को संपूर्ण सपोर्ट करता हूँ मेरे दिल से. और मेरी पार्टी और इधर के सभी लोग, इंडिया के सभी लोग हार्टिली इसको सपोर्ट करते हैं. लेकिन मुझे थोड़ा 2 दिन पहले ही मालूम हुआ ये बिल आने वाला है. कैसा सर? 4 सितंबर 2023 को आपने जयपुर में कहा था. 4 सितंबर को क्या कहा था? वो दिन दूर नहीं जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा. ये यानी ये आप तय किए थे कि आपको मालूम भी हो गया था और इसका प्रचार आप वहाँ जयपुर में कर दिए. तो अब इससे बड़ी बात क्या है कि अगर सरकार का ही हमारे सभापति जी अगर बोले तो हमको भी लगा कि ये बिल आने वाला है. लेकिन मैं ये चाहता था कि महिला मेंबर्स बोलने दो, उधर इधर के सभी, कोई भी पार्टी के हो. इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें बोलने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया. थोड़े से शब्दों में बोलूँगा. लेकिन जब उत्तर देखा मैं नियरली 50 मिनट यहाँ पर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई सुनने को मिला. तब मैंने ये सोचा आपके स्पेशल परमिशन लेके मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूं. सर,
Please listen to the leader of the opposition. Sir, मैं इससे The Honorable Finance Minister was heard with rapt attention. Sir, please. सर मैं एक कविता से शुरू करता हूँ। सर आपकी कविता बड़ी गंभीर होती है। नहीं, मेरे यहाँ आने से पहले आपने ऐसी कविता पढ़ दी कि पूरे देश में मेरे को लोग पूछने लगे। नहीं, आपके लिए ऐसा मौसम आएगा सदा सताएगा। नहीं, मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किन्हीं के लिए, ये इस बिल के ऊपर ही बोलूंगा। ठीक है। कोमल है तू कमजोर नहीं, महिला कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया गया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया गया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा भी हुई, जग में अब तक जारी है। जग में अब तक ये सारी चीजें जारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। तो इसीलिए इस शक्ति को और हम बढ़ावा दे रहे हैं। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सभी सपोर्ट में सभी ने बात किया। सर मैं बहुत से पहले से बहुत आंकड़े भी लाया था, लेकिन समय की कमी रहने से मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट बताया, अपने क्या क्या अचीवमेंट हो गए, वहाँ पर होम मिनिस्टर बताए, वहाँ अपने लोकसभा में, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बताए, लेकिन हमने क्या किया वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि ये बिल स्पेशल है, महिलाओं के लिए है, स्त्री शक्ति के लिए है। इसीलिए इसमें मैं डेवलपमेंट लाकर मिक्स करके उसको खराब करना नहीं चाहता था, क्योंकि बात किधर की हो रही है और बिल के ऊपर होना चाहिए और जल्दी पास होता था। लेकिन उन्होंने ये किया, गैस दिया, रोड दिया, फलाना सब चीजें आ गई। अब ठीक है, उनको बोलना था वो बोल सकते हैं, लेकिन सभापति महोदय जी, मेरे को एक ऑब्जेक्शन इसमें है। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। मतलब महिला आरक्षण से पहले 2 अनिवार्य शर्त रखी गई है। एक जनगणना है, दूसरा डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। और आप इतने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपने फेंक दिया कि चलो ये चलने दो। मैं ये नहीं कहता, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब एक बार बोले थे 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब कुछ बोले थे। फिर बाद में उनको पूछा गया कहाँ है हमारे 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है हमारा 15 लाख। तब मैंने पेपर में पढ़ा, अगर आपको सबको भी मालूम है, ये तो चुनावी जुमले हैं, बोले ये तो चुनावी जुमले हैं, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं होना कि अब बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पास होगा, फिर जुमला नहीं होना ये भी। तो मैं ये चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी आपको अनकंडीशनली सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं
और दूसरी चीज, सवाल ये है, महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत से चीजें हम अपोज भी किए तो बिल पास हो गए। यहाँ पर आपको मालूम है लेबर बिल्स पूरा पास हो गए, किसान बिल पूरे पास हो गए, 750 लोग मर चुके, वहाँ पर बॉर्डर पे रहे बैठे हुए थे। लेकिन नहीं, किसान बोले तो एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, जब वो बैठे थे 1 साल 2 साल बैठे थे हर जगह, उसका बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट तो इतना रहने के बावजूद भी आपने वो किसान बिल तो पास किया, तो इसको भी ऐसा करना चाहिए था। हमको पूछ रहे ना आप क्यों नहीं करे, फिर आप क्यों नहीं करे 10 साल से? मैं पूछता हूं, अगर आप ये कर सकते हैं दूसरे कानून 1 साल में, नोटबंदी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? वो भी रात के 8 बजे बोलते हैं। आप क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों सुनिए, कल से 8 बजे ये जो 1000 और 500 का क्या नोट नहीं चलेगा, रद्दी हो जाएगा, लीगल टेंडर नहीं होगा। अब तो उसको आपने कहा, आपने ये तो कहा, ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल सब मान रहे हैं इसको, कोई अपोजिशन नहीं था, तो आप ये ला सकते थे, तो आपने इसको लाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज, इस देखिए अर्बन बॉडीज में रिजर्वेशन है, जिला पंचायत में रिजर्वेशन है, तालुका पंचायत में रिजर्वेशन है। अभी एग्जिस्टिंग जितने मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, उसी पे करिए। जब बढ़ जाएगा, सेंसस आएगा, फिर मेंबर्स भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ महिला का नंबर भी बढ़ेगा। क्या आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपसे ये पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस लाने के बावजूद भी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इस नए हाउस में नया बिल महिला के लिए हम लाएंगे, ये सब बोले, तो मैं कहूँगा कि आप ये कर सकते थे वहीं पर, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद में दूसरी चीज, ये जो है इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ये तो SC ST के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर 100 सीट है उसमें से 110 या 30 सीट है SC ST का, 1/3 इजीली आप कर देंगे, या रोटेशन में कर सकते हो तो कर सकते किसी और तरीके से। लेकिन OBC मोर देन 60% लोग हैं, उनके महिलाओं को कहाँ मिलेगा आप बोलिए? उनके महिलाओं को अगर मिलना है तो संविधान अमेंडमेंट करके या इसमें उसको अमेंडमेंट में ला के ही उनको दे सकते हैं। तो भाई दोनों हो गए हैं, तो उसमें आप वो करना चाहिए, लेकिन आप वो छोड़ दिए, तो बाकी यूं ही। तो अब क्या होगा जनरल में, सिर्फ महिला रिजर्वेशन में मैं अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप बैकवर्ड क्लासेस को क्यों छोड़ रहे हैं? उन महिलाओं को क्यों छोड़ रहे हैं? उन महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे? क्या उनको और पीछे ढकलना चाहते हैं? क्या और उनको आपके साथ नहीं लेना चाहते? तो इसीलिए ये जरूरी है, इसीलिए तो हम इसी के ऊपर आपको प्रश्न भी पूछे और बात भी की। और ये कब इम्प्लीमेंट होगा? क्या 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 6 साल में होगा, 8 साल में होगा? नहीं साहब, थोड़ा मेरे को थोड़ा तो कंसेशन दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर आपने 5 मिनट के लिए कहा था सर। हाँ, तो ये नहीं, आपने 5 मिनट के लिए कहा था। 5 मिनट, चलो साहब, अब
Another 3 minutes. नहीं साहब, 5 ऐसा बोल के मैं फिर 0 बोला था। सर क्या आप 2 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे या 10 साल में? एक लिमिट आप बोले हैं, कब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? आप तारीख बताइए, साल बताइए, क्योंकि कमिटमेंट है आपके पास, आपने ही बोला। अगर कमिटमेंट है तो हमको साल बताइए, महीना बताइए, डेट तो बताइए कम से कम, इस वक्त हम करेंगे, ये महीने में करेंगे। और नहीं तो क्या होगा, ये एक जुमला होगा। तो ये आपको जरूर सोचना है। और इस राष्ट्र निर्माण में हम लोग महिला को अगर आगे बढ़ाना है तो 75% लोग जो SC, ST और बैकवर्ड क्लास के मिलके हैं, इनको डिनाई करे जैसा होता है। अगर आप उधर ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सभी इमोशनली बात करने से नहीं होता, आप प्रैक्टिकल करो ना। तो दूसरों को मत पूछिए आपने क्या किया, मैंने गलती किया, फिर आपने भी कर रहे क्या? मैं गलती का छोड़ो, मेरे को शिक्षा मिली, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ भाषण देना है क्या आपका काम? क्या कहीं गलती है तो उसको सुधारना है, आप बोल सकते ना। तो ये मेरे को ये कहना है। और आपको खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल में कमियां हैं, इसको आप, जैसा कि हमारे एक सदस्य ने कहा, भाई आज पास हो जाए, कम से कम विंटर सेशन में तो लाओ, सॉरी हाँ समर सेशन, हाँ नेक्स्ट सेशन में लाइए, लाकर इसको दुरुस्त करिए और दे। हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसा आज हाथ उठाए वैसा उस वक्त भी हाथ उठाएंगे, लेकिन लाइए। सिर्फ क्या है, हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में मूगी तुप्पा चतुर बोले तो, यानी सिर्फ ये क्या है, नाक को घी लगाए बोले जैसा। तो ये नहीं होना, बताना एक, करना एक, ऐसा ये ठीक नहीं है। क्या शाह साहब अगर चाहे होम मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो बोले कि मैं जा रहा हूँ उधर, छोड़ दिए हमको तो चले। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं साहब, जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं यही लोग हैं। किसी मिनिस्टर को डिसीजन लेने का हक नहीं, इसीलिए पावर नहीं है, इसीलिए। अरे मुझे मालूम है किसके पास क्या पावर है। प्लीज लेट अस कीप काम। सर मैं और एक बात आपसे कहूंगा, तो ये बहुत से चीजें हमारे बहुत नुक्ताचीनी हो गई। 9 मई 2008 और कमिटी और फरवरी 2010, तो ये सभी हुआ। और उसके बाद में आपने कहा ये हमारे पास ये आरक्षण, ये बिल जो था, इसको हराया गया कैसा? ये 9 मार्च 2010 को 186 वोटों के भारी बहुमत से पास हुआ था, लेकिन उसको बाद में लोकसभा में हार हो गई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अब यहाँ तो हारने का सवाल नहीं है, तो उसीलिए मैं कहूँगा कि आप ओबीसी को लाइए। और बहुत मैं नहीं, हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब हमको इतना टॉन्ट मार रहे थे कि 3 ही बैकवर्ड क्लास के लोग सेक्रेटरीज हैं। आप पीछे का लेके दिखिए। अब जब लोग वहां पर SC ST के भी सेक्रेटरी भी नहीं बन सकते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बनते, डिसीजन कैसा लेते? इवन जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे नहीं है, सब RSS के लोगों को वहां लाके भर दिए हैं। और वहां पर भर के जो आता वो स्क्रूटनी करने के बाद वो फाइल आगे जाता है। और हर मिनिस्टर के पास एक आदमी बैठा हुआ रहता है, खड़गे जी, RSS से जुड़ा हुआ। खड़गे जी, तो ये जो है,
ये अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि सेक्रेटरिएट में SC/ST के लोग रहना, OBC के लोग रहना, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए OBC को आप करना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और एक ही मिनट ओके, प्लीज। सुषमा स्वराज जी तारीफ की थी कब, जिस दिन ये पहले की बिल आई थी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जी ने इसकी तारीफ में कहा था, मैं खुश हूं कि ये बिल पेश कर दिया गया है, इसलिए भी खुश हूं कि ये राज्यसभा में पेश किया गया है। ये अब प्रभावहीन नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा। यानी उनके नेता भी हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन आप सुबह से शाम तक 70 साल में क्या किया, 50 साल में क्या किया, सब क्या किया, हाँ, दुनिया को मालूम है, दुनिया को मालूम है। इसीलिए सर, थैंक यू सर। श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अर्जुन राम मेघवाल टू रिप्लाई द। धन्यवाद। वन सेकंड अर्जुन जी एक बार बैठे। नड्डा साहब से, होम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर, ये कब, कौन से महीने में, कौन से साल में इंप्लीमेंट होगा ये बता दीजिए। और OBC को, OBC महिलाओं को रिजर्वेशन इसमें होगा या नहीं, आज बताइए। थैंक यू। मैं इतना थैंक यू। इसी अर्जुन राम जी प्लीज एक बार टेक योर सीट। मैं आप ही मुझे इन्होंने बुलाया है। नहीं, आप ही की तारीफ कर रहा था मैं, बैठिए। सर 2 सेंटेंस है, खत्म। महिला दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर रही। सर कविता बहुत पढ़ रहे हैं आजकल आप। दिन की नहीं, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो इसलिए आप OBC का रिजर्वेशन फिक्स करो, तारीख फिक्स करो, बस इतना मैं कह के आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम आप हंसे और हमको ये भी दिया, उसीलिए थैंक यू वेरी मच। श्री अर्जुन राम मेघवाल टू रिप्लाई द डिस्कशन। सभापति जी, No. Okay, nothing will go on record now. The Constitution, no, Honorable Minister. 128th Amendment Bill. Leader, 2023 after leader of the opposition, or the leader of the House or Prime Minister can speak, no one else. Leader of the opposition has concluded this side. No, please. Arjun Ram Meghwal ji. Nothing else will go on record except what the Honorable Minister Arjun Ram Meghwal says. Sabhapati Mohoday, the Constitution 128th Amendment Bill 2023 नारी शक्ति वंदन के संबंध में जो चर्चा आज आपने प्रारंभ की, अनुमति दी, उसमें रंजीता रंजन से लेकर के निर्मला सीतारमण जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी सहित 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और सबने करीब करीब मुझे लगता है इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए मैं सबका आभार भी प्रकट करता हूं। मैं सभापति जी, जो हमारे जेपी नड्डा जी जब बोल रहे थे, उभय भारती का एक इशू आया, निर्मला जी ने भी कहा, तो मैं एक उसका आगे की एक कड़ी बताना चाहता हूं
कि शंकराचार्य जी कैसे जीते और मंडन मिश्र कैसे हारे, क्योंकि उभय भारती को मार्केट जाना पड़ गया या बाहर कहीं जाना पड़ गया, तो दोनों बहस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, जैसे अभी संसद में डिबेट हो रही है। तो हाँ, विदुषी भारती, यस, तो विदुषी भारती ने कहा मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मनोज जी बाहर जाना है, मुझे आपका जो आप डिबेट करते रहो। तो उन्होंने कहा आप तो बाहर जाओगे, आप डिबेट करते रहो, आप कैसे जज करोगे कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन विदुषी भारती ने क्या किया, 2 फूलों की नेचुरल मालाएं, एक अपने पति को पहनाई और एक शंकराचार्य जी को पहनाई, और जब 3-4 घंटे बाद वापस आई तो उन्होंने अपने पति को हारा हुआ डिक्लेयर किया और शंकराचार्य जी को जीता हुआ डिक्लेयर किया। तो अपने पति ने पूछा कि ऐसे कैसे किया, तुम तो बाहर थी। उन्होंने कहा मैंने खुशबू की जो फूलों की माला थी नेचुरल, वो आप दोनों को पहना के गई। डिबेट के दौरान आपको गुस्सा आ गया, जिससे आपकी माला सूख गई, और शंकराचार्य जी गुस्सा नहीं आया, इसलिए वो माला सूखी नहीं। इसलिए विदुषी महिलाओं का ये जो काम है, अगर ऐसी महिलाएं आएगी संदर्भ में तो निर्णय सात्विक होंगे, हमें भी ज्ञान देंगे और अच्छा निर्णय करने पाने में हम सक्षम होंगे। ऐसा बिल मोदी जी ने के नेतृत्व में हम लेकर के आए। सबने अपने समर्थन जुटाया। अब आप खड़गे जी को अभी गुस्सा आ रहा था, के.सी. वेणुगोपाल जी को आ रहा था। मैं अब अगला बिंदु सर, ये सारा अधिकतर बता दिया। माननीय मंत्री जी, आप सौभाग्य हैं, आपका परम सौभाग्य है कि आपके बिल का समर्थन पूरे सदन ने किया। ऐसी परिस्थिति में अब कोई आक्रोश की गुंजाइश नहीं है। थोड़ी चीजें तो मैं बताऊंगा, दो चार चीजें सभापति जी, 2-4 चीजें सभापति जी, क्योंकि ये नए विषय हैं, जैसे अभी ये विदुषी भारती वाला विषय है, कुछ नई चीजें आएगी। चलो, मैं एक विषय जिसका जिक्र गीता मुखर्जी कमेटी का जिक्र आया, लेकिन इसमें सदस्य कौन कौन थे उसका उल्लेख तो करना चाहिए और सदन को जानना चाहिए। ममता बनर्जी उस कमेटी में सदस्य, मीरा कुमार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुमित्रा महाजन इस कमेटी में सदस्य, शरद पवार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुषमा स्वराज इस कमेटी में सब सदस्य, डॉक्टर गिरिजा व्यास जो राजस्थान से आती थी वो इस कमेटी में सदस्य, प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस कमेटी में सदस्य। उनका तो उल्लेख करना ही पड़ेगा ना, बड़ा योगदान दिया इन लोगों ने, इस बिल को रूप देने में योगदान दिया। हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, 11वीं लोकसभा भंग हो गई, 11वीं 12वीं 13वीं इसका सारा जिक्र निर्मला जी ने भी किया। लेकिन मैं इन सभी जो हमारी दो तो हमारी स्पीकर रही साहब, सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार तो स्पीकर रही और सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष रही। आज मैं मन से इन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल को इस रूप में लाने के लिए प्रेरित तो किया। अब कह रहे 27 साल लगे, उस समय भी प्रयास किया था, लेकिन अब खड़गे जी अभी कह रहे थे कि ये कब आएगा कैसे आएगा। आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, सब संभव है, चिंता मत करो आप। मैं अब 2-3 बातें और सभापति जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और थोड़ा बताना भी चाहता हूं कि ये ओबीसी प्रेम बिल की चीजें काफी आ गई। मुझमें जो अधिकतर बिल की जो चीजें आई है डिस्कशन में, वो सेंसस था, डिलिमिटेशन था, रोटेशन था, ओबीसी का विषय था, क्लॉज 5 का भी जिक्र एलओपी ने किया, ये सब चीजें थी, ये सब चीजें थी। लेकिन आपके अचानक ये ओबीसी प्रेम अचानक अभी आपके ओबीसी प्रेम कैसे याद आया, मेरे समझ में नहीं आया। आप तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। 1951 में बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था।
और उसमें उन्होंने 4-5 कारण गिनाए थे, लेकिन एक कारण यह भी गिनाया था कि नेहरू जी आपने वादा किया था कि ओबीसी समाज के लिए, वेयरफेयर के लिए मैं कमीशन बनाऊंगा। आपने कमीशन नहीं बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तब से आप तो ओबीसी के खिलाफ थे, अब अभी कैसे प्रेम जाग गया आपका? तब से लेकर के और जो संवैधानिक दर्जे का मामला था वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ, आपके कालखंड में तो वो भी नहीं हुआ। कैसे आपने पता नहीं प्रेम आपका जाग गया? ये राजनीतिक कारण से जागा होगा। मैं एक विषय योजनाओं का जिक्र आया, उसमें एक चीज सभापति जी कहना चाहता हूं। योजनाएं ठीक है, सभी ने बनाई होगी, सब बनाते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में जो योजनाओं की स्थिति बेहतर कैसे हुई उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। पक्का मकान बनाने की योजना थी और हमने सबने देखा एक पंचायत में 2 या 3 टारगेट आते थे। प्रधानमंत्री 2014 में आए, प्रधानमंत्री आवास योजना आई और एक ग्राम पंचायत में जहां 3 और 4 टारगेट आते थे वहां 300 और 400 टारगेट आने लग गई। राशि 43,000 होती थी जो 1.5 लाख हो गई और कुछ राज्य सरकारों ने सहयोग किया तो 2.5 लाख हो गई। कहां 3 और 4 टारगेट, कहां 300 और 400 टारगेट, कहां राशि 43,000 और कहां राशि 2.5 लाख तक पहुंच गई। और उसके बाद स्केल और स्पीड तो बढ़ी, उसके बाद जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, आप वीडियो से मंगाओ, कलेक्टर से मंगाओ, सारी प्रक्रियाओं में उसको किस्त मिलती ही नहीं थी। तो ये सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करके जियो टैगिंग करके सीधा डीबीटी में पैसा दिला दिया। ये एम्पावर्ड किया महिलाओं को, इसलिए योजनाओं का जिक्र करना जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा, कोई विषय आया कि आप अलग अलग सोचते हैं, होलिस्टिक अप्रोच से सोचते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये हमारा मूल मंत्र है सरकार का काम करने का। होलिस्टिक अप्रोच में सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सेशन आया, इस सेशन में जो ये बिल आया, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। ये प्रधानमंत्री जी का कोट ही नहीं है, ये जीवन शैली है। अमृतकाल का समय, नए संसद भवन में पहला बिल और वो भी नारी शक्ति वंदन का, और उसमें भी सभी दलों का समर्थन। इसलिए मैं सभी का आभार भी पुनः प्रकट करना चाहता हूं। मैं विपक्ष की एक बात से, जयंत चौधरी जी ने एक बात कही कि नीति स्पष्ट नहीं थी आपकी इसलिए लेट हो गए, नीयत नहीं थी। जयंत जी, ये मैं कहना चाहता हूं, ये बिल इसलिए नहीं लाया गया है कि हमको इसको अटकाना चाहते हैं। अटकाना और भटकाने वाला टाइम चला गया। विपक्ष के समय लोकसभा में ये बिल इसलिए पास नहीं हो सका क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है, इसलिए बिल आया, सर्वसम्मति तक पहुंच गया। ये सारी प्रक्रियाओं से पार करता हुआ मैं, एक विषय आया जनगणना का कि जनगणना की क्या जरूरत होती है। उन लोगों ने जनगणना की, जनगणना का आप थोड़ा अर्थ भी समझते ही होंगे, सब विद्वान लोग बैठे हैं। भारत में जनसंख्या जनगणना संघ का विषय है, अनुच्छेद 246 और संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर यह सूचीबद्ध है। जनगणना संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन, प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजित किया जाता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। आप कह रहे हो अभी ले आओ, 24 में ले आओ। अरे जनगणना में देखो ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, खाली जनगणना नहीं है, ये हेड काउंट नहीं है। इसमें आपको आर्थिक गतिविधि क्या है, साक्षरता की दर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन, मृत्यु दर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, प्रवासन, विकलांगता और कई अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिक डेटा के बारे में जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है।
ये छोटा विषय नहीं है जनगणना। आपने ऐसे ही कह दिया क्या है जनगणना, करा लो जनगणना, ऐसे ही हो जाएगी। और 82 आर्टिकल के बारे में भी आपने ऐसा बोल दिया। ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण इसको हमने कहा है, इसमें क्लोज 5 में जोड़ा है, क्लोज 5 में जोड़ा है कि बिल पास होगा, सेंसस होगी, और 2026 तक चूंकि फ्रीज है डिलिमिटेशन आयोग का विषय, तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन आयोग स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके और सीट कौन सी रिजर्व होगी वो तय करेगा। इसलिए ये विषय कोई हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम करना नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ संवैधानिक चीजें थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। मैं अब थोड़ा बिल के बारे में आता हूं सभापति जी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल के बारे में आता हूं कि ये मैं कह रहा हूं कि हम नारी शक्ति को उनके स्वाभिमान को सम्मान देकर के सच्चे अर्थों में नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं। भारत की महान परंपरा में नारी शक्ति का योगदान हमेशा से ही रहा है। वैदिक काल में गार्गी, अपाला घोषा, लोपा मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने उस काल में देश और समाज को नेतृत्व प्रदान किया। रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी शक्तियों ने समय पर आने पर राज्य का नेतृत्व किया। ये उल्लेख हुआ, इसलिए कह रहा हूँ, अपने राज्य के शत्रुओं से भी अपने राज्य की जनता की भी रक्षा की और विकास के नए प्रतिमान भी गढ़े। इसलिए मैं सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, रानी गैडिन्ल्यू, भगनी निवेदिता, एनी बेसेंट, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, अरुणा अशरफ अली, अमृता बिश्नोई, सुषमा स्वराज ऐसी विदुषियों को मैं इस मंत्र में याद भी करता हूँ। महोदय सभापति जी, जब महिलाएं नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेगी तो वे निर्णय ज़्यादा संवेदनशील, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ममता, करुणा, त्याग, तप, दया, प्रेम, समर्पण, ईमानदारी, साहस, रचनात्मकता के साथ साथ शक्ति महिलाओं के स्वाभाविक गुण हैं जिनका प्रभाव हमें आगे नीति निर्माण प्रक्रिया में दृष्टिगोचर होगा। 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इस कालखंड को अमृत काल का नाम दिया है, और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। उस समय विकास की इस प्रक्रिया में नारी शक्ति की प्रभावी भूमिका हो, इसलिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नवीनतम डेटा जिसका जिक्र आया के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 26.7% है। ये हमें बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? सबने ये जिक्र किया, 8-10 मान्य शासकों ने जिक्र किया। जैसे ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो 33%, 1/3, ऑलमोस्ट 33%, तो हम विश्व में जो विकसित देश है उनसे भी आगे चले जाएंगे। ये इसलिए बिल लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और आशंका प्रकट करने की जरूरत नहीं है। एक विषय आया, देखिए सभापति जी, मैं करीब मैं अब समाप्ति की ओर ही हूं, क्योंकि मुझे एक विषय आया अडल्ट फ्रेंचाइज का, मताधिकार किसने दिलाया था? ये मताधिकार बेसिक पॉइंट था, जिसके कारण देखिए 27 जनवरी 1990 को साउथ बोरो कमेटी आई। फिर उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर लगातार लगे रहे कि अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। हमारे भी बहुत से लोग लगे रहे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का एक कोट याद करूंगा सभापति जी, एक बाबा साहब का कोट याद करूंगा। जब हम मताधिकार दे रहे थे संविधान सभा में, तब कई लोगों ने कहा, ये कांग्रेस के लोग भी थे उसमें अधिकतर, कई लोगों ने कहा कि मताधिकार मत दो, बहुत से लोग अनपढ़ हैं। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, मैं एक कोट करूंगा, कोट अनकोट, माई फीलिंग इज दैट every man is intelligent enough to understand exactly what he wants. Literacy has not much bearing on this point.
A man be illiterate, a man be illiterate, none of less, he may be intelligent. ये बाबा साहब का सोच था, जिसके कारण ये मताधिकार आया। मताधिकार के बाद अब प्रतिनिधित्व देने हम जा रहे हैं। अब मैं चूंकि बहुत से विषय आ गए और कुछ कविताओं का विषय भी आया, तो मैं भी मेरी लास्ट में एक अंतिम कविता कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। अमृतकाल की बेला आई, सभापति जी, अमृतकाल की बेला आई, इच्छा शक्ति दिखाई है, नारी शक्ति वंदन से महिला पहचान बढ़ाई है। नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं थकेगी, महिलाएं अब नहीं झुकेगी, एक नया इतिहास रचेगी, रोशन अपना नाम करेगी। सारा भारत झूम रहा है, आज सारा भारत झूम रहा है। आपने देखा होगा कितनी महिलाएं बैठी है। सारा भारत झूम रहा है, घर घर मंगल गान बजा है, नारी को अधिकार मिला है, भारत मां का मान बढ़ा है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। सभापति जी, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। अमृतकाल में सारा भारत देता आज बधाई है, प्रधानमंत्री जी को देता आज बधाई है। अमृतकाल की बेला आई, इच्छा शक्ति दिखाई है, नारी शक्ति वंदन से महिला पहचान बढ़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सभी बधाई और धन्यवाद भी देते हैं कि आपने ऐसा नेतृत्व दिया जिसके लिए ये बिल आया। मैं अब चाहूंगा कि इस बिल को आप कंसिडरेशन के लिए लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आदरणीय सभापति जी, 2 दिन से अत्यंत महत्वपूर्ण इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो रही है। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है। और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का समय ज़्यादा लेता नहीं हूं। मैं सिर्फ जो भावना आपने व्यक्त की है
उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और जब मतदान होगा तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये उच्च सदन है, चर्चा भी उत्तम करने का प्रयास हुआ है। अब मतदान भी सर्वसम्मति से करके हम देश को एक नया विश्वास दें। इसी अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। I shall now put the motion regarding consideration of the bill to vote. The question is that the bill further to amend the Constitution of India as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. ये स्पष्ट करना चाहता हूं। Point well noted. Very heartening together. The entire House, the upper house, the House of Elders is unanimously united on this point. Honorable members, in spite of such unanimity, there is a constitutional prescription. Under Article 360 of the Constitution, the motion will have to be adopted by a majority of total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House. I'm coming. Eh? Just wait. I'm going as per procedure. Have patience. You can't put the cart before the horse. Present and voting. Division. Let the lobbies be cleared. Secretary General will now explain the voting procedure. Would you take your seat now? Honorable members, it is a constitutional prerogative. Please, I am so happy Mr. Chidambaram has given right counsel, and that is for a change. Secretary General will now explain the voting procedure. Honorable members, for your convenience, I shall explain the voting procedure by automatic vote recording system. It may please be noted that each member has a multimedia device, MMD for short, at his desk. This MMD has an integrated mic and voting console containing 3 buttons: yes for ayes, no for noes, and abstain on the right-hand corner. There is also a separately situated button, Vote Secure, provided on the bottom left-hand corner of the multimedia device. In order to further facilitate the members, I will now explain the step-by-step method and precautions to be followed by each member in casting their votes. Step 1, I will announce that the voting process will start now. Step 2, the voting process starts and ends with a gong on a large screen hall display in the 2 corners of the chamber. The countdown time of 10 seconds in reverse counting order will be visible to the members on their respective multimedia devices. Members can cast their votes by pressing the Vote Secure button available on the bottom left-hand corner of their devices, and keeping it pressed, simultaneously press one of the yes, no, abstain buttons of his or her choice.
For easy identification, these voting buttons have been indicated on your devices as green for yes, red for no, yellow for abstain. A word of caution here, the vote secure button should be pressed only after the gong sound. I repeat, only after the gong sound. Step 4, each member must keep the vote secure button as well as one of those yes, no, abstain buttons pressed simultaneously for 10 seconds, that is, at the time of closing of voting to register a valid vote. Step 5, once the valid vote is registered, the LED of voting button pressed by the member will remain on, lighted up on their devices. At the time of casting the vote, if the members observe that the LED of yes, no, and abstain buttons are simultaneously blinking, it means that their vote is not being registered. Therefore, they shall immediately release the voting button pressed by them without releasing the vote secure button and have to press again within the 10-second period to register a valid vote. Step 6, during the voting period, the member can change his or her vote at any time. The button pressed at the time when the voting period is ending, that is, at the 10th second, will be recorded. In case either one or both the buttons are released prior to the close of the voting period, the vote will not be registered. If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake through a correction slip devised for the purpose, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of the division is announced. The correction slips will be distributed to the honorable members who desire to correct their recorded vote by the officials of the Secretariat. Yes. I will. The Secretary General may now explain voting procedure in Hindi. माननीय सदस्यगण, आपकी सुविधा के लिए मैं स्वचालित मतांकन प्रणाली द्वारा मतदान प्रक्रिया समझाऊंगा। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक सदस्य की मेज पर एक मल्टीमीडिया डिवाइस MMD लगाया गया है। इस MMD में इंटीग्रेटेड माइक और वोटिंग कंसोल लगे हैं, जिसके दाईं और कोने में 3 बटन हैं, हाँ के लिए यस, ना के लिए नो और एब्सटेन। इस मल्टीमीडिया उपकरण MMD के निचले बाएं कोने पर अलग से एक बटन वोट सिक्योर भी दिया गया है। सदस्यों की और सुविधा हेतु मैं अब प्रत्येक सदस्य द्वारा अपना मत डालते समय अनुसरण की जाने वाली विधियों और सावधानियों को 4 चरणवार समझाऊंगा। चरण 1, मैं घोषणा करूंगा कि मतदान प्रक्रिया अब शुरू होगी। चरण 2, मतदान प्रक्रिया सभा कक्ष के दोनों कोनों में लगे बड़े स्क्रीन हॉल डिस्प्ले पर गोंग ध्वनि से शुरू होगी और समाप्त होगी। उल्टी गिनती के क्रम में 10 सेकंड की उल्टी गिनती का समय सदस्यों को उनके मल्टीमीडिया उपकरणों पर दिखाई देगा। चरण 3, सदस्य वोट सिक्योर बटन अपने उपकरण के निचले बाएं कोने में उपलब्ध है को दबाकर और उसे दबाते हुए अपनी पसंद के यस, नो, एब्सटेन बटन में किसी एक बटन को भी एक साथ दबाकर अपना मतदान कर सकते हैं। आसानी से पहचान में आने के लिए आपके उपकरणों पर इन मतदान बटनों को यस हरे, नो लाल और एब्सटेन पीले रंग में प्रदर्शित किया गया है। वोट सुरक्षित बटन को गोंग ध्वनि के बाद ही दबाया जाना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहूँगा, गोंग ध्वनि के बाद में ही वोट सुरक्षित बटन को कृपया दबाएं। चरण 4, वैध मत दर्ज करने के लिए प्रत्येक सदस्य को वोट सिक्योर बटन के साथ यस, नो, एब्सटेन बटन में से एक को 10 सेकंड अर्थात मतदान बंद होने के समय तक के लिए एक साथ दबाए रखना होगा। चरण 5, एक बार वैध मत दर्ज हो जाने के पश्चात सदस्य द्वारा दबाए गए बटन की LED उनके उपकरण पर जलती रहेगी।
मतदान करते समय यदि सदस्य यह पाते हैं कि यस नो एब्सटेन बटन की एलईडी एक साथ ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है कि उनका मत दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए वे स्वयं द्वारा दबाए गए मतदान बटन को तुरंत छोड़ दें, वोट सिक्योर बटन को छोड़े बिना, और तत्पश्चात वैध मत दर्ज करने के लिए 10 सेकंड की अवधि में पुनः बटन को दबाएं। चरण 6, मतदान अवधि के दौरान सदस्य किसी समय अपना मत बदल सकते हैं। मतदान की अवधि समाप्त होने के समय अर्थात 10वें सेकंड में दबा कर रखे गए बटन का मत ही दर्ज होगा। यदि मतदान अवधि समाप्त होने से पहले कोई एक या दोनों बटन छोड़ दिए जाते हैं तो मत दर्ज नहीं होगा। यदि किसी सदस्य को पता चलता है कि उन्होंने गलती से गलत बटन दबाकर मतदान कर दिया है तो उन्हें गलती सुधारने के उद्देश्य से तैयार की गई सुधार पर्ची के माध्यम से गलती को सुधारने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु इसके लिए उन्हें मत विभाजन का परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व इसे सभापति के ध्यान में लाना होगा। अपने दर्ज मत को सही करने के इच्छुक मान्य सदस्यों को सुधार पर्चियां सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा वितरित की जाएंगी। Honorable members, I would like to inform you that as we are doing voting electronically, honorable members would have to be seated in their respective seats. Honorable members from Lok Sabha may like to occupy the vacant seats indicated so on the multimedia device. Alternatively, they may sit in the space between the two seats. The question is that the bill further to amend the Constitution of India as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Division. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. इधर विजय इधर हाँ वो दे रहे हैं सब दे रहे हैं सर। कुछ मेंबर्स का रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड रख लेना ना 171 याद रख लेना क्योंकि ऐड करने पड़ेंगे इसमें। ऐड फर्स्ट वोटिंग लिख दीजिए ऊपर, फर्स्ट वोटिंग लिख दीजिए ऊपर पेंसिल से। दीपक, ये फ्रंट रो पूरा नहीं हुआ है, जरा देखो जरा।
उस सीट नंबर से देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। नहीं नहीं, हाँ वही वही। कितने हैं काउंट कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इधर देवे। सर इनका इंटरनेशनल कुछ ये है। Rules don't.
One more thing. At my house, I was his guardian in Mayo College. And that is why I was harsh to him. Otherwise, a very senior person. Honorable members, subject to correction, ayes 215. Noes 0. Abstention 0. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. Honorable members, it is only a coincidence. मन कंचन है, यह संयोग ऐसा है, हिंदू रीति विधि के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 9 amendments. Would the honorable members like to move them? All right, all right. Clause 2 stands part of the bill. 9 amendments. Shri Santosh Kumar P., are you moving the amendment? Moving. Dr. John Britas? Yes, sir, I am moving. Number 19. Shri Binoy Vishwam? Are you moving or not?
Moving. I am moving. Numbers 48 to 52 by Professor Manoj Kumar Jha. Moving. Number 65 by Professor Ram Gopal Yadav. Moving, sir. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Who's? No, there is no listed amendment. Mr. Jairam Ramesh, I have to go by those amendments which have been legally admitted, and therefore to make an issue at such a solemn occasion is not appropriate. Otherwise, we can continue making all kinds of interventions. Okay. I shall first put the amendments moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, noes have it, noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Binoy Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Professor Ram Gopal Yadav to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. नोज भी दबाया किसी ने मैडम का शायद नहीं हुआ है मेरे ख्याल से I think it will be appropriate. Those who need slips may raise their hands. Yes. लास्ट वाले वोटिंग का कितना रिजल्ट रहा था
हमारे दो अमेंडमेंट है सर। हाँ बोलो। ना ऐसे नहीं, इधर से नहीं।
Honorable members, subject to correction, I am happy to announce ayes 214, noes 0, abstention 0. Clause 2 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. We'll find out. And that is why subject to correction. But that missing vote may raise the hand if he likes. Clause 3 stands part of the bill. Honorable members, there are 13 amendments. Number 3 by Sri Santosh Kumar P. Are you moving, sir? Moving. Number 12 by Sri Abdul Wahab. Moving. Number 13 by Sri Dipender Singh Hooda. सर ये ओबीसी के लिए हम मूव कर रहे हैं ओबीसी का Are you moving or not? सर ओबीसी का होना चाहिए उसके लिए मूव कर रहे हैं Are you moving or not? Moving. Good. Very good. Number 20 to 24 by Dr. John Bittas. Moving. Moving, sir. Number 32 by Shri K.C. Venugopal. And we are demanding OBC also. So I am moving my amendment. Are you moving? Okay. Very good. Number 37 by Shri Binoy Viswam. Are you moving? Are you moving? Okay. Numbers 53 and 54 by Professor Manoj Kumar Jha. Moving. Yeah, I'm moving. Number 66 by Professor Ram Gopal Yadav. Moving. Yes, sir. Amendments moved. I shall first put the amendments moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Abdul Wahab to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Dipender Singh Hooda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Dr. John Bittas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendments moved by Shri K.C. Venugopal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Binoy Viswam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Professor Ram Gopal Yadav to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived.
I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division, lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. The voting time starts now. How is it? I think that. Modi ji.
at my house. We'll go together. And get Venugopal also. No, you are part of the family. ये पेपर क्या हटा गया सर? डोंट डू दिस पेपर से मैं मांगू तो देना पीछे रखो. मैं मांगू तो देना एकदम पीछे. Honorable members, subject to correction, ayes 213, noes 1, abstain 0. The clause 3 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 4 stands part of the bill. There are 12 amendments. Number 4 by Shri Santosh Kumar P. Are you moving? Moving. Number 14 by Shri Dipender Singh Hooda. समाज की महिलाओं को भी आरक्षण मिले सर. Number 25 to 27 by Dr. John Britas. Yeah, that's right. There should be mic for me when I am moving, sir. Okay. Yeah, there's mic here. Sir, I am moving, sir. What is sir? Number 33 by Shri K.C. Venugopal. Yes, sir, I am moving for OBC. Number 38 to 40 by Shri Vinod Vishwam. Moving or not? Sir, mic. I move it for the OBC rights. Sir, you have to say either you move or you don't move. Sir, I move it for the OBC rights. No, only moving. Sir, I move it for the OBC rights. Very sad. We can't follow the rules.
Number 55 and 56 by Professor Manoj Kumar Jha. Are you moving? Yes or no? Sir, moving for OBC subaltern politics. A professor, again a student. Number 67 by Professor Ram Gopal Yadav. Moving, you sir. are my last hope. Moving, sir. Okay, thank you. Amendments moved. I shall first put the amendments moved by Santosh Kumar B to P2 vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Dipender Singh Hooda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri K.C. Venugopal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Shri Binoy Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Professor Ram Gopal Yadav to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Honorable members, before I take up clause 4, I request the Secretary General to once give the procedure. There seem to be some minor situations which can be corrected. Honorable Secretary General. You see, Mr. K.C. Venugopal, listen to me. Our members are adapting to technology. If they are given some guidance for a minute or two, our number there will be complete. Sleep will not be needed. Go ahead. Secretary General. Mr. Secretary General. Sir, with your kind permission, I'll just reiterate the process. Briefly. Kindly note that once the gong sound starts, only then you have to press the vote secure button. And having pressed the vote secure button, then you have to press either of the three, that is ayes, noes or abstain. And keep it pressed till the gong sound gets over, that is till the 10th second. Once you do that, keep both the things pressed. It will be registering the correct vote. Thank you. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now.
Honorable members, subject to correction, ayes 214, noes 0, abstains 0. Clause 4 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 5 stands part of the bill. There are 40 amendments. Numbers 5 to 9 by Shri Santosh Kumar P. 15 and 16, Shri Dipender Singh Hooda. Number 17 by Shrimati Priyanka Chaturvedi. Number 28 to 31 by John Britas, Dr. John Britas. Number 34 by Shri K.C. Venugopal. Number 41 to 44 by Shri Binoy Vishwam. 46 by Shri Ilamaram Karim. 47 by Shri A.A. Rahim. 57 to 64 by Professor Manoj Kumar Jha. Number 68 by Dr. V. Sivdasan. 69 by Shri Sayyid Nasir Hussain. 70 by Shri Dheeraj Prasad Sahu. 71 by Shrimati Rajni Ashok Rao Patil. 72 by Dr. Ami Yaznik. 73 by Shrimati Fulo Devi Netam. 74 by Shrimati Ranjit Ranjan. 75 by Shri Rajmani Patel. 76 Shrimati J.B. Mather Isam. 77 by Shri Vivek K. Tanka. 78 by Dr. L. Hanumanthaya. 79 by Shri Neeraj Dangi. 80 by Shrimati Mawa Maji. Amendment moved. I shall put the amendments moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendments moved by Shri Dipendra Singh Hooda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Nothing will go on record other than this. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Srimati Priyanka Chaturvedi to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Shri K.C. Venugopal to vote. Those in favor will please say aye. You are a senior man. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Shri Minoy Viswam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Ilama Ram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri A.A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendments moved by Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Syed Nasir Hussain to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Dheeraj Prasad Sahu to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Srimati Rajni Ashok Rao Patil to vote. Those in favor will please say aye. Those in favor will please say aye. Good. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Dr. Ami Yaznik to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Srimati Phulo Devi Netam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Srimati Ranjit Ranjan to vote. Those in favor will please say aye. Nothing will go on record. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Srimati Shri Rajmani Patel. Shri Rajmani Patel to vote. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Srimati J.B. Mathera, Assam, to vote. Those in favor will please say aye. Okay. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Vivek Ketanka to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.